believe. It's in your DNA. This is our legacy to you. Come on, you Blues. Come on, Chelsea. Come on, you Chelsea. Are you guys ready? Bhai, ये fixture will have some drama. Mark my words. और lineup में already drama हो गया, guys. There is drama. Liverpool, Chelsea. I don't know what it is about this fixture. कभी ना कभी, I don't expect everything जो expect करते हैं ना वो expect नहीं होता. And this is what it is. Enzo Maresca has actually taken a big call, guys. आप लोग again, जो भी लोग in the chat, let me know who all are there. Lots to discuss. We will be joined by a panel as well. Hopefully, we'll have each and everyone smashing that like button. और भाई मैंने share किया as always, not just in the community post, but also on social media. If you guys can share that, brilliant रहेगा. लेकिन again, welcome back to Almighty Blues FC, a fan channel for all to see. कौन कौन है? Shania in the house. Shania, commiseration मैंने देखा था. Sorry about that. लेकिन you're here no matter what. Like we are here. Ramit as well. Absolutely take care. Shagun, Bure, Lavia, and James back in the 11. Let's go, man. To be very honest, मतलब I like the fact कि बहुत strong खेला है Enzo Maresca ने in terms of team selection, but is it also defensive कहीं ना कहीं? Because are we saying कि are we not trusting our youngster in Renato Vega? Well, that is a big question for me. Along with भाई, as much as basically Enzo Fernandez का बहुत recently हुआ है कि यार with Enzo, without Enzo, there's a certain stat going around social media, and I get that and I buy that absolutely. लेकिन we have to discuss क्योंकि लास्ट सीजन करीबन इसी समय आप लोगों को सबको याद है तो आई थिंक इट वाज द बिगिनिंग ऑफ द सीजन एंड वी ऑल रिमेंबर एंजो फर्नांडिस वाज एक्चुअली अ गुड परफॉर्मर इन दैट गेम 1-1 ड्रॉ था तो आई एम अ लिटिल बिट सरप्राइज्ड लेकिन tactically we will be discussing, we'll be breaking it down. Guys, again hit that like button, guys. Let's get the likes up. Come on, let's share kariye, definitely helps. I have certainly a panel joining in a few minutes and there's lots to discuss, of course. Ramit in the house, by the way. Meanwhile the Wolves Man City game is also going on, obviously. It's a fan channel for also we follow and cover all football. Guys, recently thoda bahut notification hame मात दे रही है YouTube का, big ups to them. लेकिन सब लोग by Almighty Fan, my Ghanta gang, you are extended family. Let's give it up to the stream as well as the channel. No Mudryk in the squad. This is also telling. I am a little bit disappointed, Usma, almost. Yes, I want to be very positive. It is Liverpool Chelsea. It is कहीं ना कहीं a must not lose for Chelsea, a must win for Liverpool. आप already बोल सकते हो considering जो हो रहा है in the weekend and जो हुआ है before the international break. But it's interesting. अगेन मैं पूरा स्क्वाड भी दिखाने वाला हूं लेकिन मुड्रिक एंड एंजो फर्नांडिस आर टू पीपल हु एक्चुअली हैड गुड परफॉर्मेंसेस अगेंस्ट लिवरपूल सर्टेन गेम्स में. तो आई एम अ लिटिल बिट सरप्राइज्ड बाय दैट. पता है हमें कि एंजो मैरेस्का हैज वॉच्ड मोस्ट ऑफ द चेल्सी गेम्स ऑफ लास्ट सीजन, सो एंड प्लस ही वॉचेस देम इन ट्रेनिंग. तो भाई ही हैज अ रीजन. इज इट वर्थ टेकिंग रिस्क? जेम्स स्टार्टिंग अगेन, इतना बोल सकते हो. गौरव, big up to each and everyone. Harsha, मैं देख रहा हूँ. Hardik in the house as well. Again, guys, let's hit that like button. Let's get in. Almighty fam, घंटा gang. देखो, इतना जरूर मैं बोलूंगा. Reece James ना, I think we have to be very selective in the kind of games he features, and we have to be sure. Absolutely, मैं agree करता हूँ कि वो 100% fit है in terms of match fitness. अगर आप शुरू कर रहे हो किसी को, you are telling that person is good to play at least for 65-70 minutes, right? That is the general perception. Ideally 90 minutes, लेकिन at least 65-75 minutes 75 minutes के लिए वो fit enough है and is not a risk. लेकिन अगेन आप अगर रीस जेम्स का एक्सेप्टेंस करोगे, मतलब यहां पर मैं इतना नाखुश नहीं हूं विद रीस जेम्स. मैं थोड़ा नाखुश हूं ऑन द लेफ्ट बैक पोजीशन जो इन्वर्ट करेगा, which might be a little bit negative considering वहां पर a certain winger is there. We all know that. लेकिन वो हो सकता है might be a good ploy after all. But at the end of the day, रीस जेम्स का ऐसा है कि अगर आप बोलोगे भाई 60 मैचेस होते हैं, 60 मैचेस इन अ ईयर, राइट? Out of 60 matches, if you're picking me, Reece James is going to start, not feature, start 15 games in a season. अगर इस सीजन की बात करें, because we have to be very careful, 15-20 games in a season अगर वो शुरू करता है, and those 15-20 games of the season, I think Liverpool Chelsea is got to be on the list. So मैं बोल रहा हूँ, yes, if he's fit, only then. तो आई थिंक दैट इज द होल पॉइंट, क्योंकि यहां पर कॉन्फ्रेंस लीग के सेक्टर में क्या ही तो खिलाना भाई रीस जेम्स को, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अदर्स. हर्षा इन द हाउस, व्हाट्स अप? बिग अप चैट एंड डू सब्सक्राइब इफ यू न्यू टू चैनल. कंसीडर लाइकिंग द स्ट्रीम. आपको पता ही है हम लोग टारगेट कर रहे हैं 125 लाइक्स फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉच अलोंग. गाइस, अगेन अ लॉट्स टू डिस्कस. हार्दिक बोल रहे मुड्रिक विल लीव इन जनवरी विंडो. अगेन
आई डोंट थिंक वो कंक्लूजन पर हम पहुंचेंगे जस्ट येट, बट इट कुड बी पॉसिबल. लेकिन रिसेंटली अच्छा भी किया, ऑल्दो कप गेम्स थे. रमित बोल रहे हैं, as long as we win the game, the lineup won't matter. We who will invert the Gusto और जेम्स. हाँ, जेम्स का ये भी हो सकता है एक्चुअली रमित, दैट बेसिकली आई नो वी डोंट वांट टू रिमेंबर दैट गेम. वाज इट यूवेंटस वाला और वाज इट द नेक्स्ट गेम ब्राइटन वाला? ब्राइटन और चेल्सी के बीच में था, जहां पर जेम्स लेफ्ट बैक also played for a while and then he got injured. I remember that properly. You don't want to kind of remember that. लेकिन जेम्स भी वो कर सकता है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, ऐसा नहीं कि खाली गुस्तो कर सकता है. तो हो सकता है टोटल सरप्राइज पैकेज लाइन जोमरस का, लेकिन गुस्तो ने किया है कुछ गेम्स इन प्री सीजन. आई रिमेंबर ही हैज एक्चुअली प्लेड दैट रोल फॉर अ फ्यू गेम्स, सो आई डोंट सी एनी मेजर सरप्राइजेस देयर. ऑब्वियसली यहाँ पर मो साला विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ लिवरपूल, तो और एज द राइट हैंड साइड लिवरपूल अपना लेफ्ट हैंड साइड में. तो आई थिंक वो एक क्लियर राइट फुटेड अगेंस्ट द लेफ्ट फुटेड वाला प्लॉय करने का यू नो सीखा है हमने कहीं ना कहीं इस गेम के लिए. और गुस्तो इज समवन हु हैज द पेस राइट नाउ कंपेयर्ड टू रीस जेम्स, क्योंकि वो इज कमिंग आफ्टर इंजरी. सो आई थिंक आई सी व्हाई यू आर गोइंग लाइक दैट. लेकिन will it restrict our attacks all to the right hand side? क्या रीस जेम्स अटैकिंग वाइज में नो थोड़ा एक्सपोज हो सकता है कंसीडरिंग इज जस्ट बैक? दैट इज समथिंग वी हैव टू सी. हसीब द हाउस व्हाट्सअप, आई ट्रस्ट एंजो मरेस्का बोल रहे शगुन, कम ऑन वुल्व्स, यू हैव वन जॉब, जस्ट स्टील द पॉइंट्स फ्रॉम सिटी. बाय द वे, यस, देयर हैव बीन टीम्स हु हैव ड्रॉप्ड, जैसे हमने सुबह के वीडियो में बोला था. गाइस अगेन हिट दैट बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशंस इफ यू आर नॉट गेटिंग द नोटिफिकेशंस देयर. बट अगेन मैं यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ आपको पूरा लाइनअप भी. आई बिलीव सो इट्स ऑफिशियल लाइनअप, राइट? करेक्ट, चलो ऑफिशियल लाइनअप है. तो footmob.com तो बोल रही है that Reece James will start as a right back, and I think so, yes, and he will probably invert with Gusto kind of staying defensive. या हो सकता है Gusto inverts at times और Reece James kind of like the right center back, वो भी हो सकता है with Caicedo थोड़ा सा कवर करे on the right hand side, क्योंकि Reece James is coming back after injury. लेकिन उससे भी बड़ा चीज है लाविया. Now लाविया का रोल क्या होगा? मतलब if Enzo Fernandez ड्रिफ्ट करता है to the left hand side, ठीक है, और से फॉर एग्जांपल अगर मुड्रिक होता है, मुड्रिक ड्रिफ्ट करता है इंटरनली, वो भी होता है कभी कभी दैट दे काइंड ऑफ स्वैप पोजीशंस. लेकिन यहाँ पर क्लियर है लाविया विल स्टे देयर इन दिस पोजीशन, क्योंकि काइसेडो इज प्रोबब्ली गोइंग टू बी प्रोटेक्टिंग जेम्स अ लिटिल बिट, और ऑफ कोर्स लुइस डियाज. वो भाई एक सेकंड, इज गैक्पो स्टार्टिंग? वाओ, इज गैक्पो स्टार्टिंग और व्हाट? वाओ, आई डिडंट नो दैट. एक सेकंड, मैं अभी देख रहा हूँ गाइस. बाय चैट, बिग अप मैन, हिट द लाइक, वी आर कमिंग टू ऑल द कमेंट्स. अगेन इट्स अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी. आप लोग बताइए. Enzo should be there. His creativity would help us today. Yes, थोड़ा negative लग रहा है in the midfield, लेकिन could we have played with all the three? That's also one more thing. Sushant Bhura, if Chelsea win today, they are closing on top. They are actually. Ritin, of course, the Liverpool fan of the house. Big up to Ritin. Gusto wrong-footed नहीं होगा left back पर. Again, it's more defensive tactic than attacking tactic, Gaurav. The Norwegian ghost, because I can't see him anywhere. कमान हर्षा, ज्यादा हो रहा है ये अपना, लेकिन कोई नहीं. बैंटर इज पार्ट ऑफ फुटबॉल. रिवाइव ऑब्वियसली यू आर टॉकिंग अबाउट हालैंड, आई बिलीव सो. सुरेंद्र बोले हेलो अंकित भैया, यू विल नेवर वॉक अलोन. थैंक यू, बट होपफुली यू विल हैव ईच एंड एवरीवन जॉइनिंग अस. राइट इट, वी विल मिस एंजो टुडे. भाई टू बी ऑनेस्ट, एंजो इज देयर. ऐसा नहीं कि एंजो नहीं, एंजो है बेंच पर. भाई यहाँ पर आप देख रहे हो, Disasi, Bardeshil are the two defenders on the bench. याद रखिए, Kukurea is suspended, Fofana is suspended, right? तो वहां पर you are clearly having two defenders on the bench. यहाँ कहीं ना कहीं ये भी कुछ लोग ने बोला था Disasi because of his experience in big games could be coming in, लेकिन Tosin calming influence लाता है. Enzo Fernandez and Dewsbury Hall दोनों हैं, Renato Vega भी है. तो could we have had an extra attacker on the bench? Why did we need three midfielders या three defenders on the bench? ये क्वेश्चन मार्क है. हाँ, हो सकता है क्योंकि अगर गुस्तो वाला प्लॉय काम नहीं करे, then we have a plan B, Renato Vega, left-footed guy जो आ सकता है in place of Gusto, and Gusto could move to the right back जब Reece James substitute हो जाए after 60 minutes because he's not match fit really, if you ask me. लेकिन again, Nkunku, Felix, Neto, that's brilliant. The three of them is brilliant. ये जरूर बोलूंगा, आर्ग्यूबली आई डोंट नो, पीपल माइट डिसएग्री विद दिस, लेकिन अगर आप देखो लास्ट टू गेम्स इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेस, आई थिंक मुड्रिक ने फेलिक्स से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया. लेकिन फेलिक्स इन टाइट स्पेसेस इन सच काइंड ऑफ गेम्स इज इंपॉर्टेंट इन बिग गेम्स बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस एज वेल. बट अगेन काइंड ऑफ सरप्राइज दैट मुड्रिक बेंच पर भी नहीं है, एंड एंजो इज ऑन द बेंच एंड वेगा इज ऑन द बेंच. बट लेट्स मूव गाइस, लेट्स मूव. क्या बोल रहे जनता? आई थिंक मिकाइल आपको शेयर किया है. चलो, मिकाइल जस्ट अबाउट इज जॉइनिंग, आई बिलीव. गाइस अगेन हिट दैट लाइक, सब्सक्राइब इफ यू न्यू टू द चैनल. वी विल हियर आउट ईच एंड एवरी वन. हो जाए भाई,
Chelsea, 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 Chelsea. Come on, Chelsea. Come on, Chelsea. Come on, Chelsea. Oh, when the Blues go steaming in. Oh, when the Blues go steaming in. I wanna be in that number. Oh, when the Blues go steaming in. Come on, guys. Get in, get in. वेगा फॉर सेट पीस चाहिए था. वेगा अगेन, इट्स अ गुड, वेरी गुड पॉइंट. वहां पर है कोनाटे, वर्जिल वैन डाइक. यू हैव टू डेफिनेटली नोट. लेकिन गाइस, इंटरेस्टिंग, एनी आइडिया लुइस डियाज बेंच पर क्यों है? गैक्पो शुरू क्यों कर रहा है यहां पर? इज इट समथिंग बिकॉज ऑफ जो चेल्सी ने लिया है गुस्तो को एंड नॉट वेगा को एंड लाविया को एंड नॉट एंजो को इन द 11? इज देयर समथिंग बिकॉज ऑफ दिस मैच लिवरपूल ने किया ये? Why is Cody Gakpo? Now, Cody Gakpo has also been in very good form, with all due respect. लेकिन Luis Diaz has been next level. मैं surprised हूँ. Luis Diaz has had some good games against Chelsea as well. Is it for real, guys? Gakpo शुरू कर रहा है ना? मैं correct lineup देख रहा हूँ ना football.com में. लेकिन yes, and Jones is also starting. What's happening, guys? Liverpool का have they got the correct lineup? What is happening? Curtis Jones and Gakpo starting. Wow. तो हमने सरप्राइज नहीं किया, उन लोग ने भी किया भाई अपने को सरप्राइज. अभिषेक इन द हाउस, क्या हाल है? as soon as Mikhail kind of puts his camera on, I'll add him as well. मेरे भाई, he's in backstage. चैंपियन चेल्सी विल विन बोल रहे. चलो, अभिषेक बोल रहे यहाँ पर Vega has never started a Premier League game and starting him straight up against Liverpool ain't thoughtful. I hear you, लेकिन I thought we had time. Again, हम भूल रहे, a certain Chilwell is also technically there, but I know that he was ill. Adrabioyo not that good. I actually like him. So Nitin, respectfully, I think that इस गेम में height factor जो लोग बोल रहे Vega will be missed. Tosin is very crucial for that height factor in set pieces, especially यहाँ पर. चलो, I think Mikhail is just joined. So let's add Mikhail. Mikhail मेरे भाई, what's up? क्या हाल है? म्यूट पर हो आप शायद. आप म्यूट पर हो मेरे भाई. Mikhail is on a mute. Sorry guys, I was on mute. Okay. No, So I'm driving, as you can see. So I'm going to turn my camera off, but I'm listening in and I'm here for it. बिल्कुल बिल्कुल. तो Mikhail, early thought just to give you the team news, because Mikhail सुबह सुबह उठ के भाई शौक नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन Enzo Fernandez, I know there was talk in social media. Basically, we could possibly go that way, that we'll go Lavia. Lavia hasn't started many games this season. जो चीज आप वेगा के लिए बोल रहे हो that he hasn't started for Chelsea, you can also say that for Lavia to some extent. But left back पर looks like Gusto inverting against Salah. Defensive ploy, Lavia and Gusto. Are you like happy? And again, attack में we could have had Modric on the bench. Quick thoughts. Acha ji. So first thing, big game, big match. Liverpool is our traditional quote unquote rival, quote unquote bogey team, especially in recent times. So big day for Chelsea Football Club to go there and put in a strong performance, especially at Anfield. It's a hard It is. ground to get points at. So that said, वो मैं पिछले कुछ दिनों से एनालिसिस देख रहा था. बहुत से लोगों ने बड़े अच्छे एनालिसिस किए कि लिवरपूल को कैसे ब्रेक डाउन किया जा सकता है. हम ऐसे करें तो वैसे करें, तो ये करें तो वो करें, तो यहाँ से फिर ये एक चूंज निकल सकती है जहां से हम पकड़ लें उनको. तो बात यह है कि भाइयों, हमारी मिडफील्ड में हमारे पास कोई टोनी क्रूज तो है नहीं, कोई लुका मोड्रिक तो है नहीं, कोई आई डोंट नो क्या नाम ले, फैब्रिगास तो है नहीं. एंजो है, लेकिन एंजो जो है वो लाता तो है कुछ स्ट्रेंथ, लेकिन ही इज ऑलमोस्ट लाइक, आई वुड से, आई डोंट वांट टू बी हार्श, लेकिन थोड़ा सा लग्जरी प्लेयर बन गया हमारे लिए वो, कि वो ही डज ब्रिंग समथिंग बट ही गिव्स अप अ लॉट टू. तो उस पोजीशन में अगर हमें कुछ बॉल पे थोड़ी सी अगर हमें स्ट्रेंथ चाहिए, उस एरिया में थोड़ा सा एंडेवर चाहिए, तो मैं भी यही सोच रहा था कि लाविया अगर फिट होता तो अच्छा होता. तो मुझे लग रहा है कि आज लाविया फिट है. तो hopefully that's a good change from the tactics, and if necessary we can always bring Enzo off the bench. तो ये तो मुझे अच्छा लगा. अब आप बोले कि सैंचो, पामर, मुडवेके का फ्रंट लाइन की जगह मुड्रिक को होना चाहिए, तो मुड्रिक off the bench I think can still come and impact the game as well. I think on form I'm not surprised by this three, Palmer, Mudueke and Sancho or Jackson up front. I think that
you can argue that Neto maybe should be getting a start. Like, and I think Neto is also kind of an Okay, I think Mikhail का थोड़ा सा voice एक हो रहा है while I take the chat and he comes back. I think okay, Mikhail is back. Tell me. Sorry, did my audio? हाँ, a little bit. That's okay. लेकिन basically, Mikhail, again, chat यहाँ पर देख रहे, थोड़ा chat ले लेते guys. Again, big up to the chat. Let's hit that like button. Let's get in everyone. Lavia is a great plus today. Tactically spot on from Maresca, cause Caicedo and Lavia can cover and progress more. There was one more option, Anchit. मतलब यहाँ पर it's a good point. I get that, but remember, Caicedo in the Brighton games has played a certain role as well. मतलब did we मतलब think about it? मतलब for me, I get the fact that यहाँ पर आप nullify कर रहे हो and you kind of are working on that wings with Sancho and Madueke who are very crucial today. अगर हमें offensively कुछ करना है, in my opinion, because for me the way again मैं यहाँ पर tactically दिखाने की कोशिश करूँगा. I think defensive formation लग रहा है और which is very unlike Enzo Maresca's Chelsea if you ask me. Because for me, Madueke, Sancho will be जो लोग बोल रहे हैं ना ट्रैक बैक करना पड़ेगा. I actually don't think so. I think यहाँ पर the fact is Gusto will probably invert, yes, लेकिन I think considering he'll be marking Salah, considering he's a right footer, इसलिए उसको वहाँ किया गया है. Right side में again, I think there will be help for Reece James and there needs to be as well. From a Caicedo, Lavia is going to sit here very much so, and Palmer is going to be here. So basically, वो हम क्या बोल रहे हैं ना, Sancho, Palmer, Madueke, Jackson will be probably a front four with it's almost like a 4-2-4 at times. आप देख सकते हो यहाँ पर. This is what it seems like. The reason is because हम अगर बोलेंगे ना इन लोगों को भी ट्रैक बैक करने के लिए, then I don't think the pace factor is something that you associate with the Cole Palmer as much as he's the goated player this season anyway, right? तो वो चीज I think maybe या अगर Reece James overlap करे, Caicedo can come here, but क्योंकि यहाँ पर एंजो नहीं है, लाविया का बहुत ही क्रूशियल होगा the role he plays, or then in this case maybe Gusto comes in. So there are various permutation combination possible, but again अगर आप देखो ना there might be at times जहां पर हम we can just sit back at times. Proper sit back वाला चीज भी हो सकता है. आप देखो this is possible as well. Ankit bhai, I'm not sure if you're able to see what I'm showing, but this is looking again. I didn't realize that Reece James is starting. That's a breaking news, exactly. So Gusto on the left hand side and Reece James on the right hand side, exactly, right? अरे भाई ये तो कोई लंबा ही गैम्बल कर रहे हैं हम आज. ओए होए 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 होए. तो मेरा तो यही लॉजिक, ऑल्दो मैं भी एग्री करता कि इज ही बेसिकली श्योर, बट इन दिस फॉर्मेशन ना एक और चीज है, who will be the person जो बॉल को रिलीज करेगा. मतलब कॉलविल हैज टू बी प्लेइंग दोस लॉन्ग डायगोनल पासेस. दैट इज व्हाट आई सी, क्योंकि अगेन मतलब Caicedo could do his passes, right? Absolutely, Lavia as well, लेकिन they're not an Enzo as much as Enzo is not what they are defensively, right? तो considering Reece James, Gusto, Caicedo, Lavia, Colwill, Tosin, आपको मिडफील्ड में जितनी पड़ेगी बॉल, और वहां पर भी ब्रेकिंग न्यूज है गाइस, लिवरपूल का भी. मिकाइल, लिवरपूल आर स्टार्टिंग विद कर्टिस जोन्स एंड कोडी गैक्पो. These are two people that you generally don't expect. Maybe that I don't know, McAllister might have been traveling. वो international break के बाद है. Maybe that is what, but वहां पर considering they are going with Curtis Jones and Cody Gakpo and not a Luis Diaz या McAllister, क्योंकि दोनों South Americans would have traveled. I am surprised, but considering that, do you think this is over defensive Chelsea का? थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि we are over maybe, keeping in mind कि जो अभी तक गेम्स हुई हैं उसमें I think this is the most experimental lineup जो हमने देखा है. I could be wrong, but I think this is again like I'm happy to see James on the team sheet. I'm happy to see him starting. But वो back of my mind we haven't seen him play, so we don't know what to expect right now, right? तो वो थोड़ा सा वो gamble सा लग रहा है मुझे. I can understand खिला दिया because you don't want to overexpose Viega maybe. Yeah, Viega is maybe not. I don't know. He was available, so I'm not sure उसको क्यों नहीं खिलाया वहाँ पे. बेंच पर है तो bench is basically having Vega, Dewsbury Hall or Enzo, technically 3 midfielders or 3 defenders if you count Vega as either, right? देखो जो भी होगा लेफ्ट पे, वो आज expose होगा, right? Because Mohamed Salah is Mohamed Salah. We all know how
तो लेफ्ट बैक आई थिंक वो थोड़ा सा ब्रेव डिसीजन है कि उन्होंने कहा कि चलो गुस्टो को उधर खिला लेते हैं. गुस्टो शुड बी एबल टू एटलीस्ट गिव हिम अ टफ टाइम होपफुली. लेकिन गुस्टो भी आई डोंट थिंक हैज प्लेड. कितना खेला इस साइड पे गुस्टो? एक आधा मैच खेला है आई थिंक, लेकिन ज्यादा नहीं खेला. he played in pre-season. I remember very well वो खेला था क्योंकि कुकुरेया लेट ज्वाइन किया था ना अपना, if you remember. वो Epl Gw8 वाला स्वैप है ये. Epl Gw8, if you remember back in the day, Epl Gw8 under Jose Mourinho, वो सब everybody knows कि he benched Ashley Cole, and obviously Ashley Cole was nearing retirement at that point. He was not the Ashley Cole in his peak, but that's the वो एक अच्छा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है हिस्टोरिकली हमने. सो होपफुली टुडे इट पेज ऑफ. मगर आप वाली बात मुझे थोड़ी सी लगी कि मे बी वी आर ओवर थिंकिंग इट, मे बी अ लिटिल बिट ऑन द बैक साइड. लेकिन I would have been okay playing Viega there, लेकिन I would also have expected Salah to maybe dominate Viega, because Viega is not a specialist in that position. खेलता है वहां पे, लेकिन वो he's kind of like a jack of all trades on that side for us. वो जहाँ भी उसको खिलाना है, मिड में खिलाना है, फुल बैक खिलाना है, तो वो अभी तक उसका कोई सच कोई प्रॉपर रोल नहीं डिफाइन हुआ. तो ठीक है, इट इज अ लिटिल एक्सपेरिमेंटल, लेकिन आई होप इट गेट्स अस. नहीं, अगेन मतलब जस्ट कंटिन्यू विद दैट मिकाइल का पॉइंट गाइस. आई गेट इट अबाउट अगेन वेगा का ऐसा है ना, मतलब आई गेट दैट वो फिजिकलिटी में आप एसोसिएट करते हो, प्लस इज नॉट स्टार्टेड प्रीमियर लीग गेम्स ऑफ दिस मैग्नीट्यूड फॉर चेल्सी. आई गेट दैट टोटली. एट द सेम टाइम ये भी ऑन द अदर हैंड ये भी बोल सकते हो ना, ही एक्चुअली मेड हिज डेब्यू फॉर पोर्चुगल इन द इंटरनेशनल ब्रेक, और ही प्लेड सेंटर हाफ एंड आई थॉट ही लुक गुड. मतलब जहां तक मैंने देखा, आई नो दैट द डिफरेंट केटल ऑफ फिश ऑल टुगेदर, लेकिन एक होता है ना कॉन्फिडेंस, एक मोमेंटम, एक चीज होती है. तो आप यहाँ पर यू माइट हैव एक्चुअली थिंक ट्वाइस, लाइक you're not playing Vega and Chilwell when basically Kukurea is not available. But again, tactically it might be a masterclass for all we know. You're right, as in क्योंकि Gusto might be a surprise weapon for all we know. यहाँ पर रीस जेम्स could actually sit back. मतलब for all we know हम सोच रहे हैं गुस्तो actually defensively रहेगा against साला, लेकिन actually रीस जेम्स क्योंकि कोडी गैक्पो भी आप देखो तो बहुत डायरेक्ट प्लेयर है, तो he might actually sit back as a right center back जो हम खेलते थे under Tuchel, and you might have Gusto inverting more from midfield and actually being that extra man that a Lavia needs, a Caicedo needs, right? So for all we know 3-3-3-1 भी हो सकता है on the pitch. That's actually a good point, but at the same time मैं personally surprised you that Vega, Enzo दोनों shouldn't नहीं कर रहे इस गेम में, but again happy for Lavia for sure. Maybe वो maybe Gusto will go back to the right back after. Maybe James will take up at some point, right? So maybe at that point Gusto will return to the right back. Maybe Viega will go to left back. Maybe Chilwell will come on. I don't know Chilwell का क्या problem है Maresca के साथ कि वो Maresca will not even give him a chance. He would rather play Gusto out of. I think he was a little ill, but press conference तो बोला था that he's available. I think we can safely say that Chilwell का future is not there in the club no matter what, क्योंकि this kind of game वो he was unwell, you're right. वो Maresca ने बोला था कि वो उसने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया. लेकिन अगेन मिकाइल एंड चैड आप लोग ये बोलिए, मतलब इन टर्म्स ऑफ दैट मिडफील्ड और रादर अटैकिंग मिडफील्ड एरियाज और विंग एरियाज में Mudryk, now जो लोग ऑलरेडी चैट में कंक्लूजन पर आ रहे हैं Mudryk is going to be sold in January, but I thought Mudryk recent 2 performances despite the it being not really as in big games so to speak, लेकिन I thought he really looked good. He actually looked very sharp. Even last match में जब आया था substitute, he looked really sharp. Again, what is the need to have 3 defenders or 2 midfielders? Sorry, midfielders के बारे में, well the thing is कि I think जो precedent set हो रहा है by Sancho playing in that position, उससे पहले Sterling था in that position, that was an up and down kind of a precedent. लेकिन I think वो level नजर आ रहा है Mudryk को भी कि okay, I have to raise my game a little bit. तो वो जब आ रहा है तो he is okay, he took a knock. But what I'm trying to say is, are you sure, Cobra? What's the source? Because for me, this is news to me. But if it is, then fair enough. Tab I don't know. मतलब by 90 minutes, wow, Wolves Man City is 1-1. Guys, सब लोग एक हो जाए भाई. Chelsea.
Chelsea. Let's go, man. Agar Newcastle, then you had Arsenal, potentially Man City dropping points. All of a sudden, there is even more reason to be a little bit more attacking. Lekin first, we'll have to respect Liverpool at Anfield. Caicedo is a decent playmaker too. He has lots of assists as a number 8 for national team. Bilkul, he's a brilliant passer as a Pudin. Lekin in this kind of game, मैं यही देखता हूँ because Lavia regions दोनों ही kind of injury prone are coming back. I'm hoping that they are carefree wherever we may be वो खुद समझते हैं and they play that way because Caicedo, I don't know why I might be wrong, लेकिन मुझे लगता है he might be ending up doing more of defending rather than doing this. तो ball release कौन करेगा? I think Colwill has to be the answer, right, Mikhail? क्योंकि Colwill could play those long passes. That's the only thing मुझे लग रहा है इस गेम में. नहीं, you're right, but I think Lavia is capable of threading a ball too. So if Lavia is अब देखा नहीं हमने, we haven't seen Lavia play much. So किस form में आता है क्या आता है? But Caicedo has a bit of an eye for the unexpected pass as well. So I think that there are sources, and of course Reece James on the ball. Don't discount कि Reece James has that ability too. अब वो कितना आगे कितना adventurous होता है वो in moving up the field. वो देखना पड़ेगा. I don't expect him to be too active. I think it's थोड़ा सा वो मुझे सरप्राइज है कि उसको स्टार्ट करा दिया आपने because I think off the bench would have been better. लेकिन hopefully he does well. He's capable. We all know he's good when he's good. When he's fit, he's good. But he hasn't had much games. So मेरा लॉजिक है, I think that is the only logic I have कि देखो we have to admit that this season के लिए at least Reece James maximum 20 games शुरू करेगा out of 60 games if you count all the competitions, right? And then they had the international break to prepare, etc. And they are like, at the end of the day, these 20 games have to be the best games that you have to get the best out of Reece James, and he has to start these games. Because you're not starting Enzo, you're not starting Chilwell, Ballab. You need some leadership on the pitch at Anfield, right? That might be the only thing. जहाँ पर risk again, is it worth, is it north? We kind of don't know it. Time will tell, right? लेकिन मुझे तो यही लगता है. I don't think it's a tactical thing really. It's more like क्योंकि हमारे पास at Anfield in such big games, we just need some leadership there because Caicedo is not that leader yet. I don't know. If you see any other reason, could it be set pieces, Mikhail? For all we know. वो एक अलग डिस्कशन है, but I agree with you कि वो Enzo being not started today. Yes, he might have been traveling, लेकिन Enzo is not dominating his position these days. तो हमारा एक गैप है वहाँ midfield में जो कि we were hoping कि Lavia would kind of help plug, लेकिन Lavia की fitness भी off and on है. So this is like a makeshift kind of arrangement आज. And I would argue कि in a Enzo Caicedo pivot, I don't have much confidence versus a team like Liverpool because they're known to be fast. They're known to exploit the pockets, the spaces. So like I could be wrong, लेकिन he doesn't fill me with confidence. So generally we have a question mark in our midfield कि भाई who is going to be the answer to some of these concerns, right? Because थोड़ा सा वो it is what it is. But I'm expecting a big game from Lavia. I think that would make or break our midfield performance today, based on how Lavia can play. And of course, whoever's inverting, somebody we know will invert, whether it's Gusto or it's James or if it's Colwill stepping up and providing that presence. I could see that as well. लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा experimental है. So आप वाली बात है, मुझे अभी भी लग रहा है कि we are overthinking too much. ठीक है, it's just a league game. Maybe it's a time to experiment like this, maybe, as opposed to some bigger game. But वो थोड़ा सा वो किसी ने लिखा था कि let's see who blinks first from the managers from a tactical point of view. So I think we blinked many times already in this lineup. So let's see. The thing is, मेरा तो हमेशा से वही है कि भाई बेइज्जती ना कराना, जाके put in a good fight. Follow the manager's tactics and hopefully we can make something good happen. We know we have some ability to surprise teams, especially from dead ball situations. थोड़ा सा वो एकदम get a quick pass in behind the defense. But we're talking about the best defense. Man City scored meanwhile. क्या ही बोले यार, हट यार.
अरे यार, what a killer man, what a killer. John Stones scores man, yet again. I can't believe it. भाई जॉन स्टोन्स ही था, if I remember, against Arsenal. Wow. By the way, what a goal from Guardiola, I must say. मतलब I don't know how many of you all missed that, guys. Guardiola सच में लेफ्ट फुट रखे, I don't know, मतलब he is someone who's, I don't know, scores those bangers from right foot. लेकिन John Stones scores in the 5th minute of added time. एक सेकेंड दीजिएगा मुझे. सुशांत यहाँ पर थोड़ा चैट ले रहा हूँ गाइस. सुशांत बोल रहे हैं अंकित वी शुड प्ले विद एंजो, वी विल मिस की पासिंग क्रिएटिविटी. भाई मैं थोड़ा चैट को एड्रेस कर देता हूँ गाइस. अगेन आई वुड लव द फैक्ट इज यू गाइस कैन हिट दैट लाइक, शेयर करिएगा. इट्स अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी. कहाँ है हम अपनी जनता भाई. गोल डिसला हो गया, चलो भाई गोल डिसला हो गया, आई बिलीव सो. चलो भाई लेट्स गो मैन, लेट्स गो. Chelsea, 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 Chelsea. Come on, Chelsea. Come on, Chelsea. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. चलो भाई, let's go. But again, it's something great. Again, Mikhail, are you there? Let's see. Actually, I am. Just give me a minute, Ankit. I'm just setting up. I'm back home. I'm setting up. Sure, great. Putin बोल रहा है Guardiola scores the right foot against Real Madrid too. Yes, I think इस सीजन में 6 गोल मारा है Guardiola. 5 I think 4 शायद if I'm not wrong right foot से, एक हेडर है, but he's a left footed defender after all. I must say that he is some kind of defender. लेकिन we have Kukurea who's suspended. Again guys, चैट यहाँ मुझसे पूछ रही थी दैट मैं रेनाटो वेगा शुरू करता. देखो मेरा 2 ऑप्शन था. मुझे लग रहा था कि ही विल गो विद द ट्राइड एंड टेस्टेड ओनली. ये एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा एंजो मैरेस्का. लेकिन आई एम ग्लैड दैट ही हैज बीन ब्रेव इनफ टू एक्सपेरिमेंट, व्हिच नीड्स डेफिनेटली अ थम्स अप फ्रॉम यू ऑल. लेकिन साथ में मैं अगर होता, मैं टैक्टिकली देखता कि यार लेफ्ट बैक पर आई वुड हैव सेड कि यार एंजो मैरेस्का मेड अ मिस्टेक बाय नॉट प्लेइंग चिलवेल इनफ earlier on, embedding him enough in the squad earlier on, क्योंकि मुझे लगता है इस गेम के लिए I would have had a Ben Chilwell अगर कुकुरिया नहीं होता तो. अगर Ben Chilwell is not match fit, then I would have had a Renato Vega, yes. लेकिन in that case मैं विंग चेंज करता क्योंकि सैंचो ट्रैक बैक इनफ नहीं करता है. और वहां पर क्योंकि पेस है मुड्रिक का, who also might have got a knock, लेकिन ideally I would have actually gone with that because again Mudryk has had his best game arguably in the Premier League against Liverpool, if you remember his first game arguably as a substitute though, because यहाँ ट्रेंट है. ट्रेंट के पीछे आपके पास स्पेस मिलेगा for sure, and वहीं पर I think Mudryk probably would have been actually effective compared to maybe a Sancho, but let's hope that Sancho does well. Plus Mudryk has the pace to come and track back and kind of help out the defender. लेकिन मैं शुरू करता है एंजो फर्नांडिस को. मुझे लगता है द फैक्ट इज, हाँ ये भी मैं अग्री करता हूँ दैट इन अ जनरल सिनेरियो अगर हम से फॉर एग्जांपल विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट अगर बोर्नमथ को खेलते या साउथहैम्पटन को खेलते या फॉर दैट मैटर इप्सविच को खेलते, एनी सच टीम को खेलते हैं ना, देन आई नो बोर्नमथ जीती आर्सेनल के अगेंस्ट यस्टरडे, बट I would have actually been okay with resting Enzo or putting him on the bench, क्योंकि after all we know कि 2 South Americans traveling all the way back after the international break easy नहीं होता है. But because it's Liverpool and because हम Sunday को खेल रहे हैं not on Saturday, I would have had Enzo Fernandez starting. और मैं रीज जेम्स को to be honest मैं शुरू नहीं करता. मैं शुरू करता गुस्तो को, मैं लाता रीज जेम्स को as an impact player from the bench, जो दिखाया था last season में when he came back from injury in a certain game against Forest, I remember. तो मेरा ये लाइनअप होता. I would have had left back Chilwell/Vega with center back. I agree with the lineup जो पिक किया गया. Right back मैं लेता गुस्तो को जो इन्वर्ट करता with Caicedo, with Enzo, लेकिन with Mudryk, with I think Nkunku का भी I think मैं देख रहा हूँ चैट में. I would have actually gone with Nkunku, yes, and not a Madueke. I would have had Palmer and I would have asked Gusto to kind of stay as much as possible on the wings with Jackson up top. लेकिन it is what it is. अब देखते एक सेकेंड भाई, स्टोन्स का गोल अलाउ हो गया क्या यार? ये क्या अलाउ फिर डिसअलाउ फिर अलाउ हो गया, ये क्या हो गया? हट यार, what is that? What just happened there guys? And I can't understand, man. Seriously, man. Such thing I sometimes I don't understand. हुआ क्या यार? Anyone saw that? Obviously, यहाँ पर हम address करें chat को और हम यहाँ पर we are just kind of tactically analyzing. Guys, again, Almighty Blues FC a fan channel for all to see. Let me know who all are in and comment करेगा. Please consider sharing it, my fam. It'll help. Again, you are our extended fam, guys. Let's have in everyone. हो जाए भाई. When the Blues go streaming in. Oh, when the Blues go streaming in, I wanna be in that number.
Oh, when the Blues go streaming in. Chelsea till I die. I'm Chelsea till I die. I know I am. I'm sure I am. I'm Chelsea till I die. Carefree, wherever we may be. We are the famous CFC. Goalkeeper to impede को impede कर रहा था. Okay. वार की जरूरत नहीं थी, बस पता नहीं क्यों हुआ. पता नहीं. I didn't watch it. You guys tell me that. I did watch the Guardiola goal though. लेकिन little strange. मुझे भी मैं फॉलो कर रहा था यहाँ पर. मुझे दिखा रहा था कि पहले गोल हुआ है, देन डिसअलाउ किया गया, फिर वापस अलाउ किया गया. सिटी विन हुआ क्या भाई? वेरी इंटरेस्टिंग. लेकिन कहीं ना कहीं सिटी का XG दिखा रहा है 1.71. आई बिलीव you have to give it to them. Although I don't know first half में कितने लोग देखा था. I think there was a proper chance even after the first goal of Wolves. जो Semedo जो create किया था first goal, I think he had a chance and he kind of missed it, fluffed it rather. लेकिन guys, as things stand, City looks like favorites भाई. As things stand, unless Liverpool या Chelsea जीत जाए ये मैच, probably Chelsea तो है नहीं. खैर, we are just kind of there or thereabout for top 4 race, जो Villa भी है very much so. लेकिन अभी अगर टेबल देखते हैं, लाइव टेबल गाइस, दिस इज व्हाट इट इज. Aston Villa and Brighton have overtaken Chelsea, so it's imperative कि हम at least 1 point ले, if not 3, to kind of get in the top 5 positions at least, if not top 4. लेकिन again Arsenal drop किए points, Newcastle drop किए points, it would have been imperative कि हम उससे भी ज्यादा ट्राई करें. हो सकता है arguably coming back to Chelsea Liverpool game, मतलब one can argue that we are actually having a stronger bench. I don't know how many of you all agree. आप अगर दोनों बेंच को कंपेयर करो, मैं बेंच दिखाया तो गाइस अगेन जो भी लोग चैट में आप लोग भी बोलिए, who has a better bench? Is it Chelsea or Liverpool? मतलब one has to say it's probably Chelsea bro. As much as वहां पर McAllister है आज, yes he was also traveling, remember, similar to Enzo Fernandez, शायद उसके लिए उसको शुरू नहीं किया गया. There is Darwin Núñez of course the same, Luis Diaz the same. तो 3 people who will probably come on for Liverpool for sure in my opinion. लेकिन चेल्सी के लिए आप देखो तो I could have Enzo Fernandez, क्योंकि creativity in midfield अगर हम lack कर रहे हैं, we will get him in for sure at some point. Then you have a potential, अगर हमें physicality चाहिए, Renato Vega could come in. अगर tight spaces हम deal कर रहे हैं, बहुत ज्यादा pressing etc, Christopher Nkunku और Felix might come in, और Pedro Neto on the wing तो आएगा ही. तो I think Chelsea में 5 potential I think substitutes है who could probably change the game. गेम चेंजर्स इन ओपिनियन एटलीस्ट 4 है, लेकिन लिवरपूल में 3 है. सो आई वुड लाइक टू से कि चेल्सी का बेंच इज डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर इन माय ओपिनियन. एज आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर Michael still. Michael, whenever you're ready let me know bro. Anyway, यहाँ पर लेट्स सी. बाकी सेट पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन सेट पीस के लिए एक और लॉजिक है मेरा. रीस जेम्स, डोंट बी सरप्राइज्ड, क्योंकि एंजो फर्नांडिस और रीस जेम्स के बीच में भाई दोनों शुरू नहीं कर रहे थे, तो ही हैज ऑप्टेड फॉर रीस जेम्स. क्योंकि आप लोग याद है तो रिसेंटली कॉर्नर्स वर रबिश. हमने रबिश कॉर्नर्स लिए थे इन द लास्ट फ्यू गेम्स, एंड आई थिंक कंसीडरिंग दोस कॉर्नर्स, one can argue that Reece James, Mudryk और Enzo Fernandez are the people who take the corners, correct? Along with maybe Pedro Neto. तो इन चारों में से एटलीस्ट एक तो शुरू करना बनता है, and that is where Enzo Maresca गया है Reece James के साथ में, even to take corners, very important. Similar, just to be defending or attacking corners, Tosin, very important in the box. For all we know, even Lavia. Let's see, guys. Again, let's hit that like button. Definitely helps. और बाकी लोग इन द चैट. सर जॉश मैककन ने बोल रहे क्या हुआ है इन द सिटी गेम. बर्नार्डो वाज इंटरवेनिंग गोलकीपर हु वाज इन ऑफसाइड पोजीशन. सिविल इंजीनियर व्हाट्सएप, क्या हाल है मेरे भाई? व्हाट्सएप. लेकिन अरे भाई, वोट टू लूज, आई विश दैट वाज एन ऑप्शन. वो ऑप्शन नहीं मेरे भाई, क्या ही कर सकते. let's see Krishanu, all the best to you as well. पुदन बोल रहे just like last year ये पैलेस जैसे टीम्स के साथ ड्रॉ करना will haunt us. मैं वही बोल रहा हूँ ना, all of a sudden I think ये गेम में एक तो होता है कि यार लिवरपूल चेल्सी है भाई. guys remember, we cannot forget कौन कौन खेल रहे थे भाई इन द कैराबो कप फाइनल. Who played among the starting 11? कैराबो कप फाइनल में मैं दिखाता हूँ. कैराबो कप फाइनल 2024 में कौन कौन शुरू कर रहे थे. तो कहीं ना कहीं बदला का दिन है भाई, बदला का दिन भी है. मौत का खेल, बदला का दिन. क्या बोल रही जनता? नहीं, इन माय ओपिनियन होना चाहिए 100%. दे शुड फील इट. आई होप दे फील इट. आई नो इट्स मोर ऑन, दे हैव टू बी अवेयर कि व्हाट्स हैपनिंग ऑन द पिच देन ऑन द माइंड. लेकिन आई थिंक जहां तक मुझे याद है, मैं शेयर करने वाला हूँ कैराबो कप फाइनल से
क्योंकि वो इंपॉर्टेंट याद दिलाना. आई होप दीज गाइज आर बीइंग टोल्ड, और आई होप एंजो मरेस्का यूजेस दैट इन द मैन मैनेजमेंट. इट्स इंपॉर्टेंट आज बिकॉज हम ड्रॉ किए थे लास्ट गेम, और बिकॉज देयर हैव बीन अ कपल ऑफ टीम ड्रॉपिंग पॉइंट्स, वी कैन से कि यार कहीं ना कहीं वी आर नीडिंग मिनिमम 1 पॉइंट इफ नॉट 3. एब्सोल्युटली. मालो गुस्तो स्टार्ट किया था, ही इज देयर टुडे. ठीक है. लीवाई कॉलेज स्टार्ट किया था, ही इज देयर टुडे. काइसेडो स्टार्ट किया था, ही इज देयर टुडे. कोल पामर शुरू किया था, ही इज देयर टुडे. निकोलस जैक्सन. देयर आर 5 स्टार्टर्स गाइस, 5 स्टार्टर्स फ्रॉम कैराबो कप फाइनल जो आज शुरू कर रहे. और फ्रॉम द बेंच आई बिलीव सो नोनी मडवेके एंड क्रिस्टोफर एंकुंकू केम ऑन. भाई देखो, दिस इज व्हाट इट वाज. भाई इतना समय पहले कि मैं भूल गया भाई, लिटरली. तो लिटरली 7-8 प्लेयर्स है हु काइंड ऑफ होपफुली रिमेंबर दैट. तो बदले का भावना है. और नॉट जस्ट दैट, आपको याद है क्या हुआ था फ्यू डेज बिफोर दैट, 4-1 हम हारे थे. तो वी नीड टू रिमेंबर दैट, प्लस द फैक्ट दैट एट द एंड ऑफ द डे एस्टन विला, ब्राइटन हैव गॉटन अबव अस. ये भी एक चीज है. जैसे हमने काउंट किया, देयर आर लिटरली 5+3, 5 स्टार्टर्स जो कैराबो कप फाइनल में थे, यहाँ भी शुरू कर रहे, एंड 3 पीपल फ्रॉम द बेंच जो वहां से आए थे, यहाँ पर भी है ऑन द बेंच. डिफेंस कैसा फीलिंग देती है चेल्सी का बैक फोर एंथुसियास्ट साजन? इट इज एन इश्यू, आई विल नॉट लाई. क्यों? क्योंकि एक तो अगर कुकुरिया होता तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आता, क्योंकि कुकुरिया का ग्राउंड कवरेज is definitely there, his tackles are definitely there, एक एनर्जी लाता है. बट इनफैक्ट इवन रेनाटो वेगा इनफैक्ट ज्यादा लाता है. लेकिन आई वुड लाइक टू से कि मालो गुस्तो टैक्टिकल रीजन है वो, बिकॉज ऑफ विच ही इज देयर टुडे. सो लेट्स होप कि दैट टैक्टिकल जो पिक है दैट काइंड ऑफ वर्क फॉर एंजो मैरेस्का, नॉट फॉर स्लॉट, जो चेंजेस हिमसेल्फ किया है. आप देख सकते हो स्क्रीन पर, he has actually gotten Curtis Jones to start along with Cody Gakpo, maybe because South Americans traveled etc. that's what मैं बोलूंगा. What about Enzo? Nothing about him. Again, I know social media शुरू हो जाएगा कि Enzo को सेल कर लेंगे जैसे मुड्रिक शुरू हो जाता है, but nothing. I think it's a tactical choice because of Enzo not having इतना legs. You know, although Lavia आ रहा है इंजरी के बाद में, I think that is what you can say कि Enzo is basically a little bit of risk in this, considering हम हमारे पास कुकुरिया नहीं है. कुकुरिया होता तो Enzo खेलता. That is the whole point. And again, लिवरपूल फैंस, आप लोग थैंक कर सकते भाई किसको? A certain निको विलियम्स को probably. पुतिन बोल रहे केलर अगेंस्ट अस ऑलवेज बिकम्स प्राइम बुफॉन. यस, अगेन भाई हम चेल्सी का देख लिए, लिवरपूल का भी देखना पड़ता है कि कौन कौन शुरू किया. दैट्स अ गुड पॉइंट. दैट्स एक्चुअली अ गुड पॉइंट ऑफ पुतिन भाई. लिवरपूल के लिए देखो, ग्रावनबर्ग का जो फिजिकलिटी नाउ, दैट इज समथिंग व्हिच हैज चेंज्ड फ्रॉम लास्ट सीजन और दिस सीजन. जस्ट हिज प्रेजेंस, जस्ट हिज कामनेस ऑन द बॉल. ठीक है. लेकिन एट द सेम टाइम हम लाविया ला रहे हैं जो लास्ट सीजन में अवेलेबल नहीं था, याद रखिए. तो आई थिंक वो एक कैंसिल आउट होने का पॉसिबिलिटी है if you are a Chelsea fan. But if you're Liverpool, you're saying कि no, Gravenberch is probably the midfielder of the season almost. That's how good it's been. Liverpool का आप देखो Carabao Cup final में who all started? Then Konate, Van Dijk, Robertson. Then you had Gravenberch शुरू किया था भाई. Gravenberch was there. Then you had Cody Gakpo also starting. Wow. इंटरेस्टिंग. तो 5 जन उनके भी यार, इनफैक्ट 6 केलर, 6 स्टार्टर्स थे लिवरपूल में ऑन द कैराबो कप फाइनल, जहां का रिवेंज लेना है कंपेयर टू टुडे. एंड यहां पर बेंच पर है उनके मैकलिस्टर जो शुरू किए थे, याद रखिए. एंडो आई बिलीव सो, इज ही ऑन द बेंच टुडे? लेट मी जस्ट चेक. हाँ, एंडो है भाई बेंच पर, मेंदुड़ा है बेंच पर अपना. वाओ, इंटरेस्टिंग. तो उनके भी 7-8 प्लेयर्स है गाइस, उनके भी 7-8 प्लेयर्स है. जो गोमेज ऑन द बेंच एज वेल, आप देख सकते हो. इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग दैट देयर इज सम कॉमनैलिटी. चलो भाई, मिकाइल को वेलकम करते हैं. मिकाइल बेटर लेट देन एवर इज हियर इन पर्सन एज वेल. लेकिन मिकाइल, ग्रावेनबर्ग इंजर्ड हो गया था 20 मिनट्स के अराउंड. हाँ भाई, हमें याद कर रहा था वो कैराबो का फाइनल. व्हाट डू यू थिंक? The fact is, I know it's just a league game. At the end of the day, it's मतलब कहीं ना कहीं we are still building वाला phase में है. But you think the fact is that because of the fact that हमने last 2 गेम हारा था technically लिवरपूल के साथ में, कहीं ना कहीं that reminder is necessary. मतलब if you are a Reece James for example, someone like that. यार 100%. I think ये अगर आप देखें हमारी रिसेंट हिस्ट्री लिवरपूल के खिलाफ, तो जनरली देयर बीन अ लॉट ऑफ ड्रॉज, लेकिन कुछ बिग गेम्स थी जो कि वी एंडेड अप ईदर लूजिंग ऑन पेनल्टीज या वी लॉस्ट 1-0. आई थिंक वन वाज द रिजल्ट.
एक वो 4-1 रिजल्ट था. We played quote unquote without Palmer, and Pochettino learned some harsh realities. Lekin I don't think Palmer was the big problem there. But anyways, the point is that we have some quote unquote some revenge कह लो, yeah, we have some business to take care of, right? So we have to set the record straight. थोड़ा सा I think वो लिवरपूल में एक बहुत सी टीमों में है एक्चुअली, लेकिन लिवरपूल में भी है कि वो when they play Chelsea they find another gear. Somehow we don't find that gear. वो motivation level वो it's not there when we need it, I guess. या आप कह लो कि we I don't know, maybe it's वो कहते हैं ना हमारा luck ही खराब है, maybe we were unlucky in a few of those. But situation यही है कि we have some business to take care of. We have to make up for some of those results, and today is an opportunity to do it. ज़्यादा pressure नहीं लेना, लेकिन at the same time, you know, we are a team that is on the upward trajectory. I would like to see some mentality today as well. तो वो मेंटालिटी, एक तो टैक्टिक्स हैं, थोड़ी सी मेंटालिटी भी आ जाती है. सो अब मेंटालिटी ये नहीं चाहिए कि लीवाई कॉलवेल जाके लड़ाई करके कार्ड ले ले फॉर, वो वाली मेंटालिटी नहीं चाहिए. मेंटालिटी ये चाहिए कि वी डू कीप आवर हेड्स डाउन एंड डू आवर जॉब्स. वो मेंटालिटी चाहिए. और जब व्हेन वी रियलाइज के वी नीड टू स्टेप अप अ गियर, we should have that response from the team, and 100% part of that will be Reece James. Reece James has been there, done that. He should have. He has the mentality. We nobody doubts it. Lekin the rest of the team is newish. Leaders come at team mein, so we're hoping ke the characters like Renato Vega and Jackson and आपका obviously Colwell भी है, and all of these guys kind of feed off each other's energy. वो हमें चाहिए आज कि वो जरा टीम स्पिरिट नजर आनी चाहिए. सबको मेरी तरफ से पहले ही बड़ी गुजारिश है, बड़ी हम्बली गुजारिश है कि प्लीज प्ले हम्बल. टीम वाले अगर सुन रहे हैं हमें आज, तो प्लीज प्ले हम्बल, डोंट प्ले सेल्फिश, प्ले फॉर द टीम, प्ले फॉर द फैंस. मिकाइल का इशारा कहीं पर जा रहा है. मिकाइल का भाई, एनी गेसेस इन द चैट भाई, मिकाइल का इशारा कहां पर जा रहा है? मैं बोलता था फिर भी समझ में आता मिकाइल, लेकिन कभी कभी मिकाइल इज अ प्लेजेंट सरप्राइज. बट you know exactly what we mean in the chat. मैं तो डायरेक्टली बोलता हूं भाई, मैं तो एक क्रिस्टोफर इंकुंकू शुरू करता. फॉर मी ना, this is a kind of game जहां हमें पता है, as much as Enzo ball is possession football and all that, ठीक है, positional play, breaking between the lines etc, I get that, ठीक है, but साथ में ये भी है कि at Anfield, and you are right, we have to be humble and we have to realize कि भाई we will be hitting on the break, and I thought for that I think Nkunku would have been awesome in my personal opinion. But this is a good point actually. Okay, how do you see us playing, Ankit? Are we going to sit back and try to play on the break? Are Liverpool going to sit back and play on the break? ये क्या डायनामिक प्ले होगा? देखो, लिवरपूल तो सिट बैक वाला तो मामला नहीं. लिवरपूल बेसिकली दे आर हैविंग कर्टिस जोन्स, ग्रावेनबर्ग एक्सेट्रा, ज्यादा आई थिंक बॉल प्लेयर्स है. दे हैव अ लॉट ऑफ बॉल प्लेयर्स, राइट? सो दे विल बी बेसिकली, उनका चीज होगा अबाउट कंट्रोल, राइट? इट्स नॉट अनलाइक यर्गन क्लॉप, वहां पर विंग प्ले इतना ज्यादा नहीं करते कंपेयर टू दैट, ऑल्दो दे हैव ग्रेट विंगर्स, और प्लस गैक्पो भी डायरेक्ट है. चेल्सी ऑन द अदर हैंड, मेरे ख्याल से डायरेक्टिव ये होगा कि भाई विदाउट द बॉल वी हैव टू सिट बैक, सिंपल एज दैट, बी हम्बल लाइक यू सेड. बट आई थिंक देयर आर क्लियर इंस्ट्रक्शंस फॉर मडुवेके. जितना भी हम हंस ले, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है एट द सेम टाइम. मडुवेके एंड सैंचो, जो चीज मैंने एंकुंकू के बारे में बोला ना सेंट्रली, probably the fact is क्योंकि लिवरपूल are not playing as much on the wing compared to Jurgen Klopp, maybe we kind of nick the ball because we have two defensive fullbacks, right, proper, along with the Caicedo or Lavia to break up play. हम यहाँ पर switch off play on the wings करें, और Palmer might actually join Jackson. It might be other way around. आज मुझे लगता है, मैं tactically भी समझाने की कोशिश करूंगा. Basically, I am looking at Sancho and Madueke been asked to kind of stay wide and ट्रैक बैक ज्यादा नहीं करेंगे, मैं ओपिनियन आज, विच इज सो अनलाइक मडुवेके का जो गाली पड़ता है स्पेशली मुझसे, बिकॉज आई थिंक बिकॉज वी हैव रीस जेम्स एंड काइसेडो, एंड आई थिंक यहाँ पर कहीं ना कहीं इफ यू रिमेंबर, वाज दैट द ब्राइटन गेम जहां पर वी सॉ काइंड ऑफ ट्रायोस बीइंग फॉर्म्ड, इट यू कैन ऑलमोस्ट सेंस सच अ काइंड ऑफ गेम प्ले. आज ऑलमोस्ट आप देख रहे हो लेफ्ट सेंटर बैक में, आप देख रहे हो
three people will be kind of taking care of mainly Salah, hopefully defensively. तो बहुत defensive लगेगा ये. Right center back में आप देखो almost three people there when they are actually attacking from the wings. और central space में जब कर रहे then basically these two kind of come closer. ठीक है, और ये बैक फोर हो जाता है काइंड ऑफ मतलब इन अ स्क्वायर. तो आई थिंक ओनली थिंग इज ये ऑलमोस्ट पीपल माइट बी सरप्राइज पोचेटिनो बॉल, यू रिमेंबर स्विच ऑफ प्ले पोचेटिनो बॉल. मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि द गाय हु विल रिलीज बॉल will as much as Lavia Caicedo कर सकते हैं, मेरे ख्याल से Colwill ही होना चाहिए, because I think one ball over the top and Madueke is to make sure that he is on the attacking as well as Sancho. I think these two are very crucial and यहीं से attack play होगा. लेकिन अगर आप सोचो, क्योंकि पामर जैक्सन में सोच रहा हूँ आर गोइंग टू बी प्लेइंग टुगेदर आज, maybe Nkunku and Palmer would have been a better option with Jackson possibly not starting. If you really think about 100% आप सही बोल रहे हो. Okay, वो Nkunku is probably more clinical right now in the way they both are performing, but question यही है कि Jackson off the ball brings a lot as well. उसकी hustle जो है off the ball, maybe that's worth giving him game time as well, and kind of understanding that maybe the goal will not come from Jackson. Hopefully he's able to play other people around him in that can maybe be more clinical than usually he is, but at the same time, that said, there are some games where Jackson has been super clinical as well. Oh yes, so ये भी I don't want to write him off completely. थोड़ा सा disrespectful भी हम हो जाते हैं, लेकिन we have good reasons for that too, right? कि वो sometimes he is very wasteful. So आज के लिए I agree with you. In a game like this, tough game, maybe there's only one or two chances, and can we afford to miss them? So उस situation में, yes, I would agree with you. I'm hoping that we are kind of thinking that we are managing the game in phases. So this phase में Jackson खेलेगा, we're going to create different types of opportunities. This phase में Nkunku आएगा, we will maybe create more opportunities in his area of play, and maybe look for him to maybe nick us an important goal or two. So either way, I'm not super worried, लेकिन I do understand कि आप किस एंगल से बात कर रहे हो कि he would give us more confidence if he were starting. कि we would expect कि if he gets one chance, we might get one goal. क्योंकि ऐसा गेम है ना Michael, we will not have and we have to admit that. Let's hope we are wrong, लेकिन हमें वही लगता है. और एक और चीज है, सब लोग जो भी चैट पर देख रही है ना, मैं देखा था कुछ चैट में लोग वर शाउटिंग फॉर पेड्रो नेटो. जो मैंने बोला था ना कि ट्रेंट है तो मे बी अगर मुड्रिक होता could have been an option अगर वो अवेलेबल होता, क्योंकि आई थिंक वो इन बिहाइंड वाला चीज है ना, जो प्रॉब्ली सैंचो से ज्यादा मुड्रिक, इनफैक्ट नेटो कुड डू दैट. आई गेट दैट चैट, लेकिन आई थिंक नेटो क्यों शुरू नहीं कर रहा ना, मेरा ये लॉजिक यहाँ पर, क्योंकि देखो रीस जेम्स लाविया, टू पीपल हु प्रॉब्ली विल नॉट फिनिश 90 मिनट्स एनीवे, ठीक है. तो वहां पर इवन स्टार्टिंग एन Nkunku और नेटो वुड हैव बीन अ लिटिल बिट टू रिस्की. आई थिंक दैट इज द ओनली लॉजिक आई हैव. लेकिन हाँ, टैक्टिकली one can argue that Neto could have also have been a brilliant shout, क्योंकि वो लोग अटैक करते हैं especially from the full back region. So that's interesting that at what point वो लोग आए in the match. टाइगर बीस बोल रहा है आज का मैच थ्रिलर होगा. कुकरा will be the major missing. वेगा का important test है. वेगा is on the bench, guys. Just so that in case you have joined late. Noni is great. Believe in Noni. बिल्कुल, we believe in Noni. And we believe that Noni will also be wasteful. दोनों चीज है. तो भाई रियलिस्टिक्स अपने बच्चे हैं सारे, इनके लिए हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा. थोड़ा सा हमें पता है कि जैक्सन भी वेस्ट करेगा, थोड़ा सा हमें पता है मेडवेके भी हरकतें करेगा. द पॉइंट इज कि ओवरऑल वी हैव टू कम अवे विद द रिजल्ट टुडे. इफ नथिंग एल्स, टेक सम पॉइंट्स फ्रॉम लिवरपूल. आई एम नॉट सेइंग कि वी आर कमिंग इन द फेवरेट्स, 100% वी आर नॉट, but maybe that is where we perform the best, when we're the underdog, right? तो थोड़ा सा हमें भी वो एक chip on the shoulder होना चाहिए, carefree होना चाहिए हमारे एटीट्यूड में भी, कि ठीक है, whatever अगले जो भी हैं, हम भी घर से खेलने आए हैं. hopefully we can go and put a good show on today for the fans. अच्छा, यहाँ पर ना देखो 12-13 मिनट बाकी है भाई. मिकाइल रिसेंट स्ट्रीम में आप नहीं थे. मिकाइल वो इट वाज अ वीकडे, मैंने मैसेज किया था मिकाइल को कि भाई ज्वाइन करने के लिए, बट ऑब्वियसली मिकाइल जॉइंस व्हेनेवर ही कैन. बिग अप्स टू हिम. एंड आई वुड लव टू नो दिस गाइस. चैट में ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन लिवरपूल चेल्सी, एक तो सबसे पहले ये बोलिए भाई चैट में जो भी लोग उस लाइव स्ट्रीम में नहीं थे एंड हु नॉट सीन अ वीडियो, लिवरपूल चेल्सी फॉर यू व्हिच हैज बीन द one moment that you can never forget, मतलब one good and one bad. चलो ऐसे बोलता हूँ. Mikhail, there have been lot of moments Liverpool Chelsea के over the years, right? मतलब
I don't even need to say. मतलब I can quickly tell you a lot of moments. It is, लेकिन for you एक moment होता है ना where you can never forget that moment, and in a good and bad way. Which is that? And chat आप लोग भी बोलिए. मेरे लिए तो the slip is the recent times में the slip is probably the most enjoyable moment that I hold on to. No matter what Liverpool wins, we will always have the slip to hold on to. Chelsea, made the This was difference. the game. Made the difference, and that's oh boy, Jose, love it. Wise man. Yeah. Vibes. Let's go, Bhaiya. We have to win today to stamp the mark on the season. I think it's for both the clubs. Absolutely. और यहीं पर मुझे लग रहा है that I hope ये stalemate नहीं हो जाए और थोड़ा लड़ाई झगड़ा का माहौल कम हो जाए, which very really. The underrated part of this match and this moment was अच्छा ये biting हाँ ये भी definitely. Which I think, to be fair, na, as much as the goated skill player that Suarez was, I don't think आज की जनता kind of give him that. Chelsea fans तो भाई बिंदास देते हैं. Suarez basically for me was an illegal footballer. People might clip me here, but I genuinely believe it. यार बात ये है कि Chelsea were so good कि Suarez के level के players were reduced to these kind of tactics. That is it, bro. This is how good Chelsea were. तो वो जो मर्जी कर ले जिंदगी में हमारे खिलाफ आके they would resort to these kind of tactics. So it is what it is. और आपको पता है कि वो एजेंडा भी है प्रीमियर लीग में. लिवरपूल वो ईपीएल की जगह उसको एलपीएल होना चाहिए. वो लिवरपूल प्रीमियर लीग है. Mikhail in form, bro. Mikhail in form. Again, guys, trust me, if you've been there, you know exactly what I mean. लेकिन पता नहीं यार पिछले जन्म में क्या चेल्सी ने किया इन लोगों के साथ के ये हाथ धो के हमारे पीछे पड़े हुए हैं. लेकिन चलो ठीक है, इट इज व्हाट इट इज. वो बात वही है, केयर फ्री है. हम भी कहते हैं ठीक है कर लो जो करना है. हम फिर भी we're gonna come, we're gonna do what we do. So but the underrated moment of that match was not, I think, as much as the slip was critical. That finish from Demba Ba is so underrated because that was we were talking about being wasteful. That was half a chance. It wasn't even half a chance. It was a quarter of even when you see the replay, you have to see it multiple times. How did he get on the ball so fast? So Jackson has that ability to surprise the defender because he closes the ball down so fast. मुझे वो थोड़ा सा वो similarity नजर आया between how Demba Ba created that moment of panic that led to that slip, and then his work was not done. He had to still beat Gerrard to the ball. Then he had to close down the distance and take a shot and take a shot at the right moment and neutralize the goalie while taking the shot. तो वो इतनी सारे pieces हैं, but it happened so fast when you're clinical. आपने जिस तरह बात की, so वो it's underrated moment कि that could very easily have been a miss as well, right? But he had the coolness of a striker to put it in the back of the net, and Nkunku brings that. 100% I agree with you. But उसका जो पहला part है to actually close down the player, and this moment of panic that he causes by closing down, कि suddenly that moment of doubt in Gerrard's mind, कि oh, is he going to beat me to the ball, and that creates that moment of panic. So this I think was Demba Ba, I think इसका ये cult hero moment is underrated. I think we should appreciate what he did, and I think the rest of our strikers should also learn from that moment. That's how you take advantage of those opportunities. Don't let it. हमारे आजकल के चेल्सी में इस टाइप के opportunities मैच में 4-4 दफा होते हैं, and we don't score a single goal. So this is the challenge for us. We need to consider these kind of chances as gold. इसको छोड़ना नहीं है. अब हमें chance मिला है, we're through on to the goalie and the goal. We have to put the ball in the back of the net. There is no के बाद में second chance मिल जाएगा, third chance मिल जाएगा. अगर आपने देखा हो तो the difference between, let's say, João Felix's form right now and Nkunku's form या Palmer's form is कि when he gets the chance, these guys put the ball in the back of the net, whereas वो कभी off target हो गया, कभी गोली को दे दिया सीधा. वो चल रहा है अभी तक some parts of our team में. So let's hope we are clinical. We are here for supporting our team. मैं negative नहीं जा रहा. I'm just saying कि one should learn from the positives and look to replicate them. बिल्कुल भाई. लेकिन आज भी चेल्सी का नारा करेंगे भाई. जस्ट अबाउट 7 to 8 minutes लेफ्ट.
एक और हमने पिक किया था भाई रिसेंट वीडियो में, एंड दैट वाज एक मैं डिस्कशन तो नहीं करूंगा, बट एवरीवन हु बेसिकली मिस दैट कैन बेसिकली गिव द 2 सेंट्स. कंबाइंड 11 करंट में तो भाई वी हैव टू बी फेयर दैट लिवरपूल के बेसिकली 7-8 प्लेयर्स घुसे थे, लेकिन ये ऑल टाइम का है. मिकाइल, आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू सी दिस, but any changes that you would make? We had Liverpool के only combined 11 इस सेंचुरी के वर्जिल वैन डाइक, जेरार्ड, मो साला, आई बिलीव सो. तीन ही आए थे भाई लिवरपूल के, आई थिंक आउट ऑफ 11. इज इट फेयर और इज इट बायस्ड? गाइस इन द चैट बोलिए. Interesting है for sure. Like as a Chelsea supporter, I like the lineup. I think Czech belongs there. लिवरपूल का क्या नाम था उसका? रेओला, आई थिंक एलिस, वो पेपे रेना. हाँ, तो पेपे रेना Czech were kind of peak at the same time, more or less. लेकिन I think for us, especially wearing the blue, Czech without any question. I think eventually, लेकिन I think as much as Czech is a goat, you never know. अभी it's still early days. लेकिन Alisson and Trent, two of the people might have something to say eventually in this team. लेकिन अभी के लिए I think Czech and Ivanovic probably definitely get in my opinion. So Trent is on the ball. He's a better player than Ivanovic. Ivanovic as a defender is much better. Different league of defending. But I think this is good. What I'm wondering is कि Hazard के अलावा और वहाँ पे कौन होगा from Liverpool? Who would Liverpool say we should put there? So it would come down to Suarez. हाँ, मतलब Suarez could play on the wings as well, or you could go like a 2 striker formation, like people in the chat. So Josh McEachran बोल रहे Robbie Fowler. देखो भाई, Robbie Fowler got a lot of goals and he was very good. लेकिन on the day भाई, obviously Drogba. Come on, मतलब we're not going to be picking Fowler over Drogba, are you? As much as Fowler भी बहुत अच्छा था, but I like this, and maybe Trent would be the only point of contention, but otherwise it's 50-50 split, I think, and I think both sets of fans would be fine with having quote unquote almost equal representation. So meanwhile Reece James बोल रहा है भाई Ankit और Michael, I am back bro, don't worry. And the other thing is, I would say कि इसमें आपने मैनेजर नहीं चूज किया कि combined 11 का मैनेजर कौन होगा. हाँ भाई, I think ये तो I don't think there's a conversation. As much as Klopp is really good, and I thought he was unlucky that he was in this era, but Jose was also in a very difficult era भाई. It has to be Jose, come on. I think that is the criticism in the if you look back over the arc of both the careers, कि Jose dominated in an era where top 4 was playing at a different level. Yeah. जिस तरह आजकल आर्सेनल खेल रही है, Arsenal used to play like this back then. Liverpool used to play like this back then. Man United used to play like this back then, and still Chelsea dominated the league in those days. So even though Rafa won the Champions League in 2005, Chelsea were, hands down the most dominant side in the Premier League. We kind of knew how to get it done. तो मेरे हिसाब से क्लॉप का एरा जो है उसमें yes you can say कि भाई he faced one of the goats of the managers of all time, Pep Guardiola, throughout his years here. Lekin we had Sir Alex Ferguson to face, we had Rafa Benitez to face, we had Wenger to face, and there was no it was not an easy we basically upset the hierarchy in the Premier League in those years. We were nowhere. Now, if you look back, we were the favorites in that era, right? But in that era, we were not favorites. We had to go fight for everything, and we made ourselves into the favorites. So, boring Chelsea जो शुरू हुआ था, that was like stamping our dominance. लो जी players आ गए pitch पे. I think we are taking pictures right now. Photo moment चल रहा है. Reece James. Big game, guys, for Reece James. I think कहीं ना कहीं Reece James, Malo goes in a different role. Lavia, remember Lavia is someone who is भाई Lavia, Caicedo और Enzo तीनों को शुरू करना भी एक option था, which we didn't get time to discuss enough. But I think LFC midfield against LFC would have been a good one, considering that they wanted all the three at one point in time. But I don't think हम यहाँ पर है to prove anyone wrong in the transfer market. We are here to prove that we are getting there. Slowly but steadily, correct?
So I think because to Enzo Maresca for doing that and not being following social media, क्योंकि हाँ मैन सिटी के साथ में I remember we went 4-3 first game of the season, लेकिन अगर वो would have been a great blueprint जहाँ हम victory ले लेते, I think maybe he would have played a similar team in a big game again. लेकिन क्योंकि we did not end up with the victory, I thought he's gone this way. But let's see 2-2. So Sir Josh McKagan बोल रहे, सचिन बोल रहे 3-2 to Chelsea. Wow. मेरा it's between 2-all and 2-1 to Chelsea. I believe so. I will try and stick my neck out that हमारी bench stronger है उनसे, तो we will still get a winner from the bench. Mikhail, how do you see the game going? And are you joining the Watchalong, by the way? Yeah, I'll drop off and I'll join in maybe at halftime if you don't mind. Perfect. And then post match hopefully as well. So, but I think it's going to be a tough game. I think we need to start. And keep them out of our danger areas. And if I agree with you, I'm expecting some input off the bench today. I think if we can stick it out till that more point and stay in the game, even if Liverpool scores, I think we have enough to score as well. So I'm expecting I think mere hisab se it's a 2-2 draw on paper. But if we can nick it 3-2 somehow, I'm here for it. I'll love it. Bilkul bhai, again chat OP guys, again do not forget to hit that like button. Yes GK, I did see your message, big up to you as everyone else. We let Mikhail go for now, lekin ho jayega nara bhai, Chelsea. Come on you Blues. Chelsea. Come on you Blues, come on, get big it, up man. big up So Ankit. Mikhail will be joining in halftime guys. Abhi ke liye we are here no matter what. Oh when the Blues go streaming in, oh when the Blues go streaming in, I wanna be in that number. Oh, when the Blues go streaming in, carefree, wherever we may be. We are the famous CFC. We are the famous CFC. We are the famous CFC. दिखा दो भाई आज. Today we have to make a statement. Come on. बदला का भाव रखो भाई. It is important, but in a controlled manner. We have to respect the opposition. It is Anfield. Sab log who are just joining have not liked the stream, let me know why. Do not forget to hit that like and share the stream ho sake to. We are doing the entire watch along as always. You know what's the drill. Big up to each and everyone joining. मैंने share किया in the community post जहां पर आप like कर सकते हैं, as well as the tweet where you can retweet. लेकिन atmosphere is good. Anfield will make sure it is even better. लेकिन अपने away fans also known. Definitely भाई. Chelsea till I die. I'm Chelsea till I die. I know I am. I'm sure I am. I'm Chelsea till I die. By ye wala game na, it gives me a cup kind of a sense. I don't know if you guys agree, but it gives me a cup kind of sense. Guys, we are aiming 125 likes for the first half. Let's get in, guys, or let's share it. More importantly, you guys can share in your WhatsApp stories as well as you can retweet. Like I said, लेकिन साथ में देखते और मजा आएगा. Simple सी fact है. लेकिन anyone here who has not given the predictions or 2 cents about the lineups, screen पर देख रहे हो आप लोग lineup. Hopefully you are here with me no matter what, as we are there as well. भाई again brilliant atmosphere. हो सकता है it could be a Shania big up again commiseration. मैंने देखा था आपका message before the time. No problem, big call लिया है मरिस्का ने. In fact दोनों managers ने लिया big call. Remember, Luis Diaz arguably has been one of the best players even for Liverpool. McAllister, he is a good player, especially knowing how a certain Argentine and a certain Ecuadorian plays उसको पता है, तो वो भी big call है. Luis Diaz, McAllister not starting for Liverpool. For us, Enzo Fernandez not starting, especially मैं बोलना चाहूंगा is a very big call. लेकिन they are there on the bench if need be, all the three. हो जा भाई. Chelsea making the kickoff, guys. सब लोग get in. चलो, as they take the knee. भाई, I'm watching on Hotstar. सब लोग चलो भाई, शुरू हो गया. This is it, guys. We have to prove it. The big game starts. Of course, it's just a Premier League game after all. लेकिन it could be a statement. Chelsea losing the ball initially. Midfield में हमने foul दिया है, उनको दो.
Big up Mikhail and the chat. Guys, एक सेकंड दीजिएगा मुझे. मेरा चश्मा भूल गया भाई, मुझे दिखना कम नहीं हो जाए. एक सेकंड, मैं चश्मा लाता हूँ. गाइज एक सेकंड, बिग अप्स हो जाए. चल से कम ऑन चल से. Oh, when the Blues go streaming in. Oh, when the Blues go streaming in. I wanna be in that number. Oh, when the Blues go streaming in. Reece James playing right center back. Almost. मैं देख रहा हूँ already. एक सेकंड आ रहा हूँ guys. Just coming. चलो. Early Caicedo foul. आ गया. ये रहा. रीस जेम्स राइट साइड खेल रहा है, मालो गुस्तो लेफ्ट साइड खेल रहा है, एज हमने एंटिसिपेट किया था. वेरी मच सो. जब हम पोजीशन रख रहे हैं, रीस जेम्स इज ऑलमोस्ट प्लेइंग लाइक अ राइट सेंटर बैक विद मालो गुस्तो इन्वर्टिंग, एंड व्हेन इट इज द अदर वे अराउंड, आई थिंक ही विल प्रोबब्ली बी इन्वर्टिंग बैक. टोसिन, अरे भाई टोसिन, इतना भी काम मत हो कि बॉल दे दे भाई. Tosin has done a Badeshile moment almost, लेकिन luckily they have played back. बिल्कुल सर जोश मैककरन, बिल्कुल सुपांडी के लिए important day as well everyone. Palmer again as anticipated, Palmer is playing really high. आप देख सकते हो. Palmer, Madueke, Sancho and Jackson will be playing, are there for the counter. यहाँ पर we are playing option back. लाविया, what a turn bro, चुम्बेश्वरी टर्न बाय लाविया. रोमियो लाविया अपना क्लास दिखाते हुए अर्ली ऑन, बट पामर being pressed or giving it back to the defense. लीवाई कॉलवेल बहुत ही काम खेल रही है चेल्सी, आई मस्ट से. नील इन द हाउस. नील, व्हाट्स अप, बिग अप्स. रीस जेम्स इज प्लेइंग फॉर द फर्स्ट टाइम एट मरेस्का, राइट? नो, ही हैज प्लेड, लेकिन स्टार्ट प्रीमियर लीग गेम फर्स्ट टाइम कर रहा है क्या अगेन? लेकिन यहां पर मडुवेके और रीस जेम्स के बीच में जुगलबंदी कितनी हुई है. रीस जेम्स का क्रॉस है अर्ली, वेल डिफेंडेड यहां बाय कोनाटे, आई बिलीव सो. नाइस प्रेसिंग मडुवेके, नाइस मडुवेके. ओपी भाई, नोनी ओपी. बॉल मिला अपने को थ्रो इन के लिए. Again, guys, we will be taking the relevant comments as much as possible, as much as the gameplay is involved. We try and give commentary each and every one. Do not forget to be here no matter what. लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्लो नहीं खेल रही चेल्सी, बहुत ज्यादा वेट एंड वॉच नहीं खेल रही हम लोग. गुस्तो वाज एक्सपेक्टेड टू इन्वर्ट वेरी मच सो मेरे भाई. दे विल बी इन रोटेटिंग रादर. भाई पॉजिटिविटी की पिल भाई, मेरे भाई गौरव, लव यू. लेकिन यहां पर मिस्टेक आया है. पामर ट्रैकिंग बैक. लिवरपूल हैंडबॉल शॉट घंटा. आई थिंक बॉल हिट हैंड, सच में बोलूं तो. लेकिन कॉलवेल के अगेंस्ट हैंडबॉल का शॉट है. देखते, रिप्ले देखते तो पता लगेगा, लेकिन मुझे लगा द बॉल हिट हैंड मोर और लेस. आई डोंट थिंक इट वाज अननेचुरल और एनीथिंग लाइक दैट. भाई काइसेडो को लग गई यार. ओ नो मैन, इज इट ऑफ द बॉल? काइसेडो इंजरी मैन, शिट मैन. ऑलरेडी साउथ अमेरिकन कमिंग बैक, ट्रैवलिंग आफ्टर इंटरनेशनल ब्रेक डिफिकल्ट होता है, हमें पता है. हाँ मतलब ठीक है, मतलब इट वाज अवे फ्रॉम द बॉडी था, लेकिन ऐसा नहीं कि वांटेड टू ब्लॉक इट. एनीवे इट वाज आउटसाइड द बॉक्स, तो इट्स नॉट अबाउट दैट. Guys, again, let's focus on the messages and the comments which is related to the match. I am taking every comment anyway, Shana. Big ups. Liverpool trying to do same as they did to us. बोल रहे देवेश, मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन अपने. इनफैक्ट जीके बोल रहे थोड़ा कनेक्शन और ट्रांजिशन फ्रॉम डिफेंस टू अटैक थोड़ा स्मूथ नहीं रहेगा चेल्सी का. आई नो कोल पामर विल लिंक, बट आई थिंक कॉलविल का पासिंग रेंज इज इंपॉर्टेंट. रीस जेम्स का पासिंग रेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट कुची के, एंड दैट्स अ फैक्ट. काइसेडो इज फाइन गाइस, आई बिलीव इज फाइन. रॉबर्ट सैंचेज का पोजीशन देखो, इज प्लेइंग एज अ सेंटर हाफ. वेगा बेटर इन्वर्ट होता, लेकिन उसके पास पेस नहीं है ना कंपेयर टू गुस्तो, मे बी दैट इज व्हाई.
यहाँ पर हमने खेला 1-2 इन मिडफील्ड एंड वी हैव लॉस्ट द बॉल. काइसेडो, रीस जेम्स विनिंग द बॉल. रीस जेम्स ओपी हो जा भाई. रीस जेम्स ओपी मैन. भाई our captain is back man. I like it man. रीस जेम्स भाई, the what a beast is. Awesome. लेफ्ट विंग पर सैंचो पुटिंग इन और इन्वर्टिंग गुस्तो जो वापस से देगा, आई बिलीव सो, टू मिडफील्ड. लाविया, नाइस टेक बाय हिम, एब्सोल्युटली. कोल पामर, आइस इन द वेन्स गाइस, आइस इन द वेन्स, कम ऑन. बहुत ही टैक्टिकल चेस मैच हो रहा है अभी तक तो. वेरी गुड स्ट्रक्चर बाय लिवरपूल, आई मस्ट से. सैंचो टेकिंग ऑन टू पीपल, नहीं, कैन नॉट टेक टू मी पीपल गाइस. ओ, कमिंग टुगेदर, रेड कार्ड नहीं दे दे साला भाई. इज इट सिमिलर टू यस्टरडे सलीबा वाला मोमेंट? आई थॉट इट वाज कमिंग टुगेदर इस बार, बट आई थिंक वीआर विल कम इनटू इट. बोर्नमथ आर्सेनल का सिमिलर मोमेंट था, लेकिन यहां पर लकीली कॉलविल वाज बगल में एकदम जस्ट पीछे था, तो इस बार शायद रेड कार्ड नहीं मिले. कॉलविल वाज देयर. उसमें आई थिंक बोथ द फुल बैक्स वर वेरी फार, दैट इज व्हाई इट वाज अ रेड कार्ड फॉर सलीबा, क्लियर. लेकिन टोसिन इज अ लकी मैन, आई मस्ट से. कुड हैव बीन अ रेड, आई एग्री. अगर ये इनिशियली रेड दिया जाता मे बी दे मे नॉट हैव चेंज्ड. लेकिन बहुत ही गंदा मोमेंट था भाई. Diego Jota hopefully injured. We don't want anyone injured though. Must say that. Come on, man. Chelsea. Come on, Chelsea. Almost a red. Fair enough, Fiery. Absolutely. Honestly, बहुत ही clumsy था by Tosin, and it was kind of almost careless. और लकीली कॉलविल था बगल में, नहीं तो रेड हो सकता था डेफिनेटली. येलो मिला, बिल्कुल येलो मिला है. विवेक इन द हाउस. विवेक, व्हाट्सअप मेरे भाई, व्हाट्सअप. बिग अप टू बीइंग सारंगी गाइस, शाउट आउट है. येलो कार्ड दिया. सलीबा को दिया रेड, नहीं उसको भी येलो दिया था, लेकिन उसको चेंज किया गया था रेड, जैसे हमने वीडियो में भी समझाने की कोशिश की है विद अ ग्राफिक, दैट द टू पीपल वर एक्चुअली लिटिल टू फार अपार्ट फॉर हिम टू बी नॉट गिवन रेड. तो लेकिन टोसिन इज अ लकी मैन, ये भी मैं बोलना चाहूंगा. ऐसा नहीं कि सलीबा का शोली रेड कार्ड था, वहां पर आई डोंट थिंक एनीवन कैन आर्ग्यू रियली. लेकिन हाँ, ये वाला ही इज अ लकी मैन. लेकिन वही ना, आप इधर वेज देख सकते हो, आप येलो रेड दोनों देख सकते हो. अगर इनिशियली रेड दिया जाता तो मैं ये भी बोलता हूँ शायद चेंज नहीं किया जाता, ये भी बोलता हूँ, आई हैव टू एडमिट दैट. बट क्लियरली इट इज द राइट डिसीजन एट द एंड ऑफ द डे, नॉट बाय टोसिन, बाय द रेफरी. जोटा को ब्लीडिंग हो रही है भाई. कॉलविल एग्जैक्टली ही. बट ऑनेस्टली ना, अगर इफ यू आर अ चेल्सी फैन ना, टच योर हार्ट एंड टेल मी, एंड यहाँ पर आई हैव टू बी ऑनेस्ट, Colville wouldn't have the pace to go back and get the ball from Jota because he's Colville. I know what Colville is and he's superb, awesome, next generation player हो सकता है, लेकिन पेस उसका प्राइमरी एस्पेक्ट नहीं है. तो मुझे लगता है Colville was still behind technically, but by the letter of law it is a yellow. I agree with Vivek. But he's a lucky man at the same time. ऐसा नहीं बोलूंगा एकदम ही क्लियर था, but we had to be careful bro. Reece James OP bro, Reece James OP भाई. अपना कप्तान टेक टचवुड अभी तक अच्छा कर रहा है. He's had a good start guys. बिल्कुल कार्तिक, हमने वीडियो भी डाला है. Did you see our video? Big up to you Karthik. We reviewed that and we gave our opinion, but nice to see you always मेरे भाई. इतना हाईलाइन पे तो गोल खा जाएंगे आराम से, निखिल बोल रहे हैं, but that's basically what this kind of fixture gives you. भाई सेंटर बैक गिर गया अपना, एक सेकंड. साला नाइस ब्लॉक. पामर हेवी टच ब्रो, पामर हेवी टच. पामर कम ऑन, थोड़ा सा बेटर कर. यू विल नॉट गेट सो मच ऑफ द बॉल, यू हैव टू बी केयरफुल और नॉट लूजिंग पोजीशन इजीली. पामर मेरे भाई, लिवरपूल आर पाउंसिंग और करेंगे. वी स्पोक अबाउट द प्रेसिंग ऑफ लिवरपूल, एब्सोल्युटली टाइगर बीस्ट. एज मच एज ही इज वेरी काम एंजो और अदर आर्ने स्लॉट बॉल, the pressing of Liverpool is definitely going to be there at Anfield. We know that as a fact. That has been instilled in the Liverpool players from 7-8 years. You know that. इस सिचुएशन में टोसिन और क्या करता है भाई? Write something sensible. हाँ, it was just that he was kind of found out.
प्रेशर करता भाई, टेकिंग प्लेयर आउट इज रेड. नहीं, टेकिंग प्लेयर आउट इज नॉट ऑलवेज रेड. You can take the player out for a tactical foul and which is a yellow card. It's okay, we all learn every day मेरे भाई, टेंशन नहीं लेने का enthusiast साजन. लेकिन we can agree to disagree. It's a fan channel for all to see always. It is a lucky moment for Tosin, लेकिन not that it was a red card, क्योंकि वो बहुत ही careless था और rather he was found out. Let's get back to this game, guys. Keller also playing a sweeper keeper, looks like it. भाई high ball from Keller, interestingly. Keller सोच रहा भाई सैंचेज बाहर है अपने डी के, डायरेक्ट गोल मार देते. गोल किक फॉर चेल्सी. Chelsea, 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 Chelsea. Guys in the chat, behave मेरे भाइयों, behave guys. अगर कोई under the belt दे रहा है etc, then mods have to just give them a warning a couple of times. नहीं तो you know what to do. लेकिन अभी के लिए let's be lenient and enjoy the match, guys. Come on. अभी तो पिक्चर अभी बहुत बाकी, शुरू है अभी तो. Come on guys. अगर आप मानेंगे नहीं, आप बच्चों जैसे लड़ेंगे, तो आई एम द मेजर मॉड हियर, जस्ट सो यू नो. लेट्स एंजॉय द मैच एंड लेट मी एंजॉय द मैच एवरीवन. कम ऑन. बहुत ही स्लो पासिंग नहीं हो रही चेल्सी की फ्रॉम द बैक. मतलब आई नो वी वांट टू सी स्पेसेस जो लिवरपूल नहीं दे रही. सैंचेज का हाई बॉल गाइस, हाई किक जस्ट लाइक केलर, और लॉन्ग बॉल है. वाओ, सैंचो इज गॉट देयर गाइस. सैंचो पुटिंग इन गुस्तो छक्का मार दिया. अब यहीं पर the difference is if Renato Vega would have hit that shot, that would have been a better shot. We know as a matter of fact because he's left-footed. Thanks for Kalulu. It pains me till date why we let go Kalulu as an AC Milan fan as well. No problem, enthusiast Sajan. Again, Gusto का ये रोल हमने देखा था in pre-season. While he is good, but अटैकिंग वाइज में इज बेटर ऑफ ऑन द राइट हैंड साइड से इन्वर्ट करते हुए. भाई यहां पर बहुत प्रेस कर रही है चेल्सी, लिवरपूल चेल्सी को. भाई एक सेकंड, भाई क्या कर रहा है मेरे भाई? कॉलविल कर क्या रहा है तू? ट्राई क्या कर रहा है? नहीं यार, बॉल दे दिया, लेकिन नाइसली डन बाय गुमालो गुस्तो. जैक्सन ट्राइज टू कीप द बॉल अनसक्सेसफुली, जस्ट अबाउट गेट्स अ निक एंड वी गेट अ थ्रो इन. Chelsea. Come on, Chelsea. Oh, and the Blues go streaming in. I wanna be in that number. Bye, away fans, make some noise. Anfield crowd is singing. Nice. Keeping the ball, Chelsea nicely. Although बहुत ही ज़्यादा careful रह रहे अपन अभी right now. But it's good that we are actually trying to control the game again. जो लग रहा है हम प्रेस बीट नहीं कर पा रहे लिवरपूल का. पामर ऑन द राइट हैंड साइड लुकिंग फॉर रीस जेम्स, जो देता है वापस से सेंट्रल एरियाज में टू लीवाई कॉलवेल. क्या करेगा भाई? लीवाई कॉलवेल आराम से खेलेगा वापस से साइड पास. मडवेके गेट्स इट. रिमेंबर मडवेके का रोल हमने समझाया था, बहुत ही क्रूशियल है. 2:1 हो रहा है. मडवेके टेकिंग हिज मैन ऑन, बीटिंग रॉबर्टसन नाइसली. भाई यहां पर आया है क्रॉस, नो काइसेडो के पास था, लेकिन नो वन वाज देयर इन द बॉक्स. जस्ट अबाउट वहीं पर एंजो फर्नांडिस मे बी कुड हैव डन लिटिल बिट मोर, जस्ट सेइंग. बट हमें चाहिए गोल स्कोरर भाई इन द मिडफील्ड एरियाज भी. लेकिन लाविया नॉट डन बैडली एट ऑल. हो सकता था हम किए जाए काउंटर, बट वी वर नॉट एक्चुअली एट फॉल्ट. तो ठीक है, फेयर इनफ. काइसेडो कुड हैव टेकन अ शॉट, फेयर पॉइंट. वही मैं बोल रहा हूं ना, अगर एक नेचुरल गोल स्कोरर होता, just someone like a Frank Lampard, you know what would have happened. or even a Michael Essien. अभी वो चीज सीखना है अपने मिडफील्डर्स को. Madueke did very well, absolutely very well done by Madueke Mikhail. Nicely done by Caicedo. Nicholas Jackson trying to keep the ball. Really no coming together almost. Liverpool very well done by the Reds. Keller long kick by Levi Colwill. Gusto as a partnership on the left hand side is actually not doing badly. Last few minutes बोलना चाहूंगा, लेकिन अगेन ये हमें एक्सपेक्ट ही करना था. पामर को बहुत प्रेस किया जाना है. वहीं पर मडवेके बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है टू बी द रिलीज प्लेयर. नाइस पास बाय लाविया गुस्तो इनवर्ट जो किया है यहाँ पर. सैंचो ऑन द लेफ्ट विंग टेकिंग ऑन 2 men. आप देख सकते हो 2:1 हो रहा है. गुस्तो बीइंग प्रेस्ड, कीपिंग द बॉल नाइसली. रन आया गुस्तो, विल ही टेक इट? यस, nicely done by Gusto, bro. It's a corner, well done by Konate as well. Chelsea. Come on भाई, corner है. रीस जेम्स लेगा क्या?
रीस जेम्स लेगा। मालो गुस्तो वेरी वेल डन भाई, वेरी वेल डन। मालो गुस्तो ओपी हो जाए। आई थॉट ये मूवमेंट में मालो गुस्तो का पोजिशनल अवेयरनेस वाज ऑसम, ऑसम। मालो गुस्तो भाई अपना अटैकिंग एस्पिलिक्वेटा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम 2015। एक सेकंड, कॉर्नर नहीं था, घंटा मैन, इट वाज अ गोल किक इट सीम्स। मैं सोचा कॉर्नर है भाई, नो कॉर्नर। सर जॉश मैककेलन बोल रहे, चलो ठीक है। ओह चलो, तो प्रेस थोड़ा सा कम दे देते। ले लेते वापस से, लेकिन आई थॉट इट वाज गुड मूवमेंट। लेकिन शुड सैंचो ट्राई या मडवे के? आप इनसाइड कट कर रहे हो, बाहर भी जाओ ना आप ज्यादा। मैक्समिलियन मार्टिन और बोल रहे टू बी ऑनेस्ट अंकित भाई, चेल्सी का डिफेंस मुझे इस सीजन बहुत अच्छा लगा। अभी गैप्स है मेरे भाई एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। पोजिशनल टैक्टिकली प्लान अच्छा है, लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे अभी तक टू द टी, क्योंकि अभी तक सीख रहे हाउ टू इन्वर्ट यू नो व्हेन यू आर अटैकिंग एंड व्हेन नॉट अदरवाइज। लाविया भाई क्या सुंदर प्लेयर है भाई, क्या बढ़िया खेलता है लाविया, का टर्न मारता है भाई। सैंचो सैंचो 1-on-1 एंड ट्रेंट गुड डिफेंडिंग ब्रो, ट्रेंट गुड डिफेंडिंग। इस बार कॉर्नर है। क्या क्या प्यारा प्लेयर है भाई लाविया, आई स्वेयर। अगेन वी नीड टू डू मोर इन टर्म्स ऑफ जस्ट बीइंग डायरेक्ट। वो एक चीज अभी भी आई थिंक थोड़ा टेंटेटिव है, लेकिन आई लाइक द फैक्ट कि हम मार रहे वो रन्स, टर्न्स। James is also looking, you know, kind of fit technically. Ooh, Jackson was there almost by throw in था over the top of two defenders, लेकिन Keller well read by him, well read. भाई चेस मैच हो रहा है प्रॉपर, क्या बोलती जनता? फर्स्ट 7-8 मिनट लिवरपूल, नेक्स्ट 7-8 मिनट चेल्सी। ठीक है, मैं तो बोलूंगा कि वी आर ग्रोइंग टू द गेम 100%। लेकिन यहां पर नाइस लाविया ने थोड़ा पैर डाला, काइसेडो को मिला, काइसेडो के थ्रू पामर, मडवे के ऑन द राइट विंग, मडवे के नीड सम सपोर्ट, कम ऑन जेम्स या पामर साथ में आ। जेम्स आया है थोड़ा बहुत, जेम्स को मिला है, जेम्स देता है काइसेडो को वापस, काइसेडो गिव्स इट टू लीवाई कॉलवेल। बहुत हाई लाइन है भाई चेल्सी का, बहुत हाई लाइन है। एक काउंटर आता है लिवरपूल का, डर लग रहा है मेरे मुझे। आप चेक करो, कॉलवेल इज इन आवर हाफ, नहीं लिवरपूल के हाफ में। वाओ, व्हाट्स हैपनिंग ब्रो? बहुत हाई लाइन है। दिस इज अ प्रॉपर चेस मैच, दिस इज अ टैक्टिकल गेम टू द नेक्स्ट लेवल। और आर्ने स्लॉट भी पैनिक नहीं कर रहा। ओवर द टॉप पास हमने कोशिश किया, वी हैव लॉस्ट द बॉल एंड दैट इज वेयर अ काउंटर कुड कम। पामर नाइस प्रेसिंग ऑन कर्टिस जोन्स, आई लाइक दैट जो पामर ने किया, वेरी इंपॉर्टेंट दैट बाय कोल्ड पामर, नहीं तो काउंटर आ सकती थी बाय कर्टिस जोन्स। लाविया ओवर माइनो, आओ एनी डे, कम ऑन माइनो as a goal scorer, as an assist maker, yes, but as a end-to-end midfielder, Lavia, bro, come on. Again, बहुत injury prone है, that's the only issue. और Mino could be the better player in the future, but so can Lavia. यहाँ पर over the top pass strike है लिवरपूल ने, रीस जेम्स है भाई, रीस जेम्स नाइस, लेकिन ओए सैंचेज, हार्ट अटैक एफसी इज बैक, व्हाट वाज दैट? रॉबर्ट सैंचेज भाई, Robert Sanchez testing our patience and heart rate. Gakpo was there मेरे भाई, क्या कर रहा है? गोटी मुंह में आ गई वाला मोमेंट ब्रो, एब्सोल्युटली निखिल, एब्सोल्युटली। लेकिन ओ यस, सर जॉश मैककेलन लाविया के बारे में बोल रहे हो शायद, लेट हिम प्ले वन प्रॉपर सीजन। लाविया जस्ट अबाउट निकिंग द बॉल, नहीं तो हो सकता था वो लोग निक कर लेते मिडफील्ड में। आप देख सकते हो, आप व्हेन इन पोजीशन बैक थ्री हम खेल रहे टेक्निकली प्रॉपर। सैंचो टेकिंग हिज मैन ऑन बट ट्राइंग थ्रू पास, सैंचो को मिला वापस से बॉल, लकीली ऑलमोस्ट, लेकिन सैंचो टेकिंग हिज मैन ऑन अगेन। सैंचो ना सैंचो ज्यादा कर रहा है भाई, ज्यादा कर रहा है। आई थिंक सैंचो नीड सम सपोर्ट, इज इट फेयर टू से सैंचो नीड सम सपोर्ट? वो लाविया प्यारा बंदा भाई, प्यारा, क्या प्लेयर है लाविया, मजा आ जाता है लाविया को देखते हैं भाई। एलएफसी मिडफील्ड खेलती तो और भी मजा आता है लिवरपूल, इफ यू नो। सैंचेज भी मार दे मेरे को। पुदिन मैन, सैंचेज भाई, मतलब सैंचेज ही डज द सिंपल थिंग्स बैड एंड ही डज द डिफिकल्ट थिंग्स गुड, क्या ही बोले। लेकिन यहाँ पर मडवेके के पास सपोर्ट नहीं है तो वापस देगा रीस जेम्स को, आई बिलीव सो। रीस जेम्स पुटिंग इन टोसिन, जो अगेन आई मस्ट से लिटिल लकी बॉय, बट टेक्निकली इट वाज अ येलो कार्ड ओनली।
but he's on a yellow. Remember that. Colwill trying in between the lines, wala through pass. Luckily, has fallen back to him somehow. Fingers crossed, Bhayan, but no one is able to touch James. Again, it's still early days. Come back का Tiger Beast. सैंचेज की फितरत है भाई, फितरत है, क्या करे, सैंचेज की फितरत है. बट आप देखो लिवरपूल आल्सो नॉट काइंड ऑफ प्रेसिंग जब चेल्सी स्लो पासिंग करने की सोच रही है. काइसेडो वेल डन ब्रो, वेरी वेल डन बाय काइसेडो. ओ नो भाई, सैंचो क्या था वो, क्या था. Come on, we should have done better. Check out a highlight, guys. It is like we are the home team and they are the away team. Wow. Caicedo, nicely done by Moses Caicedo. Moses Caicedo. Moses Caicedo. Lavia giving it back to Sancho though. Sancho gives it back again. Levi Colwill gives it to Caicedo. Reece James. बहुत सेंट्रल है अभी, देख सकते हो आप लोग. मडवे के be careful of a counter possible. Reece James cross आएगा. Someone get in the box. Come on, Oren. Yaar, get in, man. I love it. I miss these Reece James crosses like anything, man. Come on, Chelsea. Come on, Chelsea. Come on, Chelsea. Our captain is back, man. Control, Ankit, control. Our captain is back. All the people hating on Reece James, man. What a beauty, man. The guy is him, man. The guy is him. Reece James, for people saying it's finished, man. I know. लेकिन was there a foul? एक सेकेंड. एंजो मेरेस्का क्यों खुश नहीं है? कुछ हुआ है क्या? Did I miss something? सैंचो वाला पेनल्टी था भाई. अरे भाई, सैंचो वाला, the moment where I thought he lost the ball, it was actually a penalty. I have to see that and my bad. यहां पर क्रॉस है वापस से. अरे भाई, केलर इज जस्ट अबाउट गॉट दैट, लेकिन ऑफसाइड था इस बार. आई थिंक ऑफसाइड था. निकोलस जैक्सन, लेकिन सॉफ्ट होता अगर होता तो is what Sir Josh McEachran is saying. It was a coming together, I thought, and I thought he was a little bit weak, Sancho. मुझे ये लगा. रिप्ले मैंने मिस कर दिया एक्चुअली. यहां पर नाइस प्रेसिंग बाय कोल पामर, लेकिन वेरी वेल प्लेइंग आउट ऑफ द बैक बाय लिवरपूल एंड रायन ग्रावेनबर्ग हैज नाउ लिवरपूल प्लेइंग लेफ्ट विंग पर. उन्होंने दिया है कर्टिस जोन्स ड्रिफ्टिंग, जैसे अपना एंजो करता है जनरली जब खेलता है. ट्राइंग अ थ्रू बॉल अनसक्सेसफुली, फॉल्स बैक टू अ रायन ग्रावेनबर्ग. Kushal in the house. Kushal, क्या हाल है भाई? Always good to see you, मेरे भाई. 1-1 as usual. Typical Chelsea was Liverpool. I think नहीं, our bench is stronger than them as much as it's Anfield and they are the form team ज़्यादा. I think there is a winner coming, लेकिन it's too early अभी भी. Trent didn't get the ball and आजकल जैसे पेनल्टी मिल रहा है, it was a penalty for me, पुदिन बोल रहे हैं. वो ये वाला सीन है. अगर पेनल्टी दिया जाता तब VR चेंज नहीं करता वाला सीन लग रहा है. अगर वो पेनल्टी नहीं दिया जाता तब वो चेंज नहीं करेंगे. जैसे आप ऑलमोस्ट बोल सकते टोसिन वाला मोमेंट भी. That was a penalty on Sancho. Kenny Fan TV neutral is also agreeing. So I think, as always, referee. लेकिन यहाँ पर they are attacking. Colwill पकड़ रहा है जोटा को, बोल रहा है नहीं. Referee and Lavia done very well. Meanwhile एक चलाते हैं, referees के लिए चला लेते हैं. I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't... Reece James fouled. भाई Reece James ने सोचा बॉल दे दिया. Reece James fouled. Luckily. Lavia is very good, yes. लेकिन वो ये ना, क्योंकि how many minutes can he last? We have to make a change, remember, in the second half at some point. Ooh, Lavia is there, but भाई एक सेकंड, मडवे के ने बीट किया है रॉबर्टसन को. भाई पामर स्कोर कर यार. पामर हैज नॉट स्कोर्ड. वेल पोजीशन बाय लिवरपूल. बढ़िया क्रॉस है काइसेडो का. वेल क्लियर्ड ऑन द काउंटर बाय लिवरपूल. गुस्तो कीपिंग द बॉल. सो डज पामर. नो, ही लूजेस द बॉल. पामर यार हेवी टच कर रहा है पामर बहुत. व्हाट्स हैपेंड? लेकिन यहाँ पर काउंटर वापस, वो तो टॉप डायगोनल पास आया लिवरपूल का. नो मो साला, आई बिलीव सो. नहीं, पेनल्टी मत दे देना. लीवाई कॉलविल भाई एक सेकेंड. Was he lucky? I don't know. Did he get the ball? Very soft.
Salah गिर गया है at just a touch is what the referee has said, but I thought that was risky by Colwill. Didn't get the ball. I agree with Devesh. He did not get the ball, but was the touch as bad as what Salah made it out to be? Fake news. I think Tosin and Colwill, I have to admit कि considering जो referees generally होते हैं हमारे साथ ना, we generally are getting those decisions against us. हम lucky है that those decisions are not against us. Whether it was the right decision, absolutely it was the right decision. लेकिन जो जनरली ईपीएल का स्टैंडर्ड अगेंस्ट चेल्सी, इफ यू नो वहां पर आई थिंक वी वर लकी भाई. यहां पर कॉलवेल गिवन द बॉल अवे टू लिवरपूल, नहीं यहां पर ओपन अप हो गए भाई अपन. कम ऑन मिडफील्ड वापस आओ. साला शॉट, गोल आएगा. इस बार पेनल्टी देगा घंटा मैन. पेनल्टी इस बार, पेनल्टी. कॉलवेल यार, लीवाई कॉलवेल कंसीड द पेनल्टी मैन. फ्रॉम ये पीछे से था ना, तो ये वाला पेनल्टी है. इज इट ऑफसाइड? से जोश मैककन पूछ रहे. पीछे से करते तो पेनल्टी देगा यार. अगेन टेक्निकली वेरी सॉफ्ट, बट आई थिंक कोई भी फॉरवर्ड होता तो यू वुड हैव सेड. अगेन ये बोल सकते हैं पेनल्टी दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती है. आई एम एक्चुअली सरप्राइज इवन द अर्लियर वन वाजंट गिवन अगेंस्ट चेल्सी, नोइंग व्हाट रेफरीज डू. लेकिन इज इट सॉफ्ट? एब्सोल्युटली सॉफ्ट. वापस से एब्सोल्युटली इट्स अ सॉफ्ट पेनल्टी, नो टू वेज अबाउट इट. लेकिन क्योंकि देयर वाज कांटेक्ट एंड बिकॉज इट वाज फ्रॉम बिहाइंड, कर्टिस जोन्स मेड श्योर वो गिरे. देखो साला वाला बोल सकते हो साइड से था. Kind of Salah was watching what he's doing, and that is why it was deemed to be very soft. ये वाला I think Sakura बोल रहे that's not a penalty. Soft था, definitely soft था. But I'll be lying if I'm saying कि यार दो moments में Colwill probably was at fault. And any forward would have done what Curtis Jones did and Salah did in those two moments. और एक नहीं मिलता opposition को, I would have been too surprised. Sanchez OP हो जाए भाई. Let's do a Bournemouth भाई. रॉबर्ट सैंचेज को येलो कार्ड मिला है क्या कि जैक्सन को मिला है? भाई ये जैक्सन अलग सा है. येलो कार्ड किन किन को मिला भाई? इतने सारे येलो कार्ड चेल्सी के अगेंस्ट क्यों होते रहते हैं भाई? समझ में नहीं आता. जैक्सन को मिला है, आई थिंक ही वाज रिवोल्टिंग. जैक्सन, टोसिन येलो कार्ड्स पर है फॉर चेल्सी. और किसको मिला भाई येलो कार्ड? एक और किसको मिला था? लेकिन अगेन गाइस, सैंचेज, कम ऑन मैन. सैंचेज, prove it that you are the man, bro. Mo Salah ex Chelsea, he scores, guys. It is Liverpool 1 in Anfield, and Bipin Bora rigged. कोई नहीं यार, the match has just begun. कोई नहीं, we'll score man, we'll score. Tension नहीं है, we'll score. Chelsea. Come on, Chelsea. Get in, man. दिखाओ यार. Cannot be playing in second or third gear now. We have to go for it. Soft penalty for sure. लेकिन वही ना, अगर वो previous moment नहीं होता ना, तब शायद नहीं देता. Jabir in the house, what's up? It may not have been a penalty if Colwill wasn't committing fouls every minute. Exactly. Colwill की गलती थी. I cannot sit here and protect Colwill only. Colwill की गलती थी. As much as it was soft, absolutely yes. लेकिन Salah could have got a penalty before also. One can argue क्योंकि technically contact था, वो भी soft होता. But two soft moments within a couple of minutes. एक तो Colwill को देखना चाहिए कि भाई वहां पर Sanchez और Tosin थे. Maybe अच्छा, Jota coming off, guys. Jota is injured. लेकिन कोई नहीं guys. Looks like we are at least playing for a draw as a minimum अभी भी. Lucky goal, like the stream viewers Sashanaya बोल रहे. If team like United can come back, why can't we? We can definitely come back, bhai. Just as soft penalty as Chelsea players. Soft था लेकिन penalty deny नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई. I don't know you heard what I said. So I believe कि Colwill की गलती थी. If the two moments wouldn't have happened back to back, I would have fought for it. लेकिन क्योंकि those two moments came back to back, और हाँ ये आम compensate करने के चक्कर में नहीं होना चाहिए, लेकिन I would have been very surprised अगर penalty नहीं देता second वाला. I am not surprised.
बॉक्स के अंदर ऐसे फाउल्स करेगा तो कभी ना कभी पेनल्टी दे ही जाए बिल्कुल। और निखिल, द डिफरेंस इज साला का साइड से था टैकल, तो साला देख रहा था और इट वाज लाइक ही एक्टेड, लेकिन कर्टिस जोन्स का पीछे से था। लेकिन लिवरपूल आर डेफिनेटली बिल्डिंग बैक इनटू द गेम ब्रो। सैंचेज वेल डन इन दैट मोमेंट। अभी देखो अपना सेंटर बैक इज ऑन येलो कार्ड, अपना सेंटर फॉरवर्ड इज ऑन येलो कार्ड गाइस। आया है डार्विन नूनेस, आर्ने स्लॉट को मिला येलो कार्ड बाय द वे, क्योंकि आर्ने स्लॉट वाजंट हैप्पी। यहां पर बॉल दे दिया हमने वापस से, भाई लकीली लीवाई कॉलवेल ने बचा लिया, कॉर्नर दिया है। इट्स ऑल लिवरपूल गाइस। पहला 10 मिनट लिवरपूल, सेकंड 10 मिनट्स ऑल चेल्सी, थर्ड 10 मिनट्स ऑल लिवरपूल। दैट्स हाउ द गेम हैज बीन। Nice. Again, we have to be smart as well, Sakura. That's the whole point. भाई ये येलोज वाला अलग ही सीन चल रहा है भाई चेल्सी का। मतलब आई वुड लाइक टू नो ऐसा क्या बोल दिया जैक्सन ने कि भाई येलो कार्ड मिल गया, बट कोई नहीं। वो वेल डन बाय टोसिन इंपॉर्टेंट हिटर नियर पोस्ट पर कॉर्नर द्वारा। चलो अलेक्जेंडर आर्नल्ड का इजी कैच बाय सैंचेज लॉन्ग किक। साला कोई नहीं है यार, कम ऑन गाइस, कम ऑन, वी शुड डू बेटर देयर, वी हैव लॉस्ट द बॉल। नो गोल आएगा। हट यार, ऑफसाइड दिया गया है। गैक्पो पुट्स द बॉल इन द बैक ऑफ द नेट, बट वाज इट ऑफसाइड? आई होप इट्स ऑफसाइड। मुझे ऑफसाइड नहीं लगा बाय द नेकेड आई। भाई सैंचेज का बॉल, वी लॉस्ट इट। यस द असिस्ट मेकर वाज ऑफसाइड। गैक्पो ऑफसाइड था। कौन ऑफसाइड था? डार्विन नूनेज। चलो बच गए भाई। गाइस क्या कर रहे हो भाई चेल्सी? ब्रीद इन ब्रीद आउट करो और भाई गेट बैक टू योर शेप। कर क्या रहे हो भाई? लास्ट 12 मिनट में क्या हो रहा है? मतलब वी आर लाइक लूजिंग आवर शिट ब्रो। आई गेट दैट रेफरी से हम खुश नहीं है एक्सेट्रा, आई टोटली गेट दैट, बट दैट वो रोज का है भाई, कुछ नया नहीं है वहां पर। वी स्टार्टेड द गेम वेल, फर्स्ट 20 मिनट्स यू कैन आर्ग्यूबली से फर्स्ट 20 मिनट्स में वी वर द बेटर टीम, लेकिन लास्ट 12 मिनट्स में वी हैव बीन टोटली बीन नलिफाइड बाय लिवरपूल। और कहीं ना कहीं हमारी खुद की गलती है बाय मेकिंग दोज मिस्टेक्स इन द बॉक्स। स्कोर करो यार, करेंगे टेंशन नहीं है। काइसेडो थ्रू बॉल आया है, नाइस रन बाय जैक्सन का फर्स्ट टाइम क्रॉस, इट हिट द फ्रेम गाइस, इट हिट द फ्रेम। दैट वाज अ ब्रिलियंट बॉल। काइसेडो टू जैक्सन, ब्रिलियंट रन बाय जैक्सन एज वेल, और बहुत ही नैरो एंगल। जैक्सन गॉट अ गुड, आई थॉट ही गॉट द गोलकीपर्स हैंड, कॉर्नर होना चाहिए। देखते हैं, फेलिक्स आएगा, सकरा बोल रहे। अगेन गोल किक है गाइस, निकोलस जैक्सन भाई। अगेन वी हैव अ लॉट ऑफ एम्युनिशन भाई बेंच पर, टेंशन नहीं लेने का गाइस। चलसे कम ऑन चलसे, हिट द क्रॉसबार आई बिलीव। फेयर इनफ पुदिन। नाइस प्रेसिंग बाय कोल पामर, लेकिन इस बार गोल किक है वापस से। भाई लिवरपूल बहुत ही टाइम वेस्ट कर रही है। क्या कर रहे हैं भाई ये लोग? मतलब डोंट यू थिंक? हाँ चलो, किक कर दिया फाइनली केलर ने। लॉन्ग किक है, टोसिन गेट्स द हेडर, गुस्तो सेकंड हेडर, लेकिन वहीं पर वी हैव physicality is something that we need to work on bro. I still believe headers etc ना हम enough we win नहीं कर रहे in my opinion. Again it was a, I will not deny कि penalty नहीं थी वाला चीज नहीं बोलूंगा मैं. I think I agree that it was soft, but you cannot be so naive to do that two times in 2 minutes. चलो we tried to get the ball midfield में, but Liverpool keeping it. Liverpool का throw in है guys. Come on. Keller trying to play from the back. Konate press मिल रहा है उसको जैक्सन द्वारा, but nothing doing. पामर वेट कर रहा है, पामर प्रेस कर रहे हैं कोशिश में, केलर हिट्स द बॉल लॉन्ग। अगेन गुस्तो, वन कैन आर्ग्यू दैट ऑफेंसिवली ज्यादा काम किया है देन डिफेंसिवली। आई डोंट नो इफ यू एग्री गाइस।
मतलब साला has had 2-3 free runs. अब वही है, मतलब सेकेंड हाफ में एट सम पॉइंट अगर 1-0 रहता है होपफुली, और 1-1 हो जाता है एज वेल, इफ वी हैव टू गो टू द विन वी हैव टू मेक अ चेंज सम एंड वी हैव टू बी पॉजिटिव ज्यादा सेकेंड हाफ में, जो हम लगे थे फॉर अ गुड 10 to 12 मिनट्स इन बिटवीन, हम लगे थे अच्छा, बट अब उसी समय ना आप बोल सकते हो वी प्रॉब्ली शुड हैव टेकन आवर चांसेस। अगेन अपनी प्रेसिंग अच्छी हो रही है अभी राइट नाउ, बट एक लॉन्ग किक जो आता है ना वहां पर वी आर नॉट एबल टू काइंड ऑफ डोमिनेट, वहां पर लिवरपूल ही डोमिनेट कर रही है। गुस्तो नाइसली डन भाई, इस बार गुस्तो नाइसली डन, गुस्तो वेरी वेल डन। मैं मालो भाई, मालो वेरी वेल डन, पुटिंग इन सैंचो ऑन द लेफ्ट विंग, सैंचो टेक्स ऑन 2 men, कट इन करेगा एज ऑलवेज। ये बाहर जाना, बाहर जाना, बहुत स्पेस है भाई, बाहर जा, अरे यार इज इट अ पेनल्टी? भाई द वे सैंचो को पेनल्टी मोमेंट था, वी हैव टू डिस्कस दैट, रिमेंबर दैट, लेकिन यहां पर थ्रू बॉल आया है, गैक्पो टेकिंग ऑन रीस जेम्स, नहीं गोल आएगा। Soboslai, easy catch for Sanchez. Come on, Chelsea. Come on. Caicedo from Malo Gusto. Nice midfield play by Chelsea, keeping the ball. Right side में मडवेके को मिला है। Liverpool slow the tempo for a bit and then hit suddenly. बिल्कुल well said, enthusiast Sajan. सचिन भाई यहाँ पर देखो मडवे के, यार इतने सारे लोग नैरो क्यों हो जाते हैं? पामर बहुत बुरा खेल रहा है यार, पामर इज नॉट हैविंग अ ग्रेट गेम, आई एम श्योर कॉलविल फाउलिंग डार्विन नूनेज। Come on Chelsea, come on Chelsea, we can do better man, we can do better, can't be losing the balls, let's go man, have some balls and play those balls better. Guys we need a goal man, हाफ टाइम पर, हाफ टाइम के पहले आई थिंक कहीं ना कहीं एक पेनल्टी शॉट था सैंचो के अगेंस्ट, और वी कैन आर्ग्यू दैट वी हैव बीन डूइंग इनफ टू डिजर्व वन गोल, बट वही है, वी हैव टू टेक आवर हाफ चांसेस, हम लूज नहीं कर सकते फाइनल थर्ड में बॉल द वे दैट वी आर लूजिंग, कैन नॉट। पता नहीं आज थोड़ा आइसोलेटेड लग रहा है जैक्सन मुझे। चलो यहाँ पर हमें मिला है बॉल वापस, लकीली मिडफील्ड keeping the ball back to the defense. Tosin gives it to Reece James. Reece James, nice pass, brilliant pass. गुस्तो का बहुत अच्छा पोजीशन लिया है, और यहाँ पर लेफ्ट विंग पर सैंचो को मिला है, सेम चीज मत करना वापस से। सैंचो कॉर्नर जीता, कोई नहीं। Come on Chelsea. Trent is defending well in my opinion. Sancho is not able to beat him. क्या हो रहा है भाई? We are missing a Mudryk if I'm very honest, which is so surprising. लेकिन should we consider getting on Neto in the second half at some point? For sure. Sancho बहुत ज्यादा टचेस नहीं ले रहा, मे बी, बिल्कुल एग्जैक्टली बिपिन, ही कैन डू इट, ये इसको बाहर भी जाना चाहिए, आई डोंट नो व्हाई इज ट्राइंग टू डू अ स्टेप ओवर एंड कम इन ऑल द टाइम, ही कैन गो आउटसाइड एज वेल ना, लेकिन यहाँ कॉर्नर वेरी वेल डिफेंड बाय लिवरपूल, सेट पीसेस में क्या ही बोले यार, कोई नहीं। वापस से पामर का बॉल आया है, क्रॉस, वैन डाइक देयर, नूनेस था सॉरी, जैक्सन, काइसेडो क्या करेगा? काइसेडो, चलो गेट्स अ थ्रो इन एटलीस्ट, वी ओवरटेकिंग इन देयर बॉक्स, मैकाइल बोल रहे हैं। आई थिंक या तो पामर है या तो जैक्सन इन द बॉक्स, आई डोंट नो इज इट टैक्टिंग ऑन पर्पस टू अवॉइड काउंटर्स, लेकिन मुझे लगा था वी विल एट टाइम्स अटैक विद बोथ इन द बॉक्स। Felix is, I don't think is a good option right now. He loses the ball far too often anyway. We got to control that midfield abhi. One can argue that Nkunku in tight spaces is much better than Felix. लेकिन अभी अर्ली डेज है अभी भी। अरे यार Caicedo heavy touch man, very well done by Liverpool. We missed it, और यार थ्रू बॉल आएगा, नो। टोसिन का बहुत इंपॉर्टेंट इंटरसेप्शन गाइस, टोसिन का बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है, वेरी वेल आ सकता है, दैट्स व्हाई आई कैन सी व्हाई वी आर नॉट ओवर अटैकिंग एज वेल। आप देख रहे हो तो हमारा हाई लाइन है, बट एट द सेम टाइम पामर और जैक्सन, वन ऑफ देम इज आस्क्ड टू बी हेल्पिंग द मिडफील्ड।
देखते हैं भाई अगेन थ्रो इन है लिवरपूल हर एक थ्रो इन और हर एक रीस्टार्ट को ज्यादा टाइम नहीं ले रही दैट्स सो अनलाइक लिवरपूल बट इट्स ओके आई गेट इट हम भी करते अगर हमें होता तो बट ठीक है एनफील्ड पर है यार चलो भाई प्रेसिंग हैज बीन ऑफ नो यूज इन दिस मोमेंट बट मडवेके हैज हार्डली गॉट द बॉल भाई लास्ट 10 मिनट में टच किया है क्या बॉल मडवेके जैक्सन नीचे गिर गया चलो भाई यही बाकी था लिवरपूल आर हैप्पी टू किक आउट द बॉल क्योंकि टाइम वेस्ट करना उनको लीड पर जाना है हाफ टाइम पर इट्स अ चेस गेम गाइस क्लियरली भाई जैक्सन ऐसे नहीं गिरता आई होप इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म इंजरी ब्रो लेकिन विदाउट विदाउट द बॉल ही इज इंजर्ड तो लुक्स लाइक इट्स पॉसिबली इज अ मसल इंजरी आई होप इट्स नॉट वर्स देन दैट दो लेकिन एंकुंकू इज नो ब्रेनर अगर है तो लेट्स सी इफ ही कैन पुल इट ऑफ अगर हाफ टाइम तक जैक्सन का एक अच्छा शॉट आया था आई मस्ट से दैट शॉट वाज रियली गुड लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट डिड ही हैव रियली गुड मोमेंट्स नॉट रियली जो क्रॉस बार हिट हुआ था अगेन गाइस मतलब डिसअपॉइंटेड बाय चेल्सी लास्ट 15 मिनट्स लास्ट 20 मिनट्स इनफैक्ट थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ सच में बोलूँ तो मे बी इट्स एनफील्ड गोइंग बिहाइंड यंगेस्ट टीम है आई नो दैट बट अगर आप देखो अभी तक जो है रोमियो लाविया ब्रिलियंट गेम खेला है जितना भी उसको पूछा गया है सैंचो वेरी प्रेडिक्टेबल ट्रेंट हैज प्रॉब्ली वन द बैटल अगेंस्ट हिम जैक्सन नॉट इनफ मडवेके नॉट इनफ इन द गेम Palmer has been bad. I agree with the rating. Reece James has been very good along with Lavia. लेकिन टोसिन थोड़ा लकी था बट फेयर डिसीजन कॉलवेल लकी था बट देन सॉफ्ट पेनल्टी भी लगा सैंचेज hot and cold Gusto I think Gusto Lavia and Reece James have kind of stood out Caicedo again hot and cold like Sanchez अभी तक लिवरपूल के लिए आई मस्ट से Curtis Jones winning the penalty is the moment. But at the same time, one has to say that Trent has been arguably the man of the match abhi ke liye. As much as Salah score kiya penalty. Trent has been really good. Uske passes, those through passes, as well as basically uske jo defensive work rate is brilliant. Remember, Curtis Jones is also someone who's not a regular starter in a big game. The women's football channel with Riley Taylor says, hey, I think I might stay away from the Premiership next week. These officials are scripted. Again, we did speak about that in the video yesterday about Harvard Web. लेकिन यहाँ पर offside है supposedly, I believe. Vega needed for the Gaurav Pudin. Again, remember, he could also play centre back. जो Portugal के लिए खेला है. Because Tosin is on a yellow card. One match from the past which you have seen and would like to see it again. I would like to see again and I would like to see the performance of the referee changing or the linesman. Ghost goal or Chelsea Barcelona definitely. 2009 semi-final. Two painstaking games. Chelsea was the Bayern in a good way, absolutely. लेकिन as a watch, I don't think it was a great watch. सच में बोलो तो. As a watch, मैं बोलूँगा Chelsea Barcelona 2005. Awesome game to watch. Awesome. Chelsea Ajax recent times में absolutely. I don't think I would like to term us as a championship team types. Actually we had a very good spell in the game, bro. Lavia, what a brilliant turn again, bro. What a Rolls Royce of a player. Gusto ko mila ball. Will he keep the ball? He just about keeps the ball. So does Sancho. Sancho with a run. Sancho gives it back to Gusto on the left wing. Gusto का cross आएगा क्या right foot से आएगा वही problem हो जाती है ना वही problem हो जाती है left footed guy would have crossed naturally left side से attacks ना बहुत ही predictable हो रहे हैं Madueke
5 minutes of stoppage time, guys. Madueke taking on. Robertson did well. Good point. Big ups to you if you have a channel, I believe. Chelsea. Come on, Chelsea. Come on, get in, bhai. Get in. Set piece पर गोल करो यार. कॉर्नर सेट पीस से गोल करो फाइनली प्लीज. आई नो इट्स डिफिकल्ट अगेंस्ट लिवरपूल. जेम्स नहीं ले रहा, पामर ले रहा है कॉर्नर, आई बिलीव सो. नहीं यार. Why can't we bloody win any headers? Van Dijk and Konate are very difficult, I guess. By Gusto losing the ball, I can't believe it. Luckily, Caicedo, was it? Keeps the ball, but we lose the ball finally. Can't believe it. अपना कॉर्नर आता है साला, आप लोग ही दे देते हैं. गोल आएगा. She man, what was that? Was it not offside? Curtis Jones. येलो कार्ड मिला है सैंचेज को लकीली. सैंचेज यार, वेयर वाज चेल्सी? थ्रू बॉल ओपनड अप फ्रॉम द मिडल. लकीली इट डजंट गेट सेंट ऑफ. इट्स अ पेनल्टी फॉर लिवरपूल. मैं सोचा ऑफसाइड लगा मुझे तो पहले, लेकिन नूनेस का थ्रू बॉल. कर्टिस जोन्स विनिंग 2 पेनल्टीज. क्या ही बोले यार. It's a penalty, guys. No one's going to be debating this. He got the ball though. एक और एंगल देखो तो he got the ball first. भाई अब मैं बोलूंगा दोनों पेनल्टी में आप बोलोगे दोनों सॉफ्ट नहीं हो सकते भाई. ये वाला वापस से 50-50 वाला होगा. मैं रिप्ले देख रहा हूं. He has actually got the ball first. He hit the ball. So I'm not going to take this. दोनों सॉफ्ट पेनल्टी नहीं चलेंगे भाई. As much as it's a rubbish moment by Chelsea, opened up through ball by Darwin Núñez and Curtis Jones unmarked. Tosin totally out of position. So was Colwill. Sanchez, लेकिन he did luckily get the ball first. Although follow up did foul or touch Curtis Jones. ये नहीं होना चाहिए penalty. But is it strong enough for the referee to overturn? I believe so. It is. Yeah, he got the ball. और फिर 50-50 था, तो आई डोंट थिंक ये पेनल्टी है. नॉट अ पेनल्टी. यूनाइटेड बाय फुटबॉल बीइंग सारंगी बोल रहे नॉट अ पेनल्टी एज वेल एज मिकाइल टाइगर बीच. चलो. आई स्वेयर आई थॉट ही वाज गोइंग टू बी सेंट ऑफ. जब रिप्ले नहीं दिखा ना तब तक मैं सोचा कि सैंचेज इज लकी बॉय नॉट टू बी सेंट ऑफ. ये मैं सोच रहा था, बट I like the fact that VR is there. इतना क्या देख रहे यार VR? Give it not a penalty, bro. It is not a penalty, bro. Come on. चलो, not a penalty. Thank you. We are in the game, guys. हम जिंदा है, guys. We are alive. We are alive. You know. मैं अब stop watch को pause कर रहा हूँ, guys. 48-38 पे. My apologies to Sanchez as well. माफी दे दे भाई, माफी दे दे. लेकिन हाँ, आई मस्ट से वी आर टोटली गेटिंग ओपनड अप. हम टोटल पैनिक स्टेशन हिट कर दिए हैं. आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड. और एनफील्ड में यही होता है. व्हेन यू हैव अ मोमेंट जहां पर यू आर लूजिंग दैट मोमेंट, यू नीड टू कम बैक स्ट्रॉन्गर. सैंचेज विद अ लॉन्ग किक दिस टाइम. वाओ, व्हाट अ कुशन हेडर बाय वर्जिल वैन डाइक टू हिज गोलकीपर, ब्रो. बट थैंक यू फॉर द रेफरीज, मैन. बोलना पड़ेगा भाई. बिग अप टू द रेफरीज. एक बार यार हमें जस्ट मैं सोचा भाई गया अपना मैच, पेनल्टी और रेड कार्ड होगा, मैं तो सोचा. लेकिन गुड स्टफ. कोई नहीं. चल से. Lavia, nice stuff. Caicedo putting in Madueke nicely over the top right hand side में. Madueke taking 3 men on nicely. Madueke puts in Sancho. कुछ कर भाई. Sancho कुछ कर भाई. Sancho यार नहीं यार. Sancho नहीं चल रहा. Sorry. Lavia winning the ball or keeping the ball. No. Gusto also tries to win लेकिन नहीं जीता. It's a very good poll. Unfortunately, I believe Sanchez का yellow card overturn नहीं होता है as per the rules. Let me see.
Sanchez yellow card is kept. Very good point by United by Football. ऑफसाइड भी तो था, बिल्कुल मुझे तो ऑफसाइड लगा, बट यही होता भाई, एफआईएसपी कैल्विन ट्रबल। मैं तो सरप्राइज था कि कॉलवेल 2 पेनल्टीज कैसे नहीं कंसीड किया, नोइंग हाउ चेल्सी हैज बीन। यहां पर तू बोला है वो द टॉप राइट हैंड साइड में, मडवे के देयर गाइस, मडवे के कुछ करना भाई, कुछ करना। पामर, पामर, ओह पामर, दिस वाज अ प्रॉपर चांस गाइस, दैट वाज अ चांस ओवर द टॉप। कोई नहीं, अभी आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड मिकाइल इन अ मिनट गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकंड। To be honest, Nunes Ana would have been is a positive for them. Almost. One can argue. But ठीक है भाई, क्या ही कर सकते हैं। Anyway, I'm going to add Michael Imret. Guys, जो भी लोग देख रहे हैं, do not forget to hit that like button as half time approaches. यहाँ पर किक आ गया है केहलर का, और उसी के साथ होना चाहिए हाफ टाइम, लेकिन नहीं, कंटिन्यू हो रहा है मैच। मडवे के tries to beat his man, gets a throw in. एक सेकेंड, लेट मी ऐड मिकाइल पहले। मिकाइल भाई मेरे, क्या बोल रहे हो भाई? काफी नर्वी फर्स्ट हाफ जा रहा है। इज इट अ फैक्ट कि यार आदिस गाइस एक्चुअली, पता नहीं, एनर्जी कम नहीं लग रही थोड़ी मिडफील्ड में, और इज इट आपने जस्ट सही नर्वस बोला, एनर्जी? यू सेड इट राइट, पैनिक, बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हैं, क्योंकि वो लिवरपूल जो है वो थोड़ा सा somebody said in chat as well कि थोड़ा आहिस्ता खेलते हैं, फिर एकदम दे burst with pace। वो burst with pace जो है वो हमसे मैनेज नहीं होता, तो we panic। तो वो बार बार वही खेल रहे हैं, they slow down and then suddenly they speed up। तो थोड़ा सा हमें भी calm down रहना चाहिए। We had a good phase of play in the first half before the penalty, जिसमें we were in possession of the ball and we were trying to control the pace of the येलो कार्ड game। मिला है सोबोस्लाई को फाइनली भाई, दे गॉट अ येलो कार्ड एज वेल। चलो, वो रेफरी का कोटा पूरा कर रहे हैं, वो उसको हर हाफ में 10 येलो कार्ड देने। पामर ऑब्वियसली हमें पता ही था फिजिकली ही विल बी काइंड ऑफ टारगेटेड, प्रेस होगा, लेकिन पामर का टच, समथिंग इज नॉट राइट टुडे। पामर का टच तो उसने अभी शॉट लिया है, वो भी लाइक इट वाजंट दैट बैड एक्चुअली, जस्ट वेंट ओवर द बार, सो वो इतना ज्यादा क्रिटिकल नहीं होना चाहिए, हो जाता है। बट आई एम श्योर ही इज गेटिंग हिज साइट्स इन। ओए नाइस क्रॉस यार। कोई नहीं गाइस, इट इज हाफ टाइम ओनली। अगेन could have been better but could have been worse, so you know what, we'll take it। थोड़ा बहुत मैं सोचा कि वी ऑलमोस्ट वर लुकिंग लाइक द होम साइड, वो थोड़ा सा एक रिग्रेट तो रहता है कि वाई बेसिकली वी गेट, इट्स ऑलमोस्ट अ केस ऑफ बॉयज अगेंस्ट मेन वाला मोमेंट आता है ना, वेयर वी काइंड ऑफ गेट सकम्ड। एक होती है एक्सजी और फिर एक होती है कि चेल्सी की एक्सजी, यू नो चांसेस बनेंगे, हमने कितने वेस्ट करने हैं उसके मुताबिक कितने गोल होंगे। तो वो उस लिहाज से वी आर ऑन ट्रैक, क्योंकि अभी तक कोई एज सच, you know, we came to, I think Palmer's shot was probably the closest, maybe, if I'm not mistaken। वो you can I think again Jackson वाला भी, you're right actually, मुश्किल था, वो जैक्सन वाला मुश्किल था, ये पामर वाला वो could have been a goal, but ठीक है, it just went up। कोई नहीं, I think we're still in the game। Here's the thing guys, half time it's 1-0, we're still in the game, it's a 1-goal game still, it's a 1-goal result। थोड़ा सा मुझे ये है कि अंकित भाई, can we pull up how many yellows and who's on yellow, because I think our changes will have to come based on who's on yellow and who's not। See, that is एक और talking point। As much as I would love to blame the referee, अच्छा मेरा echo हो रहा है, I don't know is it because of me or Mikhail, but for whatever reason थोड़ा echo हो रहा है, but basically speaking I think Jackson का moment of yellow, for me, could he, I know being a Chelsea player you would like to fight कि वो penalty था कि नहीं था, but should we be a little bit kind of, you know, careful in these moments like a Colville for the moment of penalty, क्योंकि literally 2 मिनट पहले हुआ था, टोसिन और सैंचेज थे। should Colville have made that challenge? should Jackson have reacted and got a needless yellow card? As much as basically, you know,
people might say कि Sancho का moment in the box भी penalty होना चाहिए था, जिसके कारण Enzo Maresca was very unhappy and then unhappy था Arne Slot. तो थोड़ा रेफरी की बात करना इंपॉर्टेंट है. Why? Because it was अभी तक, right now, if I'm honest, it was a game of basically, just those 50 calls. ऐसे नहीं था कि लिवरपूल बस फार बेटर टीम, ऐसे कुछ नहीं क्या मिकाइल? नहीं, I think it was a close game. I think थोड़ा सा clutch moments में we were a little reckless in our defending, which led to a few cards as well as obviously almost 2 penalty shots. One penalty definitely. Penalty में I'm थोड़ा सा disappointed हूँ. मुझे साला को देख के I think कि he always goes in the right corner मेरे हिसाब से, जो मेरी memory है. So for Sanchez to go the other way, I didn't understand that, क्योंकि if he had gone the right direction, it was a stoppable shot. वो completely misjudged where it was going. But वो थोड़ी सी disappointment है मुझे उस situation में. Otherwise ये देखो ना, like it's classic वो साला का वो होती है penalty. He drags it back into the same side, right, left of the goalie, right side from our view. वो he should have gone the right way. Anyways, he didn't. ये जो जैक्सन का शॉट था, ये it was a very very tight angle, so वो I don't think that was a let's break it into moments, Mikhail. Chat में comment में highlight करो guys, because we just have 15 minutes and there's so much to discuss. Everyone in the chat, do not forget to hit that like button. लेकिन सबसे पहले वो Tosin वाला moment. Now, people who saw Bournemouth versus Arsenal, I repeat, in my opinion, the right decision was made. But again, I was a little bit surprised and pleasantly surprised that referee ने पहले red card नहीं दिया, knowing how referees are against us. But Colville, Mikhail, touch your heart and tell me, yes, by the letter of law, it was a yellow, 100%, it was just a yellow. लेकिन knowing Colville and Colville का lack of pace, we know कि Colville wouldn't have got there. नहीं, आई थिंक वो उससे पहले भी जो इनका जो उस टच से पहले भी जो इंटरेक्शन था, वहां भी लग रहा था फाउल हो जाएगा. एंड देन ही जस्ट कंटिन्यूड टू कम बैक इन, एंड द अदर गाय वाज आल्सो एक्सपेक्टिंग कि वो आएगा और कॉन्टैक्ट होगा और मैं गिर जाऊंगा. तो वो कॉलवेल आई थिंक पैनिक करता है सिचुएशन में. टू बी ऑनेस्ट, लाइक आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाय कॉलवेल. I'm still waiting to be convinced on Cornwell. I don't think he's the real deal. I think he's a pretender. थोड़ा सा, yes, he's good on the ball, but in defensive situations, he makes mistakes. Yellow card, वो उसका जो handball हुआ था, talk me through that. How is that not a penalty? नहीं वो, I thought it was outside the box anyway. It was outside, just outside. I think it was in the box, and yeah, it was outside the box. You're right. It's not just a penalty. Box, yeah? मगर वो foul भी नहीं मिला. But his hand was out here. His hand was out here. So अगर if he is supposed to be our second coming of John Terry, I'm sorry, he's not showing that ability right now to me. देखो मेरा यही है कि at some point ना, ये अच्छी बात है कि you play with the heart on your sleeve, but we have to be sensible that ये भाई अपना अखाड़े का लड़ाई नहीं है. मतलब Colville needs to understand that, and I agree with you 100%. देखो, as much as the John Terrys of the like, the Vidiches of the world have that thing in them, absolutely. Tosin का एक yes वो challenge rough था, but उसके अलावा उसको जिस चीज पे येलो मिला वो that was what was that? वो शर्ट पुल कर रहा था, that was it. उस पे येलो देने की क्या जरूरत थी? I don't get it. उसी मोमेंट पे मिला येलो, तो I don't think we can argue मेरे भाई. लेकिन talk about moments, देखो Colville का handball was outside the box, तो वो तो I think Sir Josh McEachran has confirmed it as well. Tosin का I agree with the chat as well, कहीं ना कहीं we were lucky, but क्योंकि हम जानते हैं Colville का lack of pace क्या है, but the letter of law it's a right decision. On the other hand, I think जो Colville का first or 2 moments थे in the box, everyone in the chat आप बोलिए, मतलब soft penalty थी. Mikhail, if you are a referee, are you going with कि 2 soft moments आए because it was Liverpool's favor में, and that is why you second one you tend to give in favor of Liverpool, कि you should just look at it as 2 different entities altogether? How should you look by at the way, it? shout out to it wasn't Martin Tyler, it was Mark Oliver, I think, in the VR chair. He disallowed the second penalty, so thank you for that, sir ji. लेकिन जो पहली पेनल्टी थी, देखो, in the way modern football is played, contact, you go down, you sell it well, it is a penalty. There's no two ways about it. I think Colville को थोड़ा सा उस
situation में he has to have the ability कि भाई तू contact ना कर, you mark your man, try to cut off his shooting line, but don't make contact. तो थोड़ा सा, again, I get it. It's a vibe situation. We want him to succeed, but वो थोड़ा सा youth नजर अभी इन situations में सामने आ जाता है कि थोड़ा सा वो over हो जाते हैं हम थोड़ा. So both Tosin ने भी almost gave the ball away at the start of the match, gave it right to their attacker. So like no pressure situation, he just passed it back to them. Top of the box, that could have resulted in a very bad situation too. Similarly, Sanchez gave the ball. वो luckily वो rebound होके वापस उसी के हाथ में आ गया. Could have gone anywhere. तो आपके तीनों जो आपके जो presences हैं in the goal in the box are making mistakes. अब यहाँ पे are we playing within ourselves और कहीं ना कहीं we are inviting trouble? मुझे थोड़ा सा लगा कि जिन situations में हमारे player under pressure होते हैं, maybe enough people are not coming in to help them, to give them an option for a pass. वो सारे everybody's just standing there ball watching. कि भाई अच्छा ठीक है, player is under pressure, अब उसके ऊपर है कि वो dribble करके किसी तरह निकल आएगा under pressure में से, तो ठीक है. So I think somebody has to come back and help them out, give them a passing line, do something. वो अभी मुझे नजर नहीं आ रहा इतना. Not it would have avoided those situations जहाँ पे ball वो Liverpool is playing very smart कि एक तो हम high line खेल रहे हैं and they're playing the ball over in behind. उन्होंने 4-5 दफा किया first half में, and Salah making a run, या वो दूसरा वाला जो भी है वो Gakpo है या who's the other guy उनका जो forward है, Gakpo Nunes, the other guy as well. तो ये सारे they are waiting कि वो run मारेंगे, and the minute there's contact they will fall down. अब वो आपके ऊपर है कि आपने उसको किस तरह how are you playing your high line. तो थोड़ा सा risky है. I don't think कि हम बहुत ज्यादा high खेल रहे हैं, but I do think कि Liverpool have spotted कि हम high खेल रहे हैं and they're exploiting it. Trent is having a great game. Trent is having a great game. मतलब Trent and Curtis Jones, of course. यहाँ पर अगर मैं बोलूँ, people asking about Sancho का moment. Honestly, Sancho का moment मुझे live दिखा कि it was a coming together. लेकिन for people who are seeing the replay in half time etc. बोल रहे it was a clear penalty, वो मिलना चाहिए था etc. मैंने भी replay नहीं देखा और obviously उन्होंने दिखाया भी नहीं. वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, हमारा ये कैसे होता. तो मैं तो बोलूंगा at the end of the day, can we kind of ask for that? Yes, we should ask for that. But Sancho individually, he had a terrible game in my opinion. He could have been. In fact, मैं काफी impressed था गुस्तो से from the attacking perspective, the positions he took, Lavia, his turns, Reece James after injury जो है, शगुन जो पूछ रहे हैं in the chat, great game in my opinion. लेकिन साथ में ये भी आप बोल सकते हो defensively, अगर आप गुस्तो को left back खेल रहे हो as an inverter, don't you think defensively he should have been a little bit better? As much as attackingly I really like it. गुस्तो क्योंकि Colwill और Tosin आप देखो ये भी काफी बार क्योंकि positionally Colwill Tosin का थोड़ा सा issue हो रहा है, Tosin left side आ रहा है, which is kind of surprising why that is happening. Maybe Gusto should just at times stay back and we should ask basically जो Jackson अपना left wing ले रहा है channel, maybe Jackson should stay centrally. Maybe हमें वो पहले try करना चाहिए. Just go with the traditional back four. So there are two things, right? कि एक तो है कि if we get our chance and we convert it and we get on the scoreboard, so then everything is forgotten. When we're not doing that, so we have to pick on everything from all the way back from the goalie to the centre backs to the midfield to the forwards. We can pick apart everybody. The point is not to pick apart everybody. Probably, I think we can all agree. We just want to see कि ठीक है, we are seeing out those situations without taking more cards in the second half. Secondly, let's get some more clinical activity up in front in the box. Ankit, if you're the manager right now, who would you put up in the attacking side? किसको change करोगे? In the defensive side, किसको change करोगे? I think it's a no-brainer कि Sancho needs to be off. Sancho मेरे ख्याल से, and I'll be very honest, बहुत ही naive खेला है. मतलब Trent, he should be dominating Trent, and Trent has done really well defensively. वो कितने दफा बोलते हैं. I think he made one run past Trent, लेकिन उसके बाद he just kind of cut back every time. Problem है कि he is being too predictable. All the time he's trying to step over and kind of cutting inside. He needs to kind of go outside because we don't have an overlapping fullback. He needs to understand. Hats off to Liverpool वैसे in the defense of our wingers. Every situation our winger gets the ball, they have 2-on-1.
every situation 2-on-1 होती है. Like I have not seen them uh, 1-on-1 situation में. There's always 2-on-1 going on. So Liverpool की defensive awareness है. They are kind of snuffing that danger. But एक दफा I think Sancho went around to the byline and cut back. I think he cut back, and the other time, yeah, he got a corner from it. I think, or was it Malo Gusto who did it? I don't know. One of them नहीं, was एक able और to. चीजें यहाँ कुशल पूछ रहे मडवे के. मेरे लिए Palmer and Sancho have not had a good game, and I would like to admit, and for me Madueke has not been involved enough. I think we need to have him involved more by getting more support. Maybe अगर हम क्या करेंगे ना, अगर हम लेफ्ट बैक को पीछे लाते हैं ना थोड़ा, then Reece James kind of can be that support that probably Madueke needs. And I think again guys, मैं अभी भी, by the way, breaking news, मैं अभी भी देख रहा हूँ that replay. The replay where हम लोग सब बोल रहे हैं, Chelsea fans in the chat majority, that वो penalty होता. Honest opinion बोलूं, it wasn't a penalty. Sancho का, Sancho अच्छा. made the best out of it. It wasn't a penalty for me. Sorry guys, मैं बहुत rare बोलता हूँ ऐसा, मैं बोल रहा हूँ ये. Sancho का moment against Trent wasn't a penalty in my opinion. I thought Sancho made the. It was almost like जो साला को penalty मिलता ना, बहुत ही ज़्यादा soft होता, वैसा moment था basically. सही है. नहीं ठीक है, कोई we मसला have नहीं है. to. But I think the point that everybody's making is that we needed to ask for it at least, right? We didn't even ask for it. We just kind of got up and got on with it. So we are. Ask the question at least. बाकी ये है कि I think we weren't playing. It wasn't a one-sided game really. We had our chances too. Throughout the half, we had our chances. We were able to get into their box. Hats off to Madueke. 3-4 दफा he I think he was able to drive past वो क्या नाम है उसका इनका जो fullback है? Robertson. Actually, you're Robertson, right. yeah. He actually had the goal. Madueke is doing well. I feel कि on the left wing, I would like to bring on Neto. People, I don't know. I know he's better on the right wing, etc. Neto का change of pace जो लिवरपूल कर रही है, लिवरपूल देखो बहुत ही carefully खेल रही है, and they are playing almost a second, third. They are switching from second to fourth gear, and that is what we need to do as well. We need to be aware of that. Tactically, they are toying with us कि वो थोड़ा सा slow down हो जाते हैं. They lull us into one mistake, one sleepy moment, and then boom, they are running towards our goal, and we are out of position somehow every time they are doing that. तो थोड़ा सा हमें भी अपने आप को वो high line जो है ना, that's costing us. I think we need to sink a little bit, play slightly deeper, maybe 5-10 yards deeper होनी चाहिए हमारी line, and we need to get one more guy behind the ball more often. थोड़ा सा we are out. ऐसा मुझे लग रहा है that we panic because we're not used to playing that high a line, and then every time we are challenged there, we end up making a rash tackle. Yeah, वो 50-50 में we're rougher than maybe we should be. थोड़ा सा lack of confidence नजर आ रहा है, be it Tosin, be it Colwell, वो हल्का सा panic stations हो जाता है. So maybe we need to just play slightly deeper. I think the positives in the half, let's focus on those. Lavia was a bright spot, a couple of beauty balls, man. I was like, ये किसने पास दिया भाई, ये क्या था? And like he did. Lavia को देख के मजा आ गया. I tell you, I thought Reece James was very good. Reece James as well, 100%. Reece James so far so good. एक moment था जहाँ पे he got hustled off the ball, but वो 3-on-1 situation he was में, lucky again. वो 3-on-1 situation थी. Referee called a foul, he saved him. But James आ गया मेरे भाइयों. सब लोग, yes, it is Neto basically Neto Sancho, as we called. well called, bhai. But let's see if it Bhai, works. OP to Ankit bhai, dekho, this is what we call experience, guys. It doesn't matter if you don't do well, bro. We have to do well. Lekin big ups to Mikhail, guys. Mikhail join करेंगे by full time पर. Guys, the match has begun. The second half has begun. सब लोग chat में बोलिए predictions. Mikhail, up the Chelsea, man. मिलते हैं. Up the Chelsea, guys. Let's score a goal here. चलो, see you, man. Big ups. लेकिन हम 48-38 में करेंगे वापस से time stamp. Guys, get the likes up. Guys, come on. Get the likes up. Where are the fam? आ जाइए भाई सब लोग. We are here no matter what. Chelsea. Come on, Chelsea. Oh, when the Blues go streaming in. I wanna be in that number. Oh, when the Blues go streaming in. चलो भाई, मैंने रीशेयर कर दिया ट्विटर पे. If people can reshare, great. नहीं तो if you're not getting notifications, hit that bell icon. Arudhar in the house. क्या हाल है? Long time no see मेरे भाई. What's up?
1-1 my default prediction बोल रहे हैं अपने भाई. So Josh McEachran 48-38 में करना है ना अपने को वापस. यहाँ पर चेल्सी गेम प्ले अभी कर रही है कंट्रोल. It'll be interesting if we try something different at times, like, you know, Jackson or Palmer drifting on the left hand side. मतलब just saying. लेकिन हाँ, नेटो मडवे के तो we don't really need that. लेकिन हाँ, again Nkunku, Felix possibly will come on late in my opinion as well. Or Reece James will be off at some time. Also we know. So Vega could come in. Madueke taking on Robertson. Cross आया. Nice defense. Why the Liverpool are defensively brilliant in my opinion. They're defensively brilliant. James keeping the ball, giving it to Madueke, giving it back to James. James ka low cross. Nah, he could be doing better. Guys, predictions in the chat ho jaye. Again, do like and share the stream. More importantly, come on. यहाँ पर मैं यहाँ पर ये चेंज करता हूँ, इमेज हटा देते हैं यहाँ पर. ठीक है, लेट्स रिमूव दिस इमेज फॉर द सेकंड हाफ. Chelsea, कम ऑन Chelsea. बिग अप टू नील भाई. ऑफ टॉपिक कमेंट्स क्वेश्चंस का टाइम नहीं है मेरे भाई, लेकिन लव यू एज वेल. 1-1. ज्यादा लोग बोल रहे थ्रू बॉल है. निकोलस जैक्सन है. निकोलस जैक्सन, कम ऑन. ऑफसाइड है. घंटा मैन ऑफसाइड है. I thought he was onside. Was he offside, Nicholas? Malo Gusto ka बढ़िया गेम प्ले on the left hand side. Caicedo onside है भाई. It is onside, I guess. Chelsea. Come on, Chelsea. Oh, when the Blues go streaming in. Oh, when the Blues go streaming in. I wanna be in that number. Oh, when the Blues go streaming in. Carefree, wherever we may be. We are the famous CFC. We are looking hard at it, guys. VR is looking. मैं भी देख रहा हूँ. ऑन लग रहा है. ऑन दे दो मेरे भाइयों. As I am waiting for the timestamp to match. Come on. इतना क्या देख रहे हो? ऑन है भाई. ऑन है. ऑन होना चाहिए. चलो भाई, मैंने टाइम स्टैम्प तो कर दिया. एक सेकेंड, आई जस्ट ऐड मिकाइल. कम ऑन! इट इज Chelsea! Nicolas Upandi, Michael Jackson scores! Come on! Get in, man! Get in! We are in the game, bhai sahab! Get in, guys! Get in, everyone, bhai! मैं पता नहीं ट्राई कर रहा हूँ मिकाइल को ऐड करने के लिए यहाँ पर. मिकाइल भाई साहब, Jackson scores at your beauty, man. And what a through ball from Moses Caicedo. Oh, bhaijan, we are in the game. And superb assist to लेकिन it is 1-1. The game is on, मेरे भाइयों, as I go on and on. Assist to Mark Oliver. Respect. यहाँ पर ऐड कर दिया है. Mikhail, are you able to hear me? Yeah. Can you hear me? I am not able to hear you for whatever reason. एक सेकेंड वापस से करते हैं. Chelsea. हाँ, finally Mikhail is here. Mikhail, can you guys hear? What a start, man. Second half of, yes, I can hear you now. Second half of Enzo Maresca. It is the usual thing, right? Water is blue. I just wanted to say the thing we've been talking about. Jackson, when sometimes Jackson brings it, and he brought it that time. And props to Mark Oliver, he for a fantastic assist from the VAR chair, because we needed it. लेकिन हो जाए भाई. Come on, man. Get in, man. It is what it is. Now let's go. अभी लेकिन we have to be careful the next few minutes. Absolutely. Get behind the ball, guys. Get behind the ball. Guys. Come on, Chelsea. Reece James, ये चीज. अच्छा, मैं for whatever reason एक सेकंड के लिए पीछे हो गया. I'm just refreshing my stream. Guys, again, जो भी लोग देखे, do not forget to hit the like and share the stream. The game on, भाई. Very much on. लेकिन looks like it हम change कर रहे हैं एक और.
ये क्या हो रहा है? मतलब गोल आएगा. Oh no. Oh no. Curtis Jones has scored. Curtis Jones has scored, guys. ऑफसाइड नहीं है? What rubbish, guys. She yaar. What a match he's having, bhai. Curtis Jones. ऑफसाइड नहीं था, मुझे लगा ऑफसाइड है. Shit, man. I wasn't able to even change the score, man. उसके पहले Liverpool have scored. Can't believe it, bro. Seriously. ये क्या सॉफ्ट गोल था यार, बहुत सॉफ्ट गोल था. Defensively very naive, man. Very naive. एक second, guys. I'm just coming to the chat. I have a feeling ऑफसाइड था, मुझे लगा जिस तरह ऑफसाइड है. I don't know. देखो, साला को क्रॉस अलाउ करना is a mistake from 100% Gusto. Sorry, guys. I'm taking on Gusto right now. ऑफसाइड है भाई, ऑफसाइड है, लंबा ऑफसाइड है. Offside है क्या? हाँ, no goal. I don't think that's a goal. That's not a goal from I anywhere. thought he made a good run. That's offside. Motion आ रहा है मेरा. That's offside भाई. क्या बोल रहे जनता? Offside ही कौन है? मेरी तरफ से that's a offside goal. Let's see what Mark Oliver does. Timing on है भाई, on है. Timing. I think Gusto को allow करना वो cross. The whole point about Gusto being there, a right-footed, is about to basically go out of the window. On है भाई, run. It was a good time run. अच्छा. Anyway, we are coming back, bro. We are coming back, man. Chelsea. But I don't know. Gusto बहुत बार अलाउ किया है. Vega coming in and I see why it's happening. लेकिन इतने सारे changes एक साथ. Reece James going off. Interestingly, Gusto will go at right back now. Bardeshil आ रहा है, guys. Bardeshil will be playing left back. Wow. Seriously. और वेगा भी आ रहा है. चलो, वेगा भी आ रहा है. तो क्या कर रहे हैं हम? बेसिकली कॉलवेल विल बी प्लेइंग लेफ्ट बैक. एंजो भी आ रहा है. हो क्या रहा है भाई? इतने सारे चेंजेस. व्हाट इज हैपनिंग? जेम्स, टोसिन एंड लाविया. टोसिन इज आल्सो ऑफ. तो बार्डेशिल हैज रिप्लेस्ड लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट फॉर टोसिन. टोसिन जो येलो कार्ड पर है, रिमेंबर दैट. आई डोंट नो, कुड हैव बीन एन इंजरी एज वेल फॉर ऑल वी नो. लेकिन बार्डेशिल कमिंग इन फॉर टोसिन वेरी सरप्राइजिंगली. ठीक है, इन द बैक थ्री अभी खेल रहे विद द बॉल एज मच एज Vega is playing right back. तो प्रीटी श्योर यहाँ पर नेटो ऑन द लेफ्ट विंग. एक सेकेंड, वेगा लेफ्ट ही खेल रहा है, लेकिन यहाँ पर नेटो का बॉल बीन बिहाइंड जैक्सन, डजंट गेट इन. नहीं, आई थिंक इट मस्ट बी सम इंजरी. आई एम प्रीटी श्योर. बार्डेशिल का कोई लॉजिक मिकाएल अपार्ट फ्रॉम द येलो कार्ड और इंजरी? हाँ नहीं, येलो कार्ड ही है मेरे ख्याल में. वो he just wanted to make sure कि we're not in a 10-man situation. कोई नहीं, चलेगा. I have no issues with that. I think वो थोड़ा सा हमें चाहिए था वहाँ पे little bit of. But I like that the fact is he's got a left footer Vega on the left hand side. Abhi I actually like that. Although abhi first volley I misread the screen. I didn't realize we're going towards this side. So yeah, he is on basically Vega, Bardeshil, Colwell, Gusto are the back four on paper while defending. Then midfield में है of course यहाँ पर काइसेडो और क्या बोलते हैं नाम, एंजो. ठीक है, और नेटो, पामर एंड मडवेके विद जैक्सन. शाबाश गुस्टो. ऑफसाइड था लेकिन गुस्टो मेड अप द. अगेन चैट क्या बोल रहे हैं? टू बी ऑनेस्ट, गुस्टो की गलती थी. आई हैव टू से इट वाज गुस्टोस फॉल्ट. मतलब he has to be singled out. Maybe Curtis Jones being allowed that run was also a question mark. लेकिन it was a good run from Curtis Jones. लेकिन how did Gusto allow that cross? और बहुत आसानी से allow किया. ऐसा भी नहीं कि there was a challenge. The whole idea about Gusto being there was about to save those crosses. But it's more generally speaking, I think we are not in the culture of blocking crosses. We allow the cross. हमारा ये criticism रहता है कि we allow the cross. Gusto man, very well done defensively this moment में. भाई साहब गैक पोस्ट पर चढ़ा हुआ था. Oh my goodness. Is that a Palmer heavy touch but just about keeps the ball. Luckily so does Madueke and Caicedo. Enzo by an brilliant ball. Enzo nice ball to Neto on the left hand. Neto cut in कर रहा है. Interestingly, why I don't know when you have a Vega there, but anyway Vega finally आया है. But यहाँ पर Vega short pass easily cleared by Trent.
As Gravenberg, yeah, you can argue. Gravenberg and Palmer, who were two of the informed players, have not had the best of the games. One can argue, definitely. But ठीक है, मतलब it is what it is sometimes. Vega to Neto. Neto is looking sharp, I must say. Neto is looking sharp. Neto ka cross easily read by Keller. Come on. Kanish Bish, big up to you, मेरे भाई. Big up to you. Again, everyone have their opinion. Big ups to each and every opinion. मुझे भी लगता है we could have got a penalty. Lekin I'll be wrong if I'm saying कि Sancho वाला we were robbed. I'll be very honest. Technically, Sancho वाला moment was equal to Salah वाला moment. So kind of it cancels out if you think like that. But I hear you absolutely. अगर मैं Chelsea fan हूँ, obviously I would want that 50-50 decisions हमें भी मिले कभी-कभी. लेकिन हमें आदि हो बनाया गया है उसके लिए. But again, just because someone is saying that it's a penalty doesn't mean it's a penalty. मेरा opinion ये है, आपका opinion अलग हो सकता है. That's why it's a fan channel for all reasons. That's why we discuss. लेकिन हम कंट्रोल कर रहे हैं. लिवरपूल का शेप देखो ना मिकाइल. They get into this brilliant defensive shape, man. Neto, man, looking nice. Look, by Trent is also improved defensively, I must admit. Goal आ रहा है, मुझे लग रहा है we're gonna get on the scoreboard again. We need to. But Curtis Jones, man, what a game he's had. Imagine Curtis Jones. I guess he's उनके सारा जो front line है, it's kind of slippery, right? They're all kind of fast, fleet-footed. हाँ, वो in behind वाला सीन है उसका भी. जोटा भी वैसा ही प्लेयर है, ये भी वैसा ही है, गैक्पो भी वैसा ही है. अरे यार मडवे के यार, बॉल बाहर ही जाने देता, इतना सॉफ्टली नहीं खेलना था. कोई नहीं. मतलब I would have considered getting Nkunku and putting Palmer on the right hand side now that Madueke is anyway not much in the gameplay, but he's been good at the same time. Because getting a goal scorer is key right now on the pitch. Next goal will be critical. Nice, Gusto. Nice position. If we can equalize, it's going to be massive. And if they get another one, then it might kill the game. So we need to get Palmer! नहीं यार, he's not had the best game, bro. भाई ये लिवरपूल फैंस शुरू हो जाएंगे अभी सोशल मीडिया में कोल्ड पामर वाला. But anyway, the point being that he has to perform for us to win the game, more importantly. Ritin, I didn't get your point, मेरे भाई, but कोई नहीं. By the way, Caicedo का ही assist था, correct? अरे भाई बॉल दे दे. Caicedo ने बॉल दे दिया. I think so, yes. अरे वेगा निकाल दे बॉल. Palmer. No man, come on, Vega. Caicedo, big up. Moses Caicedo. Oh, come on, how's that free kick? Referee idiot, man. I swear, idiot of the first order. How is that a free kick, bhai? Clearly won the ball, man. Anyway, calm down. अभी भी टाइम है. To be honest, Enzo और नेटो का इम्पैक्ट लगा है मुझे तो डेफिनेटली. पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ. I like it so far. But अरे भाई वो देखो, no man. Oh no, भाई गैक्पो डायरेक्ट मेरे उसको शिमला. How are we allowing these shots in the first place? Guys, again, big ups to the chat. We take off-topic questions and comments when the match is not going as a watch-along, so I hope you can respect that. But definitely, big ups to all the creators in the chat as well as the Chelsea women team. Absolutely. Hi, Chelsea fam. Congrats. भाई 2 महीने हो गए समय यार. 14 के कराए. लेकिन Sanchez playing out Bardishil nicely. Bardishil casual pass. I don't think that pass was on. Nicholas Jackson was pressed. Yes, MJ, it's stale news, मेरे भाई, but I hear you absolutely. We need to Vega यार. Vega is he looking? पता नहीं. A little bit nervous, almost. Ooh, good reading. Get the ball back, yaar. Hands off free kick. I must say, Arne Slot का management and calmness
that he has on the touchline, man. Kind of envious. But we have an Enzo Maresca who is tactically there or not. और वो अभी दिखाएगा, टेंशन नहीं लेने का. I mean, the one thing we did No not problem, leave, Samir. the league did not need was Liverpool that can defend as well as they can attack. So Arne Slot, props to him. He's doing a good job there. But Neto, nice. Neto, nice. Arey, nice. Trent doing Yeah. also good, yaar. Arey, yeah, that's a Trent, foul, man. guys. He's pulling him down. You think so? I don't know. I don't think so. But anyway, I thought Neto is looking impressive and he just needs to do more of that. I think beat karega ek moment aayega. I'm sure. He just needs to take his man on. I'm pretty sure Trent is not the defender we know. As all due respect, as a very good attacking defender that he is. Ek mistake aayega. There's one mistake in Trent. I know it. सुचित बिग अप ब्रो, आई एम गेटिंग अ व्हाट्सएप मैसेज. अभी उठा है सुचित, लेकिन अभी वॉच अलोंग कर रहे, बाद में बात करते हैं मेरे भाई. लेकिन यहाँ पर क्रॉस आया नेटो का, फार पोस्ट में है बडवेक के, राइट फुटेड इजी शॉट फॉर केलर. ऑफ बैलेंस हो गया था. अगेन दे हैव वेटेड, दे हैव बीन वेरी स्मार्ट. शनाया लिवरपूल नो की काइंड ऑफ चेल्सी हैव देयर मिस्टेक्स, और वहीं पर मिस. अब देखो ना, लीवाई कॉलवेल का हमें पता है, ही हैज दैट हॉट हेड. ठीक है, वो वाला उस चीज से खेले. निकोलस जैक्सन हैज अ हॉट हेड, दे हैव प्लेड विद दैट. Palmer, again, physicality is not the only thing that he has, and that's the thing that they've done well. फिर आप बोलो कि even in the second goal, one can argue that they knew कि हम crosses को block नहीं करते. Nice work by Neto, winning a free kick. Gravenberch giving away a free kick. This could be. कौन लेगा भाई? अगर रीस जेम्स होता पिच पर, मैं तो बोलता रीस जेम्स लेता, लेकिन मे बी पामर itself will take. But is it the right? एंजो लेगा फ्री किक. थोड़ा सा left half Palmer होना चाहिए. Palmer scored the last free kick, I think, that he took. Yeah, Palmer scored the last free kick. It'll be either of them itself. Palmer ही लेगा. एंजो भी आ रहा है अभी. लेकिन अच्छी पोजीशन है. थोड़ा सा लेफ्ट साइड या थोड़ा सा राइट साइड होता ना, तब ज्यादा अच्छा होता. बट ठीक है, लेट्स गो. डायरेक्ट जाना पड़ेगा. It's that kind of distance. You have to go direct. मजा आ जाए यहाँ पे अगर ये कर देना. ओए केलर भाई, तेरे से भी रिवेंज लेना है, लेकिन पामर ही ले रहा है. लुक्स लाइक इट. डायरेक्ट करेगा क्या? ओ, आउटसाइड कर तो सकता है. अरमान, क्या हाल है भाई? व्हाट्सअप. कम ऑन. कोल पामर. Ooh, the ball did its job, guys. Straight into the wall. Yep, good point by Shania, and this is what a young team concede a lot of times. आप देखते हो, we always say just after scoring we have to just put it to second gear and control the match sometimes. और वहीं पर एक फाउल ही कर देता भाई गुस्तो साला को, the least. बट ठीक है, गुस्तो का क्रॉस आया. वो फर्स्ट टाइम मारना था क्या मडवेके को, लेकिन प्रीटी श्योर साला फ्री किक अगेंस्ट अस होगा. नूनेज उठ जा भाई, लेट चैलेंज था आई नो, बट कम ऑन. कोई नहीं. Chelsea. Come on, Chelsea. Bye, away crowd. Everyone, wake up, guys. अभी भी है 30 minutes proper है अभी, including stoppage time. Don't you worry about it. We are seeing another goal coming. Definitely. Bring Nkunku for Noni. Is it time to make that change right now? Diaz आ रहा है, by the way. I was surprised not to begin. Gakpo already been taken off, remember, for Luis Diaz जो आया अभी. ठीक है, तो यहाँ पर लुइस डियाज आया, तो लाइक फॉर लाइक ही उनका. लुइस डियाज, मोर पेस, मोर डायरेक्टनेस कमिंग इनटू द पिक्चर, और दे आर ट्राइंग ऑब्वियसली फॉर द विनर, क्लियर विनर. और हम यहाँ पर no matter what we need to attack, we don't have any choice right now. अंकित भाई, इंकुंकू को आ जाना चाहिए अब. वही तो मैं बोल रहा हूँ, 66 मिनट हो रहे, तो आई थिंक इट्स प्रॉब्ली टाइम. अरे नहीं यार, गंदा पास बाय कॉलविल. यार आप सच बोल रहे हो, कॉलविल हैज बीन वे टू लेथार्जिक मैन एट टाइम्स टुडे. आई डोंट नो, तू ज्यादा ही प्रेस कर दिया अर्ली ऑन इन द सीजन. इनफैक्ट रितिन, टेक्निकली मेरा भी है. आई वाज अ ह्यूज फैन, बट ऑब्वियसली अभी तो दिस अ लिवरपूल प्लेयर.
Colville has been absolutely awful. पता नहीं मतलब आई थिंक इट्स अ केस ऑफ वही है ना, क्योंकि लिवरपूल के साथ हम लास्ट टाइम 2 बार हारे थे. समटाइम्स इट गेट्स इनटू योर हेड इफ यू आर अ कॉबम किड, समटाइम्स यू नो इट बिकम्स दैट आल्सो. आई थिंक आई एम रेडी टू चेंज द टैक्टिक गाइस. मैं अभी डालना चाहूंगा पामर को राइट विंग और इंकुंकू को लाऊंगा और मडवे के ऑफ. आई एग्री विद द चैट विद गौरव. सेम सब्स्टिट्यूशन और समथिंग एल्स आप सोच रहे हो एक एक्स्ट्रा अटैकर फॉर अ मिडफील्डर और डिफेंडर. Any chance that? No? I like your thought process there. I think that would be a double like a nice pass. Potential nice ball. Oh. मैं बैक 4 जाना चाहूंगा, मतलब बैक 4 आज गुस्तो एंड 4-4-2 टाइप अटैक बन जाएगा वो. करेक्ट करेक्ट, क्योंकि उसमें यू आर डिफेंसिवली आल्सो प्रोटेक्टेड राइट काइंड ऑफ. या बाड़ेशिल भाई भाई तो बाड़ेशिल कैसे आया और दिसासी, ये भी एक टॉकिंग पॉइंट है. नहीं, आई थिंक फिजिकलिटी चाहिए आपको वहां पे, तो वो इट मेक्स सेंस. आई थिंक बाडियाशिल हैज मोर फिजिकल प्रेजेंस. आई होप आई डोंट ईट माय वर्ड्स, बट जनरली स्पीकिंग उसका लाइक वी नीड समबडी देयर टू काइंड ऑफ बी फिजिकल. नाइस बाड़ेशिल, वेल डन ब्रो, वेल डन. डार्विन नूनेज बहुत ज्यादा नाटक नहीं कर रहा. उठ जा भाई, उठ जा मेरे भाई. अच्छा खेला अभी तक, आई मस्ट से. लो जी, कार्ड मिल गया. किसको मिला है? रेफरी विसल करता लगता है, कार्ड के लिए करता है बस. वेगा, बाड़ेशिल, कॉलविल सब लेफ्टी है भाई, बिल्कुल. द आइडिया आई थिंक इज मे बी बिकॉज दे विल बी यू नो नेचुरल दैट साइड, लेकिन साला जब है ना, वी हैव टू बी केयरफुल. किसको केयरफुल साला करें? गोल और असिस्ट यार, क्या ही बोले यार. क्या नाटक था यार. डार्विन नूनेज भाई इतना आसानी से गिर गया भाई, क्या चुई मुई है यार. कम ऑन, यू आर अ स्ट्रॉन्ग मैन मेरे भाई, कम ऑन. बहुत ज्यादा एक्टिंग करता है. एग्जैक्टली पुदिन आज तो बहुत ज्यादा कर रहा है, बट ठीक है, वी कैन नॉट ब्लेम. भाई बाड़ेशिल हेवी पास, लेकिन फ्री किक हमने जीता है. नाइसली डन भाई. और यहाँ पर डार्विन नूनेज को येलो कार्ड मिल गया फाइनली. चलो भाई, रेफरी ओपिनियन तो चैट हो जाए. ये चीज आई लाइक दैट. नाटक चल रहा था. हाँ, इट वाज अ लेट चैलेंज. बिल्कुल देवेश. कम ऑन चेल्सी. एक तो फ्री किक्स और कॉर्नर्स में मिलते हैं ना, इट इज ऑलमोस्ट लाइक लिवरपूल का एडवांटेज. भाई वर्जिल वैन डाइक का कोनाटे बीइंग देयर, वी कैन नॉट डू एनीथिंग. वेगा एंड बाड़ेशिल में भी हेल्प करे सेट पीसेस में, अभी कॉर्नर्स में नेक्स्ट. टू बी ऑनेस्ट, वेगा इज अ गुड फ्री किक टेकर. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट. Oh, good ball attempt. Oh, good pressing, bhai. Ooh, back pass ही था. Was it not a back pass or what to Keller? Did Enzo get a touch or? Nice. Moses Caicedo, brilliant by Moses Caicedo. He's had a better game against Gravenberch in my opinion. I thought it was a back pass, bhai. I would love to see the replay, guys. Didn't Trent back pass to Keller or was it Enzo? क्या कर रहे हैं हम? टाइम वेस्ट कर रहे हैं. What are we trying to do? काइसेडो को क्या हुआ हुआ? 2 दफा मारा उनके प्लेयर को बॉल. येलो कार्ड निकलवाने के चक्कर में हम. कम ऑन. नाइस पास बाय कॉलविल टू नेटो. रन आया था भाई, फर्स्ट टाइम देना था ना, लेकिन कोई नहीं. कॉलविल क्या करेगा? कॉलविल भाई इतना बीट के गोल लेना चाहिए. कम ऑन, गोल नहीं यार, पास करता यार, छक्का मार दिया यहाँ पर गुस्तो ने. दैट शुड हैव बीन अ अटेम्प्ट ऑन गोल एज अ मिनिमम. बहुत दूर था भाई, 30 यार्ड्स आउट. नहीं, लेकिन मडवे के वाज फ्री ब्रो. नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, शॉट नहीं बनती थी वहां पे. हाँ एग्जैक्टली. देयर वाज नो शॉट ऑन. गुस्तो को क्यों गाली दे रहे हो पुदिन? आई थिंक मडवे के को मिलना चाहिए था, मतलब राजा पामर को मिलना चाहिए था. पामर शुड हैव पास्ड इट टू मडवे इन द फर्स्ट प्लेस. ये जो सेकंड बॉल होता है ना, इस पे हम छक्के मार रहे हैं. लिवरपूल इज एबल टू स्टिल डू अ बेटर काउंटर अटैक.
अरे भाई निकाल दे वापस, सैंचेज चलो गुड। सैंचेज बॉल दे दिया है, एक सेकंड। अरे भाई ये क्या भाई बंदा है यार, ये मैंने आई स्पोक टू सून। ओ भाई सैंचेज का क्या, गुड। इसको मेरे ख्याल में वो ऐनक लगने वाली है, इसको पता ही नहीं होता ये किधर बॉल मार रहा है। The second, third time he's given the ball directly to them in this game. बी केयरफुल भाई, हम बॉल दे दिया वापस से। पामर इज बिकमिंग सेल्फिश है भाई। पामर एंड मडवेके का दोनों का इश्यू है वो। आई नो इट्स समटाइम्स गुड, बट इन दिस मोमेंट टाइम ही शुड हैव पास्ड इट टू मडवेके। इट वाज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग, वेरी डिसअपॉइंटिंग। इट वाज सो ऑब्वियस, मतलब ऐसा भी नहीं था कि इट वाज अ फ्री शॉट ऑन गोल। मतलब देयर वर 3 पीपल इन फ्रंट ऑफ पामर एंड नो वन इन फ्रंट ऑफ मडवेके, ऑल्दो उसका एंगल टाइट था। There was no reason why he should have taken the shot. Gusto ka fir bhi I understand why he took the shot, to be honest. He wanted to become a Guardiola, I guess. But kahi bole. Come on, Chelsea. Control कर रही भाई लिवरपूल अब गेम. We need to 72nd minute. If you're not getting Nkunku now, I don't know why we signed Nkunku. I have to ask. It's Liverpool Chelsea we're talking about, and Nkunku is not coming at this point in time. Why? Again, Madueke की गलती नहीं थी, but has he been involved enough in the game? No, that's also reality in the second half. नहीं यार भाई, गुस्तो ने मिस किया हेडर, लकीली बारिशिल था, नहीं तो ये भी मुश्किल मोमेंट होता। एक तो हम लॉन्ग बॉल खेलते हैं ना, मतलब वी नो लिवरपूल वी नॉट विनिंग। नेटो गेट्स द बॉल समहाउ, लकीली नेटो पास कर गया, शॉट लिया नेटो ने। ओ भाई साहब, राइट फुटेड शॉट गाइस, जस्ट वाइड। Yeah, Palmer has been crappy. I agree. Palmer has not been good, have to admit, and he's allowed to have an off day. But are we? Matlab, if you are being very honest, I know Palmer is him. Like on merit, Mikhail, should we not do a like for like Nkunku for Palmer on merit of the game? Palmer is not having a good impact on the game right now. Ooh, So high either way, challenge, bro. Luis Diaz का high challenge नहीं था ये? Yeah, man, it should be a card. Guys, come on, that was the high challenge. I thought. That's a card. Come on, ref. I thought he jumped. Yeah. Luis Diaz jumped. ओए ओके, नहीं ठीक है, चलो बच गया। हाई स्टार्ट था लेकिन लगा नहीं, so saved. Deemed as a coming together, I guess. I don't know. मुझे लगा था it was high, but हाँ, just a yellow. इस सिचुएशन में we should be passing the ball over for Jackson to make a run. Again, Jackson first half में लगा भी था थोड़ा लगी। ये when we try to pass the ball, वो 2-on-1 कर देते हैं। उई, nice try, but देखा 2-on-1 में we are not forming those triangles. देखो Mo Salah came back to help out, so वो 2-on-1 जो है वो इतना enforce हो रहा है when they need. Defensively, I must say they're organized, but I don't know, man. I still feel like there's a goal in this game for us. Nkunku coming, guys. किसके लिए आएगा? Felix is not looking happy by his expression. Just reading expressions यहाँ पर. आपस की बात है, जब से आया तब से he's not looking happy. भाई या तो performance भी नहीं दिखाएगा तो फिर Felix, right? हाँ, I agree. कुछ उसका एटीट्यूड चल रहा है। बस एक गेम आया है उसका अच्छा, बस हाँ, but generally एटीट्यूड चल रहा है उसका। तो वो या तो ना कि एटीट्यूड में he plays better, he plays worse when he's showing attitude, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। नहीं, वो है इशू फेलिक्स का, we know that right from Atletico Madrid. वो थोड़ा sulking चल रही है, और वो basically I unless he changes something fast, I think ये गड़बड़ रहेगी। अब ये unnecessary push था बारिशिल द्वारा। Why did he push Nunez will obviously make the most out of it. उनकी शिटहाउजरी चल रही है वो कार्ड के चक्कर में। Madueke off as expected, so he's not taken the brave call. I think it's the right call. As much as Palmer has not been the best or anywhere close to it, he just needs 1 second, and people like Nkunku Palmer में है वो moment of brilliance चाहिए बस। वैसे भी set piece threat भी है, Palmer को रखे हैं अगर pitch पे। And we have to be realistic right now. We are looking at right now, we are chasing a draw right now as things stand. Obviously, I would like to say a win, but let's see what happens in this moment, because अभी free kick है उनके लिए, that's Liverpool, and we have to be very careful here. Remember, Madueke is a potential header of the ball, is not there on the pitch. Nkunku is come on. बोलते हैं when we kind of defend the set piece, we don't usually want to do a
Substitution देखते क्या और have good one near post, nicely done by Christopher Nkunku. I like that. Pulling for Sterling is missed in this kind of game. That's I thought Mudryk is missed, bro. मैं तो बोलना चाहूंगा अगर मुड्रिक होता ना बेंच पर 100% सैंचो के लिए मैं मुड्रिक को लाता. As much as Neto has been impressive as well, I thought this game was calling out for someone like Mikhailo Mudryk, able to make those runs in behind. ट्रेंड को वो टेस्ट किया ही नहीं गया, मतलब रन्स इन बिहाइंड वाला चीज ज्यादा टेस्ट नहीं किया गया, which is disappointing from Sancho. अरे भाई बॉल रख लो 2 मिनट के लिए. Keep giving the ball to them, man. Come on. Actually पिंग पोंग चल रही है. नहीं मगर बॉल उनके पास आ रहा है. They are all every ping pong में they get away with the ball. Why? Because they are good in the air, no? We are not good in the air. यार हम we are not good in the air, we are not good on the ground. Where are we good? हद हो गई है. Enzo, nicely done, bro. Nicely done. क्या करेगा भाई? काइसेडो भाई बंदा है. निकाल ले पास. काइसेडो nice. अरे भाई. Nice. Moses Caicedo, brilliant by Moses Caicedo. अरे nice. Come on. Oh yeah, should have taken his man on, man. Come on, bro. शी यार. Come on भाई, नेटो तू उसके लिए राइट साइड गया यार. इंटरेस्टिंग. एंकुंकू बेसिकली खेल रहा है लेफ्ट विंग. बैक पास नहीं चाहिए भाई मुझे. आई वांट डायरेक्ट फुटबॉल. Should we have tried Nkunku centrally and Palmer on the left wing? I thought I would have done that actually. I would have tried Palmer on the left, but I don't know. क्योंकि that would have opened, made the pitch wider. लो जी बॉल दे दिया उनको फिर से. Vega, not a great appearance as of now. Yellow card. ये Vega slow है वो तो we have to admit. he gave the ball away 3 times and now the next contact he gets a card. Recovery pace भी नहीं है ना, जैसे people give away the ball and you can kind of come back. He doesn't have that amount of recovery pace, I believe. So kind of expected था कि foul ही करेगा. But guys अभी भी है यार, 12-13 मिनट बाकी है. Come on, apart from stoppage time 12 मिनट है. We can still do it. We should do it. Come on Chelsea. McAllister आ रहा है. They are getting more legs in midfield, guys. चलो, maybe we'll put our lucky background. I don't know if I should wear my lucky cap as well. Superstition है नहीं, but let's lucky try. Lucky cap, lucky everything. Vega, nice physicality shown. They can throw in for Liverpool. चलो मैकएलिस्टर किसके लिए आएगा? मैकएलिस्टर. जो गोमेज भी आ रहा है. Pretty sure यहाँ पर साला will be off. एक अटैकर को लेंगे, I'm assuming, considering midweek game उनका. Or is it too risky? Oh no bro, we can't give away balls like this. We just cannot give away balls like this यार. हम बहुत ही unfortunate मैं कह रहा हूँ कि if you count the turnovers, we have had double-digit turnovers. No way. McAllister and Enzo, yeah, that's a good battle. Right now, all I care about is Chelsea scoring, man. सच में बोलो तो Tiger Beast. And of course, not conceding. That helps. लेकिन अभी लिवरपूल ही कंट्रोल कर रही है गेम. Meanwhile, शॉट आएगा. चलो भाई, luckily straight to Sanchez. How are we allowing those shots? बोल के थक गए Mikhail. Nkunku, nicely done. That's a card, bro. That's a clear card, bro. Konate gets a card. In fact, it was a very good card taken by Konate. Nkunku was almost through, bro. 2-1 हो सकता था. Very important foul by Konate. But it's understandable at 79 minutes. We were getting these cards in the first 10 minutes. So थोड़ा सा pace of the game भी देखनी होती है. ठीक है, कोई नहीं. It was important to get a foul in. Curtis Jones going off. भाई Curtis Jones मतलब arguably अभी तक man of the match. The guy who actually won the penalty. The guy who actually scored. Yeah, probably Curtis Jones, I think, has to take that. Can't argue. I know Trent, Salah obviously is very close, but वो दोनों Curtis Jones. भाई अभी हमने मैच जीतना है. कोई मैन ऑफ द मैच नहीं दे रहे हम किसी को. नहीं मैन ऑफ द मैच इनको दे दो, पॉइंट्स हमें दे दो. हाँ चलो इतना कर लेते हैं. We are losing because of individual faults, बोल रहे गौरव.
No, we're giving the ball Colwell away and too Gusto. easily. We're not keeping the ball. और फिर जहाँ पे हमें बॉल मिलता है, we start back passing instead of moving, playing direct. तो वो Yeah, थोड़ा सा मतलब I wasteful भी है. think वो final third में ना, it was important basically for someone to kind of just be a little bit calmer. हम ट्राई बहुत चीज किए थे आज, लेकिन अभी तक, लेकिन आई बिलीव one problem is that we are final third में पैनिक हो जा रहे हैं when we get the ball. थर्ड भी नहीं था यार, ये तो हाफ लाइन थी. हाफ लाइन से पैनिक कर गया. कौन था ये, वेगा था या लाविया था? लाविया तो चला गया. ये लाविया तो सब ऑफ हो गया है. Probably must be Vega itself. वेगा की डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी नहीं थी आज. But Gomez coming for Trent is an interesting substitution, by the way. Nicely done, Game. बाडिया. शाबाश. सैंचेज ने फिर अंडर प्रेशर. चलो कैसेडो को दे ना भाई. सैंचेज टू कॉलवेल टू वेगा. भाई जुर्माना होना चाहिए फॉर एनी प्लेयर टू पास द बॉल टू सैंचेज. वहां पे प्लेयर को जुर्माना होना चाहिए. Caicedo was he had the space and he made a run. I'm surprised, but कोई जरूरत नहीं है. We have kept the ball just about. barely kept it in. McAllister gets यार us ये a that's a win. foul, man. That's a card. Gusto, Come on, man. Kill the guy, man. Come on, that's a card. McAllister lucky not to get a yellow card also. Yeah, blatant foul, cynical foul tha. It was a card. Yeah, it was cynical. Definitely cynical. It's a similar moment आप बोल सकते हो. पुश नहीं था लिटरली, लेकिन पैर डाला भाई क्लियरली. जो एंकुंकू ने किया था अगेंस्ट कोनाटे, वही मोमेंट ऑन द राइट हैंड साइड था ऑलमोस्ट. लेकिन गुस्तो भाई इज लुकिंग इंजर्ड मैन. शिट मैन, यू आल्सो subbed off Reece James. Look at that. Caicedo will play right back अभी क्या, बाय चांस अगर होता है तो. हमने 5 सब्स्टिट्यूशंस कर दिए बाय द वे. 10 man. चलो भाई, गई बस पानी में. वेगा सेंटर हाफ खेलेगा बस. 3 द बैक. वेगा, कॉलवेल और अपना बाडेशिल. That is how we'll go. Looks like we can't even make a substitution, bro. What is this? इंजी सब्स्टिट्यूशन होती थी मेरे ख्याल में अलाउड, बट फॉर हाँ? गोलीज कंकशन के लिए अलाउ है एक और. कंकशन वाली होती है. तो कंकशन पैर में तो नहीं हो सकती. पकड़ ले सर, ओए पकड़ ले सर. यार आई स्टिल थिंक दिस वाज वैसे ऑफसाइड गोल. पता नहीं. नहीं रन देखो आप जब वो किक किया था ना, आई थॉट इट्स फेयर. लेकिन शुड सैंचेज हैव कम आउट लिटिल अर्लियर, मे बी वन कैन आर्ग्यू दैट आल्सो. लेकिन आई थिंक गुस्तो का ही गलती था. आई डोंट थिंक यहां पर सैंचेज दे वर प्लेइंग द ऑफसाइड ट्रैप. एवरीबॉडी वाज लैगिंग. I never imagined Curtis Jones would have been the winner. We have 6 more minutes and stoppage time hoga 6 minutes at least, if not more. Come on Chelsea. सेकंड हाफ शुरू बहुत अच्छा किए थे. आई डोंट नो दैट मोमेंट दैट गोल केम ना, थोड़ा फ्लैट हो गया. अगेन आई लाइक द सब्स्टिट्यूशंस, लेकिन वही है, वन कैन आर्ग्यू व्हाई डिडंट वी स्टार्ट दैट वे, क्योंकि हमें पता था गैप इन बिहाइंड, स्पेस इन बिहाइंड मिलेगा टू सम एक्सटेंट. सेल सैंचेज भाई पुतिन बोल रहे हैं नॉट अ लेवल. अभी हॉट टेक. ये हॉट टेक कॉर्नर. अभी तो खरीदा भी नहीं है सैंचेज अभी से. अच्छा नहीं वो ओके सॉरी, सांचो नहीं सैंचेज. हाँ सैंचेज का तो यार वो एक नया गोली आ रहा है, वो सुना है. ही इज गुड, रियली टॉल गाय. कीबो कोटवा टाइप्स ना, पेंडर्स. हाँ कोई रीजन टाइप कॉर्नर है. जीता है एंकुंकू. नाइस प्रेसिंग ब्रो. Nice जीके pressing. नाउ, जीके व्हाट्सअप. Come on, quickly take the corner. Come on man, come on Chelsea. Badia Sheila to score the equalizer. शॉर्ट कॉर्नर लेंगे लगता है. अरे हमने डायरेक्ट कॉर्नर ट्राई यार ज़ाया क्यों करते हो कॉर्नर को भाई? लंबे बंदे देख. स्पेशली जब वेगा और बाडिशल है, व्हिच वाज सरप्राइजिंग. लेकिन Yeah. गुस्तो का क्रॉस है फार पोस्ट में. अगेन बाय मस्ट से मैन, दे आर समथिंग मैन एल्स इन हेडर्स. लिवरपूल आर समथिंग एल्स इन हेडर्स ब्रो.
I'm not sure Jurgen is far Generally, better. you know, they have the edge in these one-on-one 50-50 situations. थोड़े से ना वो they play a little more. Frustration, Mikhail. Frustration. It seems like you know they play calmer या have more control in those situations. हम थोड़े से पता नहीं घबराए हुए होते हैं. Anyways, still time मतलब to. ऐसा भी नहीं है ना कि अपना XG सब something like 5 ऐसा. I'm just अरे saying. भाई, it's like I think with extra time we have 10 minutes from here. We need to score a goal. There is enough time to score a goal. देखो वापस से क्लियरेंस आ रहा है हम लोग का. We need to be little bit smarter, man. थोड़ा बहुत बड़े चले भाई. मैं सोच डर गया, लगता है मुझे लगा देने वाला है वो भाई. सैंचेज हार्ट अटैक का दूसरा नाम. अरे भाई, अरे भाई नो, नहीं नहीं बच गए मिडफील्ड में. जस्ट अबाउट नाइसली अभी भी चल रहे हैं, अभी भी चल रहा है, वही मोसेस चल रहा है. काइसेडो ओपी मैन इन द चैट. बहुत ही अच्छा टर्न था लाविया टाइप्स काइसेडो का, हु इज वेयरिंग द कैप्टन आर्मबैंड नाउ. अभी भी चल रही है, वही सिचुएशन चल रही है अभी तक. वी आर नॉट आउट ऑफ डेंजर. Just dilly dallying in front of our own. Our defense box. is not good enough. Yes, I've been saying it. Our defense is not good enough. That's true. Defense is not good enough. We're not good in the air. और क्या था? यार, Nkunku giving away a foul. Liverpool भाई, the other team to beat, bro. I have to say. Time wasting. यहाँ से time wasting शुरू हो जाएगी. They're very smart, यार. They're very smart. आप देखो ना, मतलब इस situation में our boys need to understand that the game is going away. We need to step it up, not slow it down. भाई यार above the top pass जो आ रहा है ना, तब से एक भी चला नहीं है भाई. एक भी चला नहीं है. You know it's not going to work. Pass success rate हमारा 50% भी नहीं होगा इस गेम में. Again, Shubhrang जो बोल रहे हैं, I'm so surprised we haven't even tried that. It's the last couple of minutes in normal time. Palmer को लेफ्ट खेल सकता है भाई. लेफ्ट की make the pitch wide for once. Let's try that at least. Gomez versus Palmer, Englishman versus Englishman. यहाँ पर वेगा हेडर डायरेक्टली फॉलिंग टू Szoboszlai. वेगा ने मेरे ख्याल में कोई ऐसा बॉल नहीं है जो किसी और को ना दिया हो. Vega had a bad appearance. Every ball he has touched has gone to the opposition. वही है ना. अगर मुड्रिक होता गौरव, तो शायद मुड्रिक would have been an option in this game. लेकिन मुड्रिक, people said that he got a knock or something. Whatever. स्ट्राइकर, आई डोंट थिंक स्ट्राइकर की बात है मेरे भाई. आई थिंक द पास बिफोर द स्ट्राइकर वाला चीज ही नहीं है आज तो ऐसे नहीं बोल रहे कि स्ट्राइकर इज बेसिकली यू नो मिस चांसेस. आई डोंट थिंक हम जैक्सन को बोल सकते मिस चांसेस, बट वाज ही इन्वॉल्वड इन द गेम इनफ? नो. एंड द रीजन इज व्हाई, बिकॉज द बिल्डअप जो बंदा है मेन अपना, पामर, इज नॉट हैड अ गुड गेम. दैट्स द फैक्ट. कांट फाइट दैट, राइट मेरे भाई. तो एंड सैंचो द सेम, राइट. मडवेके प्रोबेबली फ्रंट फोर में वाज द ओनली ब्राइट स्पॉट आज. यहाँ पर लड़ाई करने में टाइम कर रहा है, वेस्ट कर रहा है. भाई तेरे को फैंस लव यू ब्रो. दिस इज नॉट द टाइम टू डू दैट. लिवरपूल आर हैप्पी टू वेस्ट टाइम. You don't waste time. Interesting, Vega, Basel player, ex-Basel taking on ex-Basel Salah, almost holding him. बस पैनिक चल रहा है हमारा. तो चलो शॉट अलाउ करेंगे क्या? लकीली नहीं. एंजो का इम्पैक्ट अच्छा था, लेकिन एंजो भी लास्ट 10 मिनट में ज्यादा दिखा नहीं है ऑनेस्टली. अरे नहीं यार, काइसेडो, ग्रावेनबर्ग, वेल डन इस मोमेंट. नो वे ब्रो. No, MJ, I'm not going to buy that. Sorry, bro. What are you talking? Man? मेरे भाई, what are you talking, MJ? Chill, bro. Chill. I know, भावना में भेजा आते अपन. Chill, bro. Palmer has literally scored against every team. What are we talking? पामर ने लास्ट 15 महीनों में आर्सेनल, मैन सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, आर्सेनल कब, पीपल रिमेंबर, फॉर सिटी व्हेन जस्ट बिफोर मूविंग टू चेल्सी स्कोर्ड. He has scored multiple goals, bro. Palmer has had a bad day. Simple.
और they have done a good job on him. आप ऐसे बोल सकते हो, physicality is not his thing. और पैनिक स्टेशंस हम एज अ फॉरवर्ड लाइन हिट किए हैं फॉर व्हाटएवर रीजन. 7 मिनट्स ऑफ स्टॉपेज टाइम है, लेकिन पहला मिनट ऑलमोस्ट हो गया है. बारिशेर वेल डन. चलो गोल किक है गाइस. कम ऑन चेल्सी, कम ऑन चेल्सी. लास्ट 6 मिनट्स गाइस, दिस इज वेयर द एनर्जी इज नीडेड गाइस. दिस इज इट. कांट लूज दिस गेम प्लीज. हारो मत भाई, हारो मत. हाई टाइम दैट वी शुड हैव वन एट एनफील्ड, बट ठीक है, एटलीस्ट हारो मत प्लीज. व्हाटएवर बीट. Easy for me to say. Vega, nice attempt. I like that attempt by Vega, लेकिन वापस से बॉल दे दिया rather than doing anything about it. Enzo did well on the follow up though. Palmer beats his man clearly. That's a block and a half. McAllister अभी येलो कार्ड नहीं मिलेगा भाई. पहले येलो कार्ड मिलना था इसको. This could have been a second yellow for all we know, but not going to stay there. MJ, आप मैच देखते हो ना मेरे भाई, मैच देखते हो, एंजॉय करें. He scored a worldie. Yes, it was a charity shield, but he scored a worldie. He scored a last-minute deflected goal against Manchester United. Yes, but come on, bro. Not going to take that thing about Palmer. I'm telling you, he's not a good game. Palmer has been one of the best players in the Premier League, and I don't think anyone is denying that. Sorry, not been in the game today. So Palmer's performance does not make or break the game. He was not in critical moments. Critical moments में जो players थे, वो जैक्सन थे. अरे भाई, it was a header, free one. वेगा का चांस था guys. Should have headed it down. Should have got that goal. क्या क्लियरेंस की है इसने? What did he do? Should have headed it down. क्या कर रहा था बंदा? ग्लास करने की कोशिश कर रहा था. कुछ नहीं है बंदा obviously. He knows that he should have done better. Not even the little horse, man. Come on, man. Chelsea. Carefree. Show it. You know what we are. दिखाओ भाई. पिंग पोंग मत खेलो. लिवरपूल ही जीतेगी. Nice from Bardeshil. I like it. Colville. Nice. Enzo. Keep it on the ground. नाइस जैक्सन भाई. ब्रिलियंट स्टफ भाई. निकोलस जैक्सन. नाइस टर्न. वेगा क्या करेगा भाई? कुछ कर सकता है क्या वेगा? नहीं, आई डोंट. अरे भाई, पुश फॉरवर्ड विद द बॉल. चलो कोई नहीं, एटलीस्ट थ्रो इन जीता है. यस, अनमोलदीप क्या कर सकते हैं उसका. थ्रो इन जीता. लास्ट के 3.5 मिनट है गाइस. दिस इज इट. कम ऑन यू ब्लूज. चलो क्विक पासिंग. लेट्स गो. बॉल को डेंजरस एरियाज में ले जाके एटलीस्ट गेट अ फाउल. ट्राई टू अर्न अ फाउल एटलीस्ट, मैन. या पामर पुटिंग इन. नेटो को क्रॉस आएगा शायद. नेटो को क्रॉस आया. कम ऑन. फार पोस्ट में था नहीं. एंकुंकू. नो वे मैन. वेरी या. थैंक यू हर्षित ब्रो, थैंक यू. मैं ये मिस कर दिया था भाई. एमजे एक कम्युनिटी शील्ड फाइनल, एक यूरो फाइनल, यूरोज फाइनल, एक मैनचेस्टर यूनाइटेड 4-3 जब इतने सालों से हम जीते नहीं थे एक्सेट्रा. नॉट गोइंग सिटिंग हियर ट्राइंग टू प्रेज हिम, ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हिम, लेकिन पामर हैज हैड अ बैड डे. सिंपल. Does not mean that he does not perform against big team. Not going to take that shit, bro. Sorry. Yeah, it's not like we were trying to play through Palmer either. So Palmer was not involved in enough of the game to say that Palmer's bad game is the reason for our situation right now. Palmer was just out of the game. He was not really in the game. It's not कि वो offside नहीं था क्या? पता नहीं क्या था, लेकिन good tackle, good clearance. Offside up दिया. चलो offside था. चलो guys, last couple of minutes. This is it. Come on. Everybody गोली भी अब उनके हाथ में होना चाहिए. Everybody up front. हाँ, अभी हाईलाइन चाहिए. अभी सबसे हाईलाइन अभी चाहिए. Come on, get the ball. Nice. Ooh, what an interception by Gomez, bro. What an interception. बहुत ही important interception था in my opinion. काइसेडो का बहुत ही बढ़िया अटेम्प्ट था वो. और यहाँ पर उनका गोल आ सकता है on the counter, over the top. ये देखो ना, this is called a well drilled team. Liverpool are looking the team to beat. I'm honestly telling you. हम लोग मैन सिटी से आज भी खेले. I know they are brilliant and they are City. वो जैसे ही हमारा प्लेयर स्टेप अप होता है, वो उसके पीछे बॉल डाल देते हैं एकदम. गोल आएगा. चलो. और बच गया यार.
Luis Diaz, man, what footwork, man, what footwork. How was he able to get the shot off? इतने सारे Mikhail, लोग ये वाला चीज सैंचो एक दफा भी किया. नहीं That's what I'm saying. You got to be quick feet, bro. नहीं मगर सैंचो इस यहाँ तक पहुंचा ही नहीं कभी. ये तो इतना आगे आ गया था. He was in the box. वो सैंचो तो बॉक्स के बाहर ही गिर जाता था. गिर तो नहीं रहा था लेकिन 2-on-1 Come हो on, जाता man. था. He You would can't back be pass. losing the ball, man. Abhi. No way we have lost the ball in the last minute as well. I can't believe it. Yeah, नहीं professionally managed game. Last 50 seconds, guys. Come on, just lump hoik it up. forward. Center back, go up. Hoik it. Hail Mary and that's What it. are you? Everybody What are run. you? What are we Everybody doing? run. No way, Palmer, bro. No नहीं, but- way. That game sense नहीं है यार. Game sense नहीं है यार. भाई extra seconds दे ना. भाई यहाँ पर हमको मिला फ्री किक. For 20 seconds left, guys. 20. Earnest Lord, नाच ले. कितना नाच ले. नाच ले. पैसा मिलेगा तेरे को. नाच ले मेरे बुलबुल. अरे भाई गोल की तरफ मारो बॉल. What are you doing passing the भाई, ball around? कोई बोलो भाई, टाइम होने वाला है. एंकुंकू को रहना चाहिए बॉक्स में. कहाँ है वो यार? एंकुंकू को Just रहना cross it चाहिए. in. चलो नेटो. नाइस. नेटो को क्रॉस है. नो कम ऑन, गोल आना चाहिए. कम ऑन. गुस्तो का डिफिकल्ट था बट ही गॉट हिज मैन. और यहाँ फुल टाइम होने वाला है. हो जाएगा. हो गया. Chelsea has lost the match. Have to give it up to Liverpool, man. It was boys against men. Have to be honest. As much as it ऐसा नहीं है कि basically, you know, Putin couldn't control his anger. देखो, the thing is half chances at best. नहीं, the thing is कि we didn't do enough with our possession. They did barely enough with their possession. वो एक moment था that separates us from them, जिसमें he scored the winning goal actually. लेकिन apart from that, ठीक है, they look better in every situation, but on as far as the scoreline goes and as far as the what matters went, I think it was a closely fought game. ठीक है, they you can tell why they are contenders this year. You can tell what the slot is doing. I think we were just nervous the whole game. How many yellow cards did we get in the first half? It was obnoxious. I think 4 yellow cards we got in the first half, early in the first half, not even in like close to half time. तो थोड़ा सा वो Ben versus Boys. Sanchez का yellow card cancel हो गया था, but I hear you exactly what you're saying. We were playing nervous with nerves. थोड़ा सा back line हमारी was I don't know, making mistakes, but wasteful थे हम. We gave the ball away so many times. Like I would like to see the stat of how many times we directly gave them the ball when we had possession. How many? I think it was like 15 times at least in the game. या तो ओवर द टॉप पास से, या तो हेवी टच से, या बेसिकली वो पिंग पोंग में बेसिकली वी हैव लॉस्ट द सेकंड बॉल. यू राइट. तो वो they always seem to come away with the ball in those situations. तो या तो हमारे पास बंदे कम थे in the where it mattered, या they were double man marking या zonal marking better. Generally speaking, the thing is, here's the thing. Long and short of it is that we knew this was a possibility. I think the score line is 2-1. It's not so bad. 4-1 हार चुके हैं इनसे not too long ago. Actually, in the same calendar year, I think. So it's not that bad a performance. We have only ourselves to blame because we didn't do enough with the ball when we had the ball. एक दो अच्छे chances थे to score the header. When कुकू का भी अभी जो chance आया था, it was, you know, there was a half a chance there. वो बड़ा अच्छा cross था नेटो का. But I'm okay with it because I understand that our project is nowhere near where Liverpool project is right now. They have a very mature team. Hamari team is not got the same maturity in it. So I think we shouldn't be too despondent. I wanted a draw at least. वो थोड़ा सा मैं disappointed. हाँ भाई, मतलब this is not feeling good. लेकिन you have to give credit. यहाँ पर थोड़ा comments ले लेते हैं. Devesh Abure, you should have started with Enzo today. I think he could do with those long balls, and Neto could have started. Neto was actually a better call. I thought Sancho had a stinker. I'll be very honest. I am very harsh, I know. और I know कि कहीं ना कहीं वैसा गेम नहीं था जहां पर we have been totally beaten etc. and Sancho could have had a penalty वाला moment भी था. I get that totally. But I would like to stick to my opinion. Yes,
The penalty for Liverpool was soft, लेकिन we provided them with 2 soft moments versus Liverpool providing us with 1 soft moment. तो कहीं ना कहीं if I'm you're sitting here saying that Sancho के against robbery हुई है, I won't be fair. And यहाँ पर मैं I am generally calling out referees and they need to be called out, but I don't think वो है. Apart from that moment, Sancho was very predictable, I thought. और वहीं पर yes, we made the change at halftime. I like that. It's not too late. लेकिन it was almost a case of saying कि maybe just it was written on the wall कि against Trent, who had a fantastic game, mind you, you had to basically had someone getting in behind. लेकिन टाइगर भी यहाँ बोल रहे हैं उनका डिफेंस वर्सेस हमारा डिफेंस was a match from the start and they were better simple, but it's okay. Very good point. Snowson, a Liverpool fan in the chat, Mikhail, and I think he has put a great point in the chat. As much as I would love this to be untrue, but this is absolutely true. आप देख रहे हो जो लिवरपूल का आप देख रहे थे ना, सेकंड गियर और फोर्थ गियर के बीच में उनका कुछ नहीं था. उनका यही था कि भाई हमें बेसिकली अपना शेप रखना है. And they knew they have the pass in them. जो देवेश has the point in the chat कि maybe Enzo could have opened them up. Like उनके लिए Trent open up कर रहा था. Curtis Jones was opening up. Yeah, no, maybe. well, point well made. I think even the commentators were saying Liverpool are more than happy giving the ball to Chelsea to make the mistake and they were making sure that they were looking for the mistakes. And to be honest, we got lucky because we gave the ball away in dangerous situations a few times in the first half, where I wouldn't have been surprised if they were those situations resulted in a goal. The actual goals were they were disappointing. I think we were caught napping after scoring our goal for their goal. Offside trap tha. It didn't work well. I don't know who was supposed to mark the run, lekin of course it didn't happen. Again, the margins weren't as large necessarily in hindsight, lekin generally speaking, the common theme was we were not able to put 3-4 passes together with any clear threat. Or but we did get the ball into dangerous areas eventually, multiple times in the first half, multiple times in the second half, but they kind of fizzled out. I don't think we created clear cut chances apart from the header that Vega headed over. I don't think as such strong opportunity. Palmer का एक half chance आप बोल सकते हो. Again, Palmer का भी अच्छा chance था. It went over. But at least that was a shot that he attempted. Vega ka, I think it was a miss hit. Like he should have headed it down maybe instead of heading it up. But ये आपकी young team है. These are the things we have to learn from. So hopefully. Malo Gusto last moment. Would you say that's actually a chance missed? Malo Gusto wala nahi yaar, nahi. I don't think so. Too much. Congrats to Liverpool fans by Doug in the house. Too much to do there. By the way, it was I think tactically a brilliant game to watch. That I agree. Tactically, it was a very chess match tha, for sure, but chess match mein I think somehow they were more composed throughout, and somehow they were able to come away with the ball. So I have to hand it to their organization. They were better organized in those situations, 50-50 situations. I think most of them, 3/4 of the situations where they were 50-50 situations, second ball, third ball, they would also win. So generally, I don't know, maybe that's just Liverpool playing at home and they had the confidence there, but I think they were more settled. In defensive organization, they were much more settled. I think वो एक situation अभी second half में थी जहाँ पे 2-on-1 था against Neto, I think, and it was Mo Salah actually that was doing the second man, closing him down all the way back in their own half. So that's the organization that mature teams have. Mo Salah, is arguably the best attacker on the right side. He's not the player he was, but he's still effective. But he's also doing the hard work to come in behind. Actually, he didn't even go off. He played the whole game. So that tells you, what it means to them to see it through. But generally speaking, I think takeaway यही है कि they are a more mature team, भाई. उनके tactics are more mature. उनकी execution is more mature. We were trying to play at their level. We were not able to play at their level. I think थोड़ा सा हमारा lost opportunity है कि we should have tried to play our game a little more. हमने नहीं किया. We didn't try to put in the ball in behind or over to make that run. Jackson was trying to make the run, but nobody was necessarily passing the ball to him. आपने point यही raise किया था कि who's going to distribute the ball? Is it going to be Colwell? Colwell didn't really distribute the ball today. Did James? Maybe once or twice, but not regularly. So वो हमारा focal point जो है ना, who are we playing through? वो I think question mark ही था. Lavia had some good moments,
but eventually he came off. I think they were trying to protect him too. Zyada over हाँ expose मतलब वो नहीं I कर रहे. think it was already planned वाला चीज But है I वो think तो. that's the only positive. I think two positives today: Lavia and Reece James. I think they both came in. They had decent performances. I saw some positives. I saw some things that we have missed, and hopefully they can continue to become stronger and feature more and more in the rest of the games. आगे हमारा month बहुत busy है. We are into a very busy run of games. इस वक्त Yeah, table and situation was क्या है भाई? Liverpool. What is the table situation after today? I don't भाई think we lost that's the ground. thing. I was I not think wanting to we're see. still seventh. I think sixth or seventh. But वही है ना अब वो Nottingham Forest and Crystal Palace games will come back biting. What is That's the main issue. But again, भाई chat भाई सब लोग like button दबा दीजिए. Definitely helps as same time आप लोग बोलिए. Curtis Jones by far easy man of the match. I don't think there's much conversation वहाँ पर. Definitely he had the major moments in the game. Positives for me: Neto, Reece James, Lavia, Shubrang बोल रहे हैं. Prabha बोल रहे हैं, but was very happy to see James. The guy kind of makes our defense calm. Tiger Beast, I was a little bit not so impressed with Tosin. I thought he would bring that calm. I thought he could have been better in that first half, especially. But ठीक है, it is what it is. Badishal, on the other hand, came on and I thought he was not too bad, if I'm being very honest. But then you have match was at Anfield and उस हिसाब से ठीक खेले. But वही ना ठीक खेलना is something that we want to get over because देखो we have been tested technically by Man City and Liverpool in big games and both the times we have lost. Liverpool have been tested away at San Siro. Yes, it is away. That's why मैं उसको include कर रहा हूँ. They have been tested against Manchester United technically and against us. जब हमारे One can argue अटैकर्स that के they have पास passed बॉल the आ रहा test. था जब हमारे अटैकर्स के पास बॉल आ रहा था तो दे वर बीइंग प्रेशर्ड राइट अवे. जब इनके अटैकर्स के पास बॉल आता था तो दे वर नॉट अंडर एज मच प्रेशर, so they were able to create more threat from their on goals. And the second thing जो पहले अभी बोले कि they were willing to give us the ball and let us make the mistake for them to get the ball. तो ये दो चीजें थी कि we kind of played to their plan. I don't know what we could have done because every time they had the ball, they somehow were able to create threat from it. So we didn't want to give them the ball either. But overall, I think tactically they outplayed us today because whatever we tried, we were not able to dominate. I think first half there was a period where we dominated for about 10 minutes. Like, Correct. but Between the that was 10th and the about 20th minute, हमने dominate किया था properly. but that was about it. उसके बाद whatever we were trying, we were just trying to stay in the game, catching up. और second half में वो 45th to 50th minute के बीच में I thought we started off the second half well. I thought. हाँ, but लेकिन वही है. yeah, so it's a bit of a. I think we don't need to be too harsh. This was always going to be a tough game. It was always going to be a hard result to come away with points from Liverpool, especially right now. Liverpool in this form right now, look, they're top of the league now. They're clear And number one I'm now. sticking with the prediction. पता नहीं Mikhail, I know it's a big call, but I thought Liverpool looked the team to beat. You know why? क्योंकि मेरे ख्याल से defensive जो structure लाया ना slot ने, I think that's not spoken about 100% enough. भाई. I'm telling you, I was shocked when I in the preview. I don't follow all the other teams. I'm क्योंकि not. Klopp के अंदर defensively they were always So Klopp's there to be taken. Liverpool, you knew that you would get some goals. The question was, can you get as many as they would get? With this, you could argue that this is how Chelsea are these days. We'll score a few goals, but you might score as many and more. So I think now Liverpool having the best or one of the best defenses organizationally, allowing the least amount of goals against themselves, like they might be unstoppable if they can continue to play like this. भाई Chelsea didn't play Palmer चीज मुझे पता था एक कमेंट फाइनली आएगा. I think there you go. But I think we need to expect this. आपको याद होगा कि Hazard used to get marked out of games. Yeah, So I think, absolutely. and you could say that today Liverpool showed us what you're supposed to do when everybody is marking everybody else. Somebody like ये जो आपका जो भी आज man of the match था, what's his name? Jones. Curtis Jones. Curtis Jones, sir. Thank you. So Curtis Jones, there's always a Curtis Jones. ये Barcelona वाली vibe थी आज कि you're marking all the important people except the one that gets out through the middle, walks through the middle. So when Palmer's being marked, double marked, triple marked,
how are we taking advantage of that? So I think Palmer was nowhere in important areas. He was trying to help with the build-up play maybe, like, and he was never in dangerous areas on the pitch. Apart from that one shot on goal, I don't think he was ever in a situation where putting one more man on him or anything would change the game necessarily. And he was. I'm disappointed. मैं ऐसे वैसे disappointed हूँ. Why did not we try Palmer in a different role? We did not even try Palmer को. That's what I'm saying. It's not working. You have to switch it up. As Maresca's, I would say criticism अगर कह लो कि when Palmer's not working, whatever role you gave him, and you're chasing the game, you have to try something different maybe. वो किया उसने try, लेकिन I don't think we didn't have enough ball time on the ball by the time he went out wide and they tried something different. उस वक्त भी I think the right move would have been कि आप जैक्सन को on the left डालते and कुंकू को बीच में रखते. You said it yourself. That's what the danger move would have been. But we didn't do it, and as a result, I think we isolated ही रहे up top. Nothing really clicked. You could you were kind of missing bite. Or we could have just like basically. मैं ये भी थोड़ा सरप्राइज हूँ. Yes, I understand कि you want to keep your shape. लेकिन भाई आप लास्ट के 10 मिनट में why aren't we seeing those days, Mikhail? I know we are still not even the little horse. कि just ask your center back to go and play center forward, bro. ये सब चीज क्यों नहीं हो रहा? Why aren't we having that mindset? I think even I agree with you, but I think beyond that, for such games where our game plan is not working, we need to have more threat from set pieces. We have to have more threat from corners. We have to have more threat from Sorry to cut you, kicks. Mikhail, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ ना. देखो जब आप substitutions करते हो, आप लाते हो वेगा को, आप लाते हो बाडेशिल को. These are two people who are known to be good on set pieces, very unlike Chelsea. और फिर आप short corner खेल रहे हो. And then you're taking short corners. So exactly, yeah. I'm with you. That's what I'm saying. That these are the areas. That if you cannot win one way, you have to have that other way of winning. वो नहीं है हमारे में अभी नहीं है. I'm saying this in the context of we are a growing team. We have to improve in areas. So हमारा set piece game, especially when Enzo is on the ball, so I don't know उसकी frequency किधर होती है, because he's always making the wrong on the corners. He's not been impressive. I don't know why we give him the corner to hit. Well, he's not good with the. अभी तक तो मुझे पिछले 2-3 games Actually, our best corner taker is surprisingly Mudryk and Reece James, apart from Palmer, right? लेकिन वो ये क्योंकि वो लोग starters नहीं है ना, तो it has been Enzo. That's how it is. मुझे तो ये लगता है कहीं ना कहीं. Yeah, again, I don't know. Time will tell. Let's not get too. I think the idea is to take away the areas that we need to improve on and focus on the next game now. Tika, this result was tough, but here the point is that there are 4 games that are going to be the toughest games in the season for us: Man City and Liverpool. This was one of them, so it's not the end of the world. If we weren't able to get it done, let's try to do better in the next game. That's more important. Kumar Bhargav Kalita, I don't know if I'm pronouncing your name right. First of all, thank you for coming to our channel. Always the fan channel for all to see. ये चीज ना हमारे गेस्ट पैनल को मैं छोड़ता हूँ क्योंकि मैं बोलूंगा तो आप बोलोगे भाई बंदा बोलता है बहुत. मिकाइल, आप प्लीज एड्रेस करो भाई. मतलब did Maresca get it totally wrong tactically? मतलब I have to question that is what the user is saying. I think I am reminded of a comment before the game yesterday or the day before yesterday in one of the chats. If we don't even start Enzo, we are blinked first. So that happened today. If we didn't even start him, that means we were already thinking he's not going to be good enough. Let's try to make a change. And Lavia ko le aaye, who hasn't played a game. I'm not saying Lavia didn't have a good game, but it just showed that Maresca was on the back foot from the start. Then you look behind him, the whole back line was experimental. Aapke dono fullbacks were experimental basically because Reece James has not had a start in I don't know how long, and he's been injured and coming back, etc., etc. Gusto playing on left was another one. Tosin playing with Levi Colwill, both having not good games. So I think they are, and this continues to be the theme. These are the areas where Chelsea still has a lot of question marks. We've spent a lot of money buying a lot of players, but aapki midfield mein we're still a player short probably, and in the back line we're still doing patchwork fixes. आज इसको वहाँ पे खिला लो, आज इसको वहाँ पे खिला लो. अभी तक वही थीम चल रही है हमारी, और ये हमारी थीम पिछले 3-4 सालों से चल रही है. ये बहुत अच्छा कमेंट लगा. अब देखो अमित बोल रहे हैं ओडेगार्ड रिलीज, मतलब साका उसको फ्री करता है. बर्नार्डो डज दैट टू सेविनियो फॉर एग्जांपल.
in the Chelsea setup, now we probably need someone in that setup probably who's able to do that. That could be someone who's making runs in And behind. conversely, let's say he's not able to. Somebody's not relieving Palmer. Is Palmer relieving anybody? Then at least can somebody else make the run? बट वही है ना, वहां पर आप बोल सकते हो मे बी दैट इज वेयर वी शुड हैव ब्रॉट ऑन एंजो फर्नांडेज अर्लियर, क्योंकि एंजो फर्नांडेज कुड हैव टेकन दैट रोल और पामर हिमसेल्फ वुड हैव मेड दिस रन. Generally speaking, I will give my tip of the hat to Arne Slot. I think he won the battle of the managers today. मिकाइल और चैट, मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था अभी. सोशल मीडिया में सर्टेन इन द नोज, अगेन इट्स देयर ओपिनियन, एब्सोल्युटली रिस्पेक्ट दैट. A lot of us अपने Chelsea in the nose are saying that we did not deserve to lose the game. Do you agree? I think we would have been lucky to have drawn the game. Yeah, And I agree with you. I don't think we deserved anything because we had enough silly moments in the game to really be frustrated as an audience, as fans. You know, we were making too many mistakes, and tactically even we were not dominating Liverpool as much as they dominated us in certain portions of the game and certain patterns of play. They always had the answer. So I think generally speaking, I don't think we are Blues and we support our team, but we have to call a spade a spade. I don't have any issues with that because next game we'll go out and we'll win it. No worries, guys. And individual mistakes are part of our team. If you're going to lose a game to the leader of the Premier League, it's not the worst thing that happens, right? And keep it in mind, it was not a 4-1 score line, guys. It was not a 4-1 score line. It was a 2-1. We could have had a draw today. I don't know where the goal would have come from, but we could have had a draw today. The game was that close. थोड़ा सा मैंने मैच से पहले भी कहा था कि Liverpool show up more for the occasion against Chelsea. They kind of, you can see that they want the win. You could see that we didn't really have that next gear. We didn't have that intent showing as a team. We were more focused on कि यार गलती नहीं करनी, पास नहीं देना किसी को, but we were still making क्योंकि रन मार ही नहीं रहा था ना. आप देखो ना विंग्स पर सैंचो और मडवेके, मडवेके वाज फार बेटर, लेकिन रन इन बिहाइंड वाला चीज ना, फर्स्ट अप जो होता है ना, अब लोग बोल रहे हैं यहाँ पर एंजो को शुरू करना चाहिए था ना. बाय द वे चिलवेल वाला मैं पॉइंट अग्री करता हूँ राहुल से, लेकिन अगर देखो वेगा को मैं अगेन आई डोंट थिंक उसने प्रूव किया कि ही शुड हैव स्टार्टेड एनीवे, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली अगर आप एंजो को शुरू करते ना, देखो एंजो वर्क्स वेल व्हेन यू हैव रनर्स बिहाइंड. लिवरपूल आर प्लेइंग इन गियर 2 ऑलमोस्ट, तो आप वहां पर आई थिंक लाविया डिड अ ब्रिलियंट जॉब. आई नो काइसेडो हैड अ सो फर्स्ट हाफ, लेकिन मच बेटर इन द सेकंड हाफ. बट आई स्टिल बिलीव कि प्लेइंग ऑल द थ्री आल्सो वुड हैव बीन डिफेंसिव. तो आई थिंक we missed, and it was very surprising, we really missed Mudryk आज. I honestly believe interesting comment, and in hindsight I see what you're saying because we needed somebody to put pressure in behind their line. Yeah. And unfortunately Sancho did not do it. Unfortunately, and Kunku could not do it either because there was nobody to thread a pass in. Nobody. Vega had a very bad game when he came on that left side and was not able to give any. I think he actually did not have one single successful pass. I maybe one, but I'm struggling to remember it even. So that's the kind of impact that we needed somebody on that flank to have behind Nkunku once Nkunku came on. I think Jackson would have had more luck running up that flank on the ball or creating that run and creating some space behind him for somebody to run into. But we were missing somebody behind him to do that work. वो आज कोई नहीं था. You could argue maybe Chile could have come and had a role today. You could argue that Mudryk could have come and have a role today. Like Mudryk wasn't even on the bench, so what am I supposed to say, right? We can't really say much there. I don't know क्या कहानी है. Why didn't he come? I think वो कुछ knock walk का scene है. About again, I'm going to confirm. Then it is what it is, right? We cannot really blame Raska for that. So I think generally speaking, we were up against men versus boys wali baat thi. So men versus boys. I think that's the safety thing. Even tactically, but I will say this: that we were an experimental lineup. You have to understand that we had two important players that were on 5 yellows and were not able to start the game. के side से आया था भाई second goal. Remember that? हाँ, तो वो मैनेजर का थोड़ा सा हाथ टाइट था, लेकिन it also shows. I think in game like this, you have to learn your lessons from it, right? So we saw the weaknesses. Now we have to work on them. ठीक है. The point is not that what happened. I think it was a closely fought game.
in terms of scoreline. There wasn't much between the two teams, so we'll focus on that and we'll try to see where we can improve. I think Badiashile had a good cameo appearance today in light of all the not so good appearances lately that he's been kind of He's got an upgrade over Disasi. Disasi's got a downgrade, by the way. We just so realized ठीक है, like the thing is I'm trying to find some positives, so I think off the bench some some people came and did a decent job, others did not. आज Sanchez had moments definitely, but can Yeah, we blame him Sanchez, for the second goal? I'm sorry, I'm yeah, I don't know what. लेकिन मुझे I don't think, देखो, I just give my 2 cents. I think it's not only Sanchez. देखो, Sanchez, when he kicks long, no, we don't have a Drogba up front anymore. He needs to realize that. नहीं Or नहीं, whether it's he's not been even told that. to do that. It's वो दिमाग में कुछ है ही नहीं. Like sometimes the passes that he makes, you can tell कि he's completely like कोई वो नहीं है, anticipation नहीं है, कोई planning नहीं है कि he's just passing the ball back to the only person that's in front of him, that's the attacker, and he passes the ball straight to him. I don't know what he's thinking. Like that tells you कि वो दिमाग खाली है ऊपर in those situations, in those pressure situations. And to be honest, I'm going to say this, don't say कि I'm being negative, but I think Colwell is a question mark in my mind. I think it's in the mind. I think मुझे लगता है in certain games ना, I think वो heat of the moment में I think he needs a loan, to be honest. I think he needs to go to Italy, spend a season there, learn the trade a little better. Honestly, लेकिन I hear you, I respect that absolutely. मुझे लगा I don't think he's the answer. If he was the answer, I would say he's the answer. I don't think he's the answer. Definitely. Even Brighton के against he was bad. I get that totally. 2 games. लेकिन अगर देखो तो बाकी 6 games में he was actually our best centre half. That's not saying much. Look at the performances of the other centre halves. So it's not that he's dominating his position. It's just the other players are playing even worse. Best among the worst. So that's the context. I'm not trying to like. He should be a main man. I get your point exactly. Uski prowess on the ball when he's throwing in the long balls, I agree. It's very nice to think about that. It puts a smile on my face as well. But हमें defensive no nonsense centre backs चाहिए, and right now I'm sorry, I don't think we have any. And that's not a criticism on Colwell, that's a criticism on all of them. Yeah, Fofana was known to be that, but वही है injury. Thiago Silva था, that's it. Fofana भी I think has always had a kind of a mistake in him, but yes. नहीं, वो लेस्टर में जब when we thought he was in prime and हमने पैसे फेंके थे उस समय की बात कर रहा हूँ. हाँ, वो चेल्सी आने के बाद की बात करो भाई. But so guys, anyways, hot take होगी maybe, लेकिन every time I look at Colwell, I don't see what people see in him. I'm sorry, maybe I don't understand the game enough, but मेरी तरफ से like it's vibes clear है. चेल्सी का मेन सेंटर हाफ ना क्वेश्चन मार्क है, बट अगेन ना वही है, चेल्सी का हिस्ट्री है देखे तो जॉन टेरी became a captain so young. तो I don't think this guy's name should be mentioned in the same sentence as a John Terry at all. He's nowhere near that level. Maybe he will be one day, but right now he's absolutely not there. He had a handball in this game. He had a penalty in this game. He could have had 2 penalties given. He could have had 2 penalties in this game. He got a card in the last game. I think he was fighting somebody in the last game. So I don't see what is he bringing apart from. I think set pieces पे I don't think is good attackingly. Attacking wise में अच्छा नहीं है. That's a fact. वो center half का trait होना चाहिए और नहीं है. As a set वो भी नहीं है. So what I'm trying to say is I'm not saying get rid of him. I'm just saying he's not the answer. You need a lot of players to be doing the heavy lifting around him if you want to make him look good. And right now we have too much of that problem in the across the back line. Everybody has to do a good job for everybody else. So कोई अच्छा नहीं है इस वक्त. Nobody looks good. आज जो हमने goal दिया, that was an embarrassing goal to give away, to be honest, because we have not spoken about that moment where again the crosses, allowing crosses, ये ना एक अलग से मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस जो होते हैं ना वो होना चाहिए चेल्सी का कि भाई क्रॉसेस और सेट पीसेस. गौरव इन द हाउस है. गौरव आप बोलो भाई अगेन. एग्जैक्टली गौरव, आई वाज होपिंग दिस वाज कमिंग. ये ना एक्स्ट्रा क्लासेस आप डाल दो भाई, ट्यूशन लगा दो भाई चेल्सी टीम की. मतलब आई डोंट नो व्हाट इट इज. आई थिंक ये लैम्पार्ड फर्स्ट स्टिंट से बात हो रही है हमारी. आई रिमेंबर टॉकिंग अबाउट दिस एस्पेक्ट फॉर सो लॉन्ग. व्हाई डू वी अलाउ दोस क्रॉसेस एंड शॉट्स? क्लोज डाउन एक चीज होती है भाई, यू क्लोज डाउन द प्लेयर.
that thing is not, I think वो आप जैसे आप बोले ना, whether it's been taught or told to them enough, that's also one more thing. क्योंकि आप करते हो एक दफा, दो दफा, तीन दफा, लिटरली हर गेम में 10 दफा हो रहा है वो चीज, और 10 में से आप 2-3 गोल कंसीड कर दोगे. अभी 1-2 हो रहे हैं, लास्ट सीजन में 3-4 हो रहे थे. तो We don't आई play. थिंक दैट इज वी नीड टू डू बेटर एट. गुस्तो का होल पॉइंट ही वही था कि भाई तू राइट फुटेड प्लेयर है, तू साला के अगेंस्ट है, तेरे को ब्लॉक करना है भाई. वो दैट वाज द मेन एस्पेक्ट. I think Reece James was able to block a few crosses, one or two. Yeah. Gusto, I think, okay, Salah, he's marking Salah, so it is what it is. But yeah, I mean, you're making a good point. You have to do the basics, right? If you're not doing the basics, the rest, But I think generally over the past few years, we allow those crosses time and again. We don't try to block them. हमारे वो वाला Last culture नहीं है. Aspi था. Aspi used to be one of them who used to keep that in mind. I remember as a player. In fact, even Reece James was not. मतलब उस चीज में एक issue था. We allow crosses. हमारा जो culture है, we allow crosses. For some reason, we think that's the go-to move is to allow crosses. And if you think about it, जो manager की tactics हैं to invert the fullback, so that gives the space out wide. So basically, you're saying yes, we know that people will occupy that space, and we know the crosses might come in. So I think focus is on maybe clearing the crosses more than avoiding the crosses. So ये है एक problem culturally हमारी team में है. लेकिन when we were playing deep in our half, I think you have made an excellent point. It's football basics. Stop the cross before it happens. Kill the danger there. Why are you waiting for the ball to be cleared from a dangerous position if you can stop the cross right ऐसे there? भी हमारे पास गोल पर सैंचेज, हमारे पास प्राइम बुफोन या नॉयर नहीं है. But the thing is, here's the thing, right? You think of Chelsea right now, we have a lot of problems still. Like work in progress big time. So there's lots of, exactly, that's the good thing is there's lots to improve still. So we'll only get better from here hopefully. We're still in sixth and we have all these problems, whereas Liverpool had very little to complain about in terms of problems. I don't think I saw any mistakes in today's Liverpool necessarily. So the only thing I wish is that we had tested their goalie better, but they were too organized. They didn't let us test the goalie that much. एक दो chances मिले थे. Palmer's shot probably, maybe was a goal if it had been on target. And I think he understood that too. एक वो header था Vega का that could have needed a much better execution. So these are the opportunities we need to be more clinical in front of goal to and then all of this, then this becomes a scrappy win and we're happy with that, or a scrappy draw and we're happy with that. So we were missing that equalizer, I guess. But anyway, guys, a lot of it that we have discussed already. Bhai, I will try and put up a review video as well. I'll try to put some points, and so कल सुबह आपको वो आएगा. Of course, यहाँ पर I have another call to take right now, so I need to go. But before that, everyone in the house, do not forget to like the stream, hit that bell icon. Of course, यहाँ पर work in progress है चेल्सी का, अभी भी लग रहा है. But leadership is a no-brainer, Amit. That's something that we have discussed enough about. But point being that are we having a show leader? Because abhi bhi aap dekho to Reece James unavailability, it's a question mark. Let's hope ki it's start of good things to come. Enzo Fernandez, I thought was a leader in absence. Aaj shuru nahi kiya. That has to be also a little bit questioned, but I hear tactical, I think awareness, Enzo Maresca gives more importance to the leadership. Clear hai. But it's still work in progress. Lots to do, guys. Almighty Sports में again the content is restarted already. You can check it out. Link is below. जो भी यहाँ पर आए, do not forget to hit that bell icon because लोग बोल रहे हैं कि काफी notifications नहीं आ रही लोगों को. I've been checking with YouTube. They are saying that notifications आनी चाहिए, आ रही है मुझे तो. So if you're not getting, let me know. But hit that bell icon again for all the notifications. Comment करेगा what you need to see us doing differently in the next match, or should Liverpool at all change anything? Probably not. लेकिन Mikhail, last words as going by this, मतलब would you say कि अभी भी you are still saying कि we should be good enough, seen enough in 8 games to go at top 4? I think we're a work in progress. A long season lies ahead, and we have to go through these days and these performances to come out the other side a better team. And I think Maresca is the guy that he is working on improving on our weaknesses. ठीक है, some games are better than others, and maybe we still as a whole need to be more consistent. I think we're still in the running for a top 4 finish.
we need to keep our eyes on that. We need to pick up points in the coming games, so we need to figure out which games those are going to be that we get our points, because it's a tough run of games ahead. बहुत tough run of games आ रहा है हमारा. Yeah, Panathinaikos away also not going to be easy actually in the Conference League next, because it's an away game for a young team. But Liverpool also have Champions League, so we'll be back with content for both the trophies, both the tournaments. But no matter, guys, we are here. Of course, अभी ज्यादा रिग्रेट ये नहीं हो रहा कि आज हम हारे हैं. टू बी ऑनेस्ट, मुझे अभी रिग्रेट होगा दैट अरे यार काश वो क्रिस्टल पैलेस और फॉरेस्ट वाला चीज होता, और इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन आई थी उस स्ट्रीम्स में. आज देखो तो आई थिंक वी हैव टू समटाइम्स एडमिट दैट वी जस्ट लॉस्ट टू अ बेटर टीम. बट कोई नहीं, वी मूव एंड होपफुली वी विल हैव बेटर डेज एज वेल. थैंक यू एवरीवन, नो मैटर व्हाट. थैंक्स Michael, Up the always. Chels, no matter what. Carefree. Bye guys. Pick up Almighty Blues.